लड़ने से डरते हो या हारने से? तुम्हारी लड़ाई डर से है। जीते तो कायनात तुम्हारी, हारे तो कमियां जान जाओगे। हौसला और चाहत मुश्किल वक्त में यही तुम्हें जगाए रखेगी। There is no fight greater than the one with yourself, and there is no victory sweeter than the one over your fears. Go. Hello and welcome back. अब फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, सीजन 5 ऑफ द KO फाइट नाइट. इट इज गोना गेट स्टार्टेड राइट नाउ एंड ऑफ कोर्स फाइनल शुरू होने वाले हैं. आई एम योर होस्ट ब्लॉगर. जॉइनिंग मी ऑफ कोर्स आर द अमेजिंग पर्सनालिटीज दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स. वी आर जॉइन्ड बाय ऑफ कोर्स माय co-host that is I Super Johnny and the incredible, the famous, the wonderfully talented chaps we are talking about, of course, Thug and Tanmay Scout. Certainly hope you guys can hear me and are doing great. Good morning. Yeah, I mean, Good morning. good morning, Lakshay, and thank you for the wonderful introduction. As you said, two pinnacles of Indian esports are here with us, Scout and Thug. एक बारी फिर से शुक्रिया करना चाहूंगा इन दोनों का अपना समय देने के लिए हमारे को. And आप लोगों के लिए, आप लोगों से मेरा एक सवाल रहेगा. Thug, first for you, एक fresh experience है KO Fight Night brought to you by Nodwin Gaming and Airtel India Esports. और एक अच्छी opportunity यहाँ पे नए athletes को दी जा रही है. And both of you were there since the start in your esports scene as well. So क्या लगता है आपको कि what should the players do to make most of this opportunity? No, I mean, like, कि अब gaming ऐसा चीज है कि it's a very big horizon. If you see, there are so many different verticals to different type of games. So it's definitely a very good idea and a very good initiative by Nodwin and Airtel coming together and trying to provide such a platform जिसमें हर type के different game आ रहे हैं. And KO especially एक knockout tournament which has those fighting boxing games coming in, and and Tekken, ये सब ऐसे games हो गए. Street Fighter, Tekken, ये सब ऐसे games है जो काफी time से बचपन में कभी ना कभी खेले हैं, starting from those video game days. So I believe it's a good throwback for me personally, and I think a very good platform for players जो इस line पे इन games में भी अपना time देते हैं. They're trying to enter the competitive scenario. Well, definitely काफी अच्छे से बताया. मतलब बचपन की याद है, जैसा आपने बोला कि एक थ्रोबैक, एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर तो रहता ही है, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर, टेकन वो आर्केड मशीन्स होती थी जहाँ पे कॉइन्स लेके सब लोग जाया करते थे बचपन में खेलने के लिए. और स्काउट, आप और आपका और थक का मैच होने वाला है स्ट्रीट फाइटर 5 का. पहले थोड़ी देर बाद 4 बजे के आसपास वो मैच स्टार्ट होगा. आप थोड़ा गेम खेल के प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका स्टार्टिंग में? यार ऑनेस्टली बोल तो बचपन से तो टेकन एंड ऑल खेलते हुए आ रहे हैं ना आर्केड गेम्स, तो एक वो वाइब्स आ गया कि वो प्रॉपर वो मशीन में बैठ के खेल रहे, तो यार मजा आने वाला काफी. Well, मजे तो डेफिनेटली आने वाले हैं. और यहाँ पे हमारे जो कंटेंडर्स लाइंड अप है वो भी काफी ज्यादा इंटेंस है. आई मीन, इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स कॉन्स्टेंटली कम्पीट करते रहते हैं, चाहे बात करें हम सुपर स्मैश ब्रदर्स की या फिर हम बात करें टेकन और स्ट्रीट फाइटर की. बट एक्सपोजर के मामले में थोड़ा सा कम एक्सपोजर यहाँ पे प्लेयर्स को मिलता है अगर डोमेस्टिक सर्किट की बात करें. तो था आपसे मेरा सवाल रहेगा कि क्या एक चीज रहेगी जिसके चलते आई मीन प्लेयर्स खुद को और ज्यादा एक्सपोजर दिला सके, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आई मीन इवो जापान जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स अच्छी स्टैंडिंग्स लेकर रेगुलर बेसिस पे वहां से वापस आते हैं, बट इट्स स्टिल दैट लिटिल बिट एक्स्ट्रा दैट इज लैकिंग. See, I believe that exposure का बात ये है कि like we say, charity begins at home. India level पे भी it's very important कि KO के games को वो exposure मिले. And I think Nodwin inviting maybe someone like Scout who is a way bigger personality than I am. तो I think ये एक बहुत बड़ी एक ऑडियंस को वो जो रिप्रेजेंट एड्रेस करता है, उनके सामने एक नया चीज देखने को मिला कि यहाँ पे भी देयर इज अ कॉम्पिटिटिव साइड. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक यही एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है. आई थिंक टुडे कुड बी अ स्टार्ट टू अनदर एरा ऑफ नॉकआउट गेम्स. एंड लाइक यू सेड कि मैं पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी आज तक इतना फॉलो नहीं करता था. लाइक आई डिड नॉट नो कि इंडियन प्लेयर्स आर एक्चुअली गोइंग अहेड एंड परफॉर्मिंग रियली वेल इन द जापानीज सर्किट. बट सिंस इस लेवल पे कर रहे थे, आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. ओवर द लास्ट 1.5 years काफी स्पोर्ट्स चेंज हुए हैं. स्पोर्ट्स का जो डायनेमिक है इंडिया में काफी ज्यादा चेंज हो गया है. So I definitely believe कि this could be the start of everything, because we just hit a setback, but then it's obviously a start of something new.
Exactly. Absolutely. I mean, there's no question. There's no two ways about it. बिल्कुल सही बात है. There's setbacks, of course, in life, but the way you move on is, of course, you fight on. You move on and fight along. And उसी के साथ साथ, one more point I would want to point out is, of course, the fact that जब ये fighting games की बात करते हैं, बचपन से और कोई गेम खेली नहीं खेली, लेकिन guaranteed हर किसी को याद होगा एक टाइम पे सिस्टर्स के साथ, मदर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ बैठे हुए आप अपने PS2 पे, PS1 पे with those controllers just going ham कि भाई मेरी ये एडी क्यों नहीं काम करी, मेरी ये क्रिस्टी का क्या हो रहा है. And let's talk a little bit about those journeys long before anybody was into any other game. Yeah, I mean, like, जितना मुझे याद है, those early video games में we used to have those PS2 में तो I think I went into WWE. तब WWE एकदम आ गया था. Oh, And yes. after that Pain series, I think we had those Yes. analog coming in 2008. जिसमें उन्होंने analog controls ला दिया था, which entirely changed how WWE was played. Because right now, if you see, सारे KO games are also button based. And तो मैं because analog was obviously way more easier to play on, तो मैं उसमें shift हो गया था. But I think for Scout, तूने शायद यूएफओ ये सब खेला है ना, यूएफसी ये सब खेला होगा शायद. हाँ, मैंने काफी फाइटिंग गेम्स खेली. लाइक मैं ऑलरेडी into लाइक फाइटिंग गेम्स में बहुत इंटरेस्टेड था स्टार्टिंग से. लाइक टेकन से लेके यूएफसी तक, लाइक ऑलमोस्ट बहुत सारी गेम्स मैंने खेल रखी है. अच्छा, आपका फेवरेट टेकन कैरेक्टर मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे I स्काउट want to आपसे. know, yes. लाइक कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जिसको आप अगर आंख बंद करके भी खेलो तो मैच जीत सकते हो? भाई ऐसे तो यार बहुत सारे टेकन कैरेक्टर्स हैं, मैं क्या बताऊँ. लाइक मेरा ऐसा कोई फेवरेट ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं था. लाइक आई लव्ड एवरी कैरेक्टर. ये सीन था. वेल, आई मीन ज्यादातर टेकन प्लेयर्स जो प्रैक्टिस करते रहते हैं उनका सबका यही जवाब होता है कि मतलब एक दो मेंस रहते हैं बट सारे कैरेक्टर्स से प्यार होता है और सारे कैरेक्टर्स खेलना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स के लिए, ताकि आपको पता रहे गेम नॉलेज के मामले में कि क्या काउंटर सामने से आ रहे हैं और किस तरह से अगर आप एक बैड मैचअप के अंदर है वो चीजें आप टैकल कर सकते हैं. स्टोरीज की बात करें, लक्ष्य, मेरी भी एक स्टोरी थी कि आई रिमेम्बर जैसे नोस्टैल्जिया की बात करी थी थक ने और स्काउट ने भी कि बचपन में हम लोग खेला करते थे. सबसे बड़ा नोस्टैल्जिया फैक्टर ये होता था, आई रिमेम्बर बीइंग अ किड और आफ्टर डिनर एवरी सिंगल नाइट आई यूज्ड टू गो ऑन अ वॉक विद माय डैड. आर्केड पे जाते थे और वहां पे टेकन 3 हम लोग खेला करते थे साथ में फॉर लाइक 15-20 मिनट्स एवरी सिंगल नाइट. और उस टाइम पे से लेके अब तक गेम्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं. जैसे थक ने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि इंडियन ई स्पोर्ट्स ने तब से अब तक बहुत ज्यादा ग्रो किया. आई मीन तब तो ई स्पोर्ट्स के बारे में पता भी नहीं था हमें, और पिछले 1.5 साल के अंदर जो मैसिव ग्रोथ हमको देखने को मिली है वो अब धीरे धीरे करके हम देख भी सकते हैं. ट्रांजिशन होती जा रही है अलग अलग टाइटल्स के अंदर भी. यहाँ पे जैसे आज हमारे साथ स्काउट और थग मौजूद है केओ फाइट नाइट्स के लिए. एक्शन ये लोग भी विटनेस करेंगे हमारे साथ. जो स्मैश ब्रदर्स का एक्शन अभी कुछ देर में स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद हम बढ़ेंगे स्ट्रीट फाइटर 5 और टेकन जो कि कल तक ट्रांजिशन होगा. बट अब वही चीज, वो ग्रोथ यहाँ पे अब हमको बड़ी होती हुई नजर आ रही है एंड इट्स बीइंग स्प्लिट इनटू विद एवरीवन. Yeah, I mean, like, to be honest, आपने टेकन का मेंशन किया. If I'm not wrong, there is a player called Arsalan from our neighboring country. यस यस. So Yep. Arsalan was introduced. मैंने उसके बारे में एक महीने पहले ही मुझे किसी से मैं डिस्कस करा था. उन्होंने बोला कि there is a player from our neighboring country in Pakistan. To be honest, Arsalan, who is a very big player. मतलब apparently he is a legend when it comes to Oh, Tekken yes. plays. So I mean, like, अगर हमारे neighboring country में ही very close neighbor में अगर हमारे पास एक ऐसे player है, then definitely I believe scope है and chances है that India में भी होगा ऐसा talent. And I believe a platform like these definitely help. And I believe that we still have a long way to go. India gaming scene in India, it's just like been a couple of years since ये इतना बड़ा boom आया है. So we do have a long way to go. डेफिनेटली थक आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं. मतलब इंडिया में टैलेंट है वैसा. आर्सलान ऐश उनकी अचीवमेंट जो थी, आई मीन दोनों Right. ईवोज उन्होंने एक साथ जीते थे, बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट था. हमारे अगर लोकल टैलेंट की बात करें, सबसे बड़े नाम जो इंडिया में पॉप होता है टेकन की वर्ल्ड से, दैट इज गोना बी तेजन. जो जैसे मैं बात कर रहा था ईवो जापान जाके आई थिंक उन्होंने टॉप 9 और टॉप 8 तक पहुंचे थे. वो समवेयर अराउंड दैट मार्क उन्होंने फिनिश किया था. बट वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. तो एक्सपोजर जो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स को मिल रहा है उसके चलते प्लेयर्स भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहे हैं. और वही एक चीज, आई मीन मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है. अपॉर्चुनिटीज अब जाके प्लेयर्स को मिलनी स्टार्ट हुई है और उसी के चलते प्लेयर्स जो है उस लेवल तक पहुंच पाएंगे. बट आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. वी हैव द टैलेंट, इट्स जस्ट दोस मोमेंट्स दैट नीड टू हैपन. And those moments are finally happening. Again, I mean, it's all thanks to Scout and Thug for taking out the time, of course. And with that, I mean, जिस तरीके का मंच अब
बन के ये तैयार हो चुका है. It is a start. It is a rolling start. And of course, thanks to these big personalities for making it that much more wonderful for all the talented players that are participating and are maybe just watching. अभी probably छोटे-छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे और उनको भी यही पता चलेगा, ओ अच्छा, alright, तो थग एंड स्काउट ने ये गेम खेली and भाई ये गेम मेरे को भी खेलनी है, सिंपल सी बात है. And talking about that fight, Scout, आई नो कि प्रैक्टिस गारंटेड करी होगी. आज कोई स्ट्रैटेजी है उस चीज के बारे में? कोई तूने कैरेक्टर समझ रखा है? कोई ये character- पूरा Bro, रात मैं- खेल के आया है, मैं जानता हूँ इसको, मैं ये पूरा रात खेल के देखो, आया मैं है. नहीं, रात Guaranteed नहीं खेला, मैं thugs. 2 गेम खेला हूँ. मैं 2 गेम में एक लड़की का एक्टर हाँ, ये सब कर लेता है. इसका यही चीज खराब है, ये इसको हुई ये ना नहीं बात, समझता कि yes. शो मैच है. अब ये क्या नहीं, करेगा, ये प्रैक्टिस मैं- करेगा 2 घंटे और फिर आके मेरी बेइज्जती करेगा. मैं इसको competitive बहुत spirit अच्छा कहीं नहीं जानता जाना चाहिए, वो तो हमेशा रहता है. नहीं, मैंने सही बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस नहीं की. मैं खाली एक वीडियो देखा, उसमें एक लड़की जो बहुत फास्ट है, और मेरे को हंसी तब से इसलिए आ रही है ना कि टेकन में कैरेक्टर में बहुत यूज करता है, ब्रूसली टाइप का था, पॉल या कुछ तो नाम से याद नहीं आ रहा है. Yes, Lee. Like he was one of the fastest characters. तो मेरे को उसका नाम And पूरा Law. याद नहीं आता, तो मैं लिटरली याद ही कर रहा था तब से. लॉ मेरे को लॉ नाम याद नहीं है. लॉ, राइट? यस Yeah. आई तो either Lee or Law. हाँ जी. Yeah, like लॉ इज द yellow ब्रूस ली track. वाला स्टाइल. यस हाँ, दैट्स लॉ. येलो ट्रैक, यस, येलो ट्रैक Yep, वाला. yep. तो आई मीन स्काउट यहाँ पे कैरेक्टर रिवील कर दिया आपने, अपना मैचअप रिवील कर दिया. आई थिंक अगर टेकन मैं खेलने अभी बैठ वाले के तो पूरा Uh-oh. पूरा अरे पूरा चलो, देख रहा हूँ कि Uh-oh. काउंटर क्या है. मैं तो पूरा काउंटर खोल के बैठ जाऊंगा. मैं भी 2-3 चीज देख रहा हूँ कि कौन सा क्या यूज करना है. आई मीन सही थक, स्ट्रैटेजी. अब एकदम से Yes. इतने क्वाइट हो. आई एम श्योर आपने भी कहीं ना कहीं तो कोई कैरेक्टर समझा होगा. कोई ना कोई मैं अभी आपकी भी देखता हूँ, guaranteed- अभी मैं खोल के देखता हूँ. अभी इसको हराना पड़ेगा, ये पूरा प्रैक्टिस करेगी. यही दिक्कत है ना, मतलब कोई चीज को ये वो नहीं लेता कि चलो दोनों जन ट्राई करते हैं. ये अभी पूरा रात खेल चुका है. अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा स्ट्रीम भी कर रहे हो गेम को. इसके शौक थोड़े अलग हो जाते हैं. नहीं, कोई भी मैंने नया गेम कोई भी मिलते गेम हैं, नहीं बट खेला ठीक है, मैं अभी ट्राई हार्ड करता है ये, तो अभी मुझे भी थोड़ा ट्राई हार्ड करना होगा. कोई नहीं, 4:30 बजे मिलेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ तब तक. वेल प्रैक्टिस तो बिल्कुल. इम्पोर्टेंट होगी. थोड़े बहुत काउंटर्स वहां पे रिसर्च करे जाएंगे और उन काउंटर्स के साथ डेफिनेटली प्रैक्टिस होने वाली है थक के लिए. अब वर्क तो कट आउट है आप लोगों का भी, बट हमारे प्लेयर्स के लिए भी यहाँ पे वर्क कट आउट हो गए. उनके पूरा दिन जो लाइनअप है, और जैसे अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर रहे थे कि कंपेटिटिव स्पिरिट जो यहाँ पे दोनों हमारे जो गेस्ट है उनकी तरफ से भी आ रही है टू विन, वही कंपेटिटिव स्पिरिट हमारे प्लेयर्स भी दर्शाते हैं. और नॉट जस्ट फॉर द प्राइज मनी, एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स स्टोर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक लीडर बोर्ड है, जैसा थक ने भी बताया था, कोलैबोरेशन बिटवीन नॉडविन गेमिंग एंड एयरटेल. तो एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स स्टोर का जो लीडर बोर्ड है, पूरे साल जितने मैचेस ये लोग खेलेंगे, और सिर्फ ये लोग नहीं, लाइक अलग अलग ई स्पोर्ट्स टाइटल इन्वॉल्व है. सुपर स्मैश ब्रदर्स हो गया, टेकन 7 हो गया, स्ट्रीट फाइटर हो गया, देयर सीएस गो इन देयर, फीफा भी है, क्लैश ऑफ क्लैंस भी मौजूद है. जितने भी ई स्पोर्ट्स टाइटल के मैचेस है, जो भी परफॉर्मेंसेस होगी वो रिकॉर्ड हो रही है. उस लीडर बोर्ड पे प्लेयर्स रैंक हो रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्लेयर्स टॉप रैंकिंग्स के अंदर रहेंगे, दे गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट्स स्टोर एंड नॉटविन गेमिंग. तो बहुत ही ज्यादा एक अलग टाइप की चीज, एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर भी प्लेयर्स को दी जा रही है. Yeah, I mean, like ये तो बहुत it's a very different separate ecosystem. Like we have seen बाकी सारे, अगर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात करें, नॉर्मल स्पोर्ट्स की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, वी हैव समथिंग दैट कंटेंट इंडस्ट्री की आप बात करो, तो एक ऐसा अवार्ड प्लेटफॉर्म होता है दैट इज अ अम्ब्रेला टू फॉर एवरी सेक्शन. चाहे आप सोप सीरियल मूवीज की बात करो फॉर से कंटेंट इंडस्ट्री में, या स्पोर्ट्स से बात करो, तो वी हैव द मे बी अवार्ड जो हमारी गवर्नमेंट देती है. सो बट दिस आर लाइक दिस एनकम्पास ऑल डिफरेंट स्पोर्ट्स. आई थिंक ये जो एयरटेल का जो पॉइंट सिस्टम है, जो पावर पॉइंट सिस्टम, आई थिंक इट्स अमेजिंग, एंड ऑब्वियसली नॉट बीन ऑलवेज कमिंग अप विद स्पेशल थिंग्स. जी हाँ, स्पेशल चीजें तो यहाँ पे हमेशा रहती है. स्काउट, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा. आप प्रैक्टिस तो करिए आपने थक के अगेंस्ट खेलने के लिए, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको मेरे को लग भी रहा है, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स के जो आपने नाम लिए वो बहुत ओजी कैरेक्टर्स है. आई मीन पॉल और Absolutely. लॉ. मेरे को हंसी आ रही है इसलिए, लेकिन मेरे को थक की शक्ल देखनी गेम के बाद. तक मैं बता रहा हूँ, तब इन्होंने से बहुत control नहीं ज्यादा हो रहा. प्रैक्टिस करी है. ये वो एग्जाम में बच्चे नहीं होते अब क्लास में, मैं पढ़ के नहीं आया और फिर 90 के ऊपर मार्क्स आ रहे होते हैं. वो इसका हमेशा से रहा है. कोई नहीं, उस चीज को भी कुछ करेंगे हम लोग. शॉर्ट देखता हूँ, मैं अभी बस ये टाइम है चाहता हूँ कि 2-3 अगर घंटे. अगर मैं जीत जाता तो थक एक बार 2 भी निकाल के खेले मेरे साथ. ठीक है, तू अगर मैं जीत गया तो स्काउट हेयर ब्लैक कर लेगा. ओके, चल डन. ठीक है, चलो, Oh. ओके, डन है. You heard it here, folks. You डन heard it बोल दिया. exactly. बहुत कुछ ऑन द लाइन. Incredible. अब तो ये करवाना पड़ेगा. Community chat, everybody start spamming, because it is certainly going to be
fight to witness at 4:30 p.m. today, where Scout and Thug आपस में भिड़ने वाले हैं. एक के पास लॉ ब्रूसली होने वाला है, एक के पास में let's find out. It is still a surprise. What do you think? आप लोग बताइए चैट के अंदर कि what do you think should Thug play with? And again, Scout के लिए भी. well, अगर हमारी कम्युनिटी पिक्स डिसाइड कर रही है तो आई थिंक मैचअप और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. Yes, yes. Oh God. Yeah, I mean like interesting बना सकते हैं हम लोग इसको definitely because they are different characters. You know, we can have a maybe toss करके choose कर लो कौन क्या खेलेगा. मतलब it's all fun. Like ठीक है, Yes. you know, such opportunities definitely help us to explore different games as well. And I'm looking forward आज evening के लिए. डेफिनेटली. तो एक बार फिर से थग और स्काउट आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपना समय देने के लिए हमारे को. हमारी ऑडियंस को बता दो कि हमारी जो दो खास पर्सनालिटीज है हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेगी 4:30 बजे के आसपास फॉर द शो मैच जो इन दोनों के बीच में होने वाला है. तब तक के लिए इनके पास रेस्ट करने के लिए टाइम है, इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है टू कम अप विद देयर आइडियाज एंड काउंटर्स फॉर ईच अदर. लेकिन अभी के लिए बिफोर वी जंप इनटू द एक्शन ऑफ सुपर स्मैश ब्रदर्स हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ से. Stay tuned and watching. We'll be right back.
Hello and welcome back once again to the arena. Of course, this is KO Fight Night Arena. Season 5 finale is about to get started. And of course, as I said, things have already started heating up. Abhi humne discuss kiya tha with Scout and Thug that we do have an amazing match lined up between those two lads. But right now, it is time to get into a little bit more of Super Smash Bros. And get into a conversation with the analyst joining me. It is none other than I, Super Johnny, joining me on the analyst desk. Well, I thought I was going to be a co-host, man. Ooh, Yeah. But for this segment, Yeah. I know that you know so much more about the game, mate. I mean, Super Smash Bros. Has always been an interesting game, and a title, well, I haven't touched in a long time, to be honest. But the matchup that we have lined up for you guys are going to be really intense, and they are going to be super fun to watch as well. I mean, the journey, talking about the journey, we had 8 qualifiers, from which we had the 16 players coming into the playoffs, which were then divided into 2 pools. From there on out, we brought down the numbers to just 4 athletes that are going to be competing over here to the prize money. But for these 4 people, well, they have guaranteed themselves at least the victory. Oh, Yeah, yes. already. I mean, you look at the stats that these lads have. It is not easy. It is certainly not easy. You're looking at Lionheart. You're looking at SG. There are... Some of the people you remember, you yourself remember, Oh, because yes. you were Oh, on yes. the stage at DreamHack with them. Oh, yes. I Yeah. mean, I love the community. Absolutely adore them because they are such wonderful chaps Yeah. to hang out with. And along with that, जब वो gameplay की बात करते हैं आप, though gameplay, I mean, it's like you cannot expect anything less from these lads because they bring in that A game and bring in that dominating play. But अगर stats के फिर से I go back to the stats again and again. 10 game without loss. Wow. I mean, SG is looking really strong. But then again, Lionheart, I remember very vividly from the stage, and that dude has a momentum. Yeah, he had a pretty strong momentum back yes. in DreamHack 2019 when we saw him as well. I mean, Yes. did he go undefeated over there as well? I believe so. I Yeah. mean, I think so. I mean, there were a few couple of rounds wherein it was probably at the edge, but I believe he was able to clutch a victory. Though. Also, yeah, I mean, talking about the game, you always need to be on point. It's a really fast-paced game. It's fast-paced, high-octane action. You always need to be on point with your inputs. One single misinput, and, well, you are going to be kicked off the stage or the Absolutely. platform that's there. Yep. I mean, those double jumps and those taps, and they better be on point. And once again, I mean, you're talking about professionals here. Yeah. The way these lads understand the game and play the game, it is... It is incredible. It is incredible. Yeah. It is just wonderful to watch. It is wonderful to watch, and also some people who are wonderful to watch. And here are our casters and our analysts. I mean, I remember meeting these guys back in DreamHack again. It was I had an amazing time with them. I met Vishal over there, Danish as well. I got to share the stage with Danish. We were casting Street Fighter together at that time, and it was super fun. We did Tekken as well. Once again, exciting opportunities, lots of memories all throughout. But once again, this time after a really long break, we are going to be doing stuff together. Absolutely, and this is again Season 5. Season 5 Yes. is already here, where indeed the stakes couldn't have gotten any higher because you're looking at a massive prize pool of all combined. KO Fight Night, 3 lakh. 3 lakh INR is what we're talking about. That is what is at stake. And along with that, of course, is the Airtel India Esports Store and the name. Because again, these players are known in the community. Definitely. Have been going on with that momentous and streak. And now it's time to showcase that once again. I mean, definitely, as you said about the prize pool, remember when I said like all the 4 players that have made it this far have actually guaranteed themselves at least some part of the prize money? Right. That's what we're going to look at, the distribution that's going to be there. So 3 lakh rupees for the entire thing, for the whole KO Fight Night. 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. That is going to be the distribution for all the 3 titles that we have lined up for you guys, which are going to be Street Fighter 5, Super Smash Brothers. That's going to be starting in a few moments, and then Tekken 7 as well. Apart from that, the Airtel India Esports Store. I mean, that in itself is a really big opportunity, as we were discussing with our celebrities as well, Thug and Scout. A leaderboard to track the performances of the athletes on the tournaments that are playing throughout the year. And based on those performances, at the end of the year, they receive an award. But that is a totally different thing. Right now, let's once again come back to the prize money for KO Fight Night Season 5. 1 lakh rupees for Super Smash Brothers, out of which first position 50,000, second 25, third 15, and fourth is going to get 10,000. So just being here guarantees you that 10,000 rupees. Absolutely, but along with that, I'm again pretty certain that those lads, even though it's very done and dusted deal, they're not going to be concerned about that money. Right now, it's about just getting on top of that leaderboard and getting on top of course, Airtel India Esports Tour as well. Now, with that, of course, let's also have a look at the schedule and understand what sort of a bracket do we have lined up. Of course, first match is going to be Lionheart going against SG, and as we move on along, it is Quaylectra.
Yeah, definitely. So this is going to be the upper bracket finals, and then we have the lower bracket. So the two guys who won their pools in the upper bracket are going to be going up against each other in the upper bracket final. That's the winner finals. And the two guys that came in from the lower brackets of their pools are going to be going in the losers semifinal. From there on out, the journey is pretty straightforward. I mean, you can follow the lines. If you lose in the winners final, you go to the losers final. From there on out, you have to compete to come You know up what, to the though? winners final. Yeah. I mean, I completely agree with you. It's just one point that I do want to point out, which is the fact that why do people end up calling it losers bracket? I mean, It's it a could very lower well be a bracket. lower bracket, Yeah. mate. It better be a lower bracket, because again, Quaylectra and those champs, I mean, they are not easy to defeat. But It's- I think the people in the upper bracket might just disagree. They are like, they are beneath us. We have beaten them, and That's so true. that's why they deserve to be called that. But we have a look at the schedule now. Yep, with that, of course, let's have a look at the schedule where indeed, as we just discussed today, we are starting things off with the semi-finals and the finals of Super Smash Bros. Moving on, it will, of course, be Street Fighter. And along that same time, we do have the show match taking Yeah. place as well. Street Fighter 5 show match between Thug and Scout, the first to 10 race. That's going to be there. It's going to be a super intense one. I mean, we did hear the bets that were placed Right. with a cap coming off and the hair being colored black. Let's see if that happens and who is going to win the bet. But let's talk about the current matchup that's in front of us, and it is Lionheart versus SG. Both the players having no losses during their qualifiers. Yep. Yeah. I mean, what more can you see? What more can you say, in fact, is what I wanted to say right there. Because again, I mean, this is not easy. The kind of competition that these competitive games have these days, especially, it is not easy at all. And to be able to remotely be that good, and again, when you're in Yeah. the arena, right? When you're live in the arena, it's a completely different stake. But when you're playing it online, it's a completely different vibe. I mean, there are pros and cons to both Right. of them. I mean, when you're in the arena, some of the players are so into it that they sort of feed off the people's momentum Exactly. and the cheers, and then they outperform. But being in the home has its own comforts, right? You can just sit wherever you want and play however you want, in whatever posture you want. That is so true. Yeah. With But that, please, Yeah. of course, the co-host, mate. Co-host, go right ahead. there is something we have to look at, right? Yep, that is true. We do have an interview, so let's just quickly segue into the interview with Lionheart. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to an interview with KO Fight Night that currently is going on. My name is going to be Roshan Sharma, and alongside me, I have Lionheart, one of the most dominating players right now, actually dominated his way through Group A, if I have to talk about it, and I'm hoping he's going to dominate this interview as well. So, welcome. Hi everyone. I am Abhiru Verma, and as you all know, I am known as Lionheart in my nickname in the in-game Smash Brothers. And so, I'm actually thrilled to have you here on this area right now, on this interview for KO Fight Night Super Smash Bros. But I want to know more about you. What's your belongings and what have you studied and all those things beside gaming as a thing? So I am doing my MBA right now, and I completed my bachelor's in computer engineering last year, and I belong to Bhopal, Madhya Pradesh. So there are not a lot of players here. There is only 2 players here, including me. So I want to ask you a question as of now. Like, when did you start playing Super Smash Bros. And how do you transition from being a normal player to a competitive player? So I started playing Smash 12 years ago, and it was the first Smash game, Smash 64. So I started from it, and I just found this game really interesting because it was quite unconventional compared to the other fighting games. And this fighting game had all of the Nintendo characters, which I really liked. So I started playing it casually, but only until the last Smash game, which was Smash 4, I started to take this more seriously and started to transition from the casual play to the competitive play. And around 2015, I had this competitive fire in me and started to improve. And then only last year, I found that there is a Smash community in India and we have tournaments here. So I found that community, and last year, I just went to my first tournament. And ever since then, I've been playing Smash Brothers and really enjoying Smash India community. You have gathered a lot of fans, a family out there. But then personally, which is your favorite character in the game if we talk about it, and why? I would want to ask you. Okay, so my favorite character is actually Ganondorf. As many of you know, he's the main villain from the Legend of Zelda series, and he's extremely powerful character in Smash Brothers. He's not a top tier or even a mid tier at that, and he's never been too good in any of the Smash games, but still I really like him, I love him, and he's just super powerful, and I just love that about him.
then talking about all the other characters, because right, it actually accumulates a universe of characters if you're talking about it. So I want to ask you your personal opinion. Which character do you think should be nerfed and which character should be buffed in the upcoming updates or something? So Smash Ultimate is really, really balanced. Even low tiers have chance to compete against the high tiers. And I am probably the biggest example of that in India because I used to use Ganondorf, who was a low tier. But if we talk about who I think should be nerfed, I would say that probably Palutena because she is really, really overwhelming in the air and she's just such a strong character. And even in this tournament, there's so many players using Palutena. But it's just that they are very, very skilled with any kind of character. But in general, if I wanted to ask for any kind of nerf, it would probably be Palutena. So I want to ask you your upcoming times. Like, what are your future goals with this game? Like, constituting as you have had 12 years of experience. So moving forward, where do you see yourself in the future goals with the game? Hopefully representing India in some international tournaments and of course doing well in India. But my first priority is always going to be my home, my Smash Bros India community. I just want this community to grow more and more and we can all become a strong scene. That is always going to be my number one priority in future. How did you come up with the name of Lionheart? How did that just happen? And then what is that one factor that just keeps you engaged with the game even after these 12 years? So I came up with my tag just last year, Lionheart. So it's basically a title of a character from a Fire Emblem game. And that Fire Emblem character is really close to my heart. So I just took his title and made it into my tag. And as to what thing which just keeps me pulling back to the game is basically the fun. We all just play for the fun. And every time, even if I'm beaten, I still have that fire to, just practice and play more and beat that person, beat that character. So ultimately, fun is definitely something that keeps pulling me back to Smash Ultimate. Do you feel is there some person, if you want to name him or her, that's your strongest rival in the game as of now? My strongest rival in Smash Bros India community has to be Botman, aka Rohit Adappa, and he has always been my rival ever since my first tournament. We have always been going at each other. We always meet in grand finals. So he's definitely one person which I'm always careful about, and I have to give my 100% against him. As the tournament is progressing further, I want to ask you what are your expectations from this tournament, KO Fight Night as a whole? My first expectation is definitely to have very, very hype and fun games because with the pressure of a tournament comes some of the best plays. And there's always going to be a lot of pressure, but even in the pressure, the best of the players will pick the best of the options to give us one of the best matches. So that is definitely my expectation to see more hype matches in future of KO Fight Nights. In the national leaderboards of Airtel India Esports Tour, I mean, how are you planning to cling to a very good position? So right now I'm ranked at number 1 and hopefully I could keep that rank, but I just want to be top 3 definitely in Airtel India Esports leaderboard. Your rivals, your friends, your frenemies and your family and all those things. So is there any message that you want to give to them as a person who is representing such an amazing game? I just want to give the message to my community that let's all just have fun for the game that we are all so passionate about and let's grow this community into something really, really big in upcoming years. So that is going to be my message to my community and all of my friends. I'll see you around on that battlefield only if anything that just comes up. So I'll just wish you all the best for all the further matches that are going to be happening out there and see you on the other side. Well. Of course, Lionheart ने तो बोल दिया कि भाई Botman, you better be prepped, you better be ready, because Lionheart is coming for you. But along with that, of course, we do have Lionheart's competition, that is SG. So let's also have a look at the interview जो SG ने दिया. Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत है आप सबका. मेरा नाम है वशिष्ठ शर्मा और आज हम आए हैं KO Fight Night के इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हुए SG से बात करते हैं. श्रेय गांधी इनका नाम, लेकिन SG के स्टेज नेम, गेम नेम से जाने जाते हैं. So first of all, I would just say it's an honor to have you out here amongst us and मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा. सबसे पहले तो why don't you just start with introducing yourself? जैसे आपने बोला, मेरा नाम श्रेय गांधी है. मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ कनाडा में, लेकिन अभी कोरोना के कारण मैं इंडिया में ही रह रहा हूँ और मैं भी अपनी एजुकेशन ऑनलाइन कंप्लीट कर रहा हूँ. और मुझे आपने जैसे बोला सुपर स्मैश ब्रदर्स खेलना बहुत अच्छा लगता है. आपको खेलना अच्छा लगता है? आपने खेलना कब से स्टार्ट किया और कब से अभी तक आपकी कॉम्पिटिटिव जर्नी में ट्रांजिशन कैसे रही? मैंने खेलना 2014
14 में शुरू किया था, बहुत पहले सुपर स्मैश ब्रदर्स ब्रॉल से। उसके बाद मैंने उसका नेक्स्ट वर्जन सुपर स्मैश ब्रदर्स फॉर वी यू खेला, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन तब मुझे कम्पिटिटिव सीन के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए लाइक आपका कंफर्ट जोन के हिसाब से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? बिकॉज जो सुपर स्मैश का यूनिवर्स उसमें बहुत सारे कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम बीमन एप्पे का जो गया मारियो एंड व्हाट नॉट, सो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहता मारियो ही है निंटेंडो का सबसे मैस्कॉट। उस कैरेक्टर ने मुझे बहुत गेम जिताए हैं, है? इसलिए मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। हाँ बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनको नर्व किया जाना चाहिए, बफ किया जाना चाहिए आने वाले अपडेट्स में, और क्यों? नर्फ कर सकते हैं पिकाचू को, क्योंकि उसके कोई वीकनेस नहीं है सच, और उसका बस वेट कम है, बाकी उसके सारे टूल्स बहुत अच्छे हैं। और बफ मैं कहूंगा सारे लो टियर वाले कैरेक्टर जैसे कर्बी, इंसेनरोर, इन सबको बफ करना चाहिए, क्योंकि इनका लाइक कम्पिटिटिव में आप इनको नहीं खेल सकते, आप हमेशा हारोगे इनको खेल के। जैसे आपने अभी अपने बारे में बताया, आपकी स्टडीज भी कनाडा में चल रही है, वहां से आप ये चीज कर रहे हो, सो आप गेम को लेकर के, इस गेम को लेकर के अपने फ्यूचर गोल्स कैसे देखते तो फ्यूचर मेरा इस गेम को लेके टू बी ऑनेस्ट अनसर्टेन है बहुत। हो? नॉर्मल खेलना लेकिन कम्युनिटी में आकर के खेलना, क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं उन जर्नीज? जब तो नॉर्मल खेलते हो तो सुपर स्मैश ब्रदर्स अपने कैजुअल प्ले के लिए बहुत जाना जाता है, जैसे आइटम्स वाइटम्स, तो आप आइटम्स यूज करते हो, स्मैश बॉल यूज करते हो, आप बस मजे के लिए खेलते हो। कम्पिटिटिव में आपका थोड़ा टारगेट रहता है कि हाँ नहीं मुझे जीतना है। आपको ऐसा कौन सा लगता है एक ऐसा प्लेयर जो आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल है? मैं कहूंगा बॉटमैन और अभिरूप जैसे लायन हार्ट, आपने इंटरव्यू करा ही होगा, इंडिया का बेस्ट जी। प्लेयर चल रहा है कम से कम 1-1.5 साल से, उसको कोई हरा नहीं पाता है, तो हमेशा जीतता रहता है। और बॉटमैन एक और बहुत अच्छा प्लेयर है, उनके साथ मेरे हर मैच क्लोज होते हैं, और हमेशा मैच खेलते वक्त बहुत मजा आता है उन दोनों के साथ। जैसे टूर्नामेंट अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, आप ग्रुप बी को डोमिनेट किया आपने काफी अच्छे तरीके से, तो आगे की चीजों को आप कैसे देखते हो टूर्नामेंट? टॉप 4 तक तो मैं पहुंच गया हूँ, बस मेरा टारगेट होगा कि मैं पूरा जीत ही आऊँ ऑब्वियसली। जो एक लीडर बोर्ड चलता है, नेशनल लीडर बोर्ड, उसके अंदर अभी लायनहार्ट ही टॉप कर रहे हैं, बट आप अपने आप को कहां पर देखते हो जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव सिनेरियो आगे बढ़ता रहेगा? आगे मैं बस यही है, अपना बेस्ट दूंगा, फिर देखते हैं लीडर बोर्ड में कहाँ जाएंगे। बेस्ट तो मैं ट्राई करने के लिए दूंगा, और शायद उसको हरा भी दो इस टाइम, यू नेवर नो। आपकी जो कम्युनिटी बनी है, जो आपके फैंस बने हैं, उन सब के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज हो तो मैं यही चाहूंगा कि सब खेलते रहे गेम, और बेटर होते रहें, ताकि कम सीन हमारा ग्रो होता रहे, और फैंस इस गेम के बनते रहें, ताकि हमारा भी सीन बाहर के सीन जैसे बड़ा हो जाए, यूएस और कनाडा के सीन्स की तरह, विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स। I would just say all the best for all the future endeavors आपके लिए भी, and I hope कि आप जीते, I hope कि maybe इस बार लायनहार्ट को एक बहुत अच्छी टक्कर देखने को मिले, so yeah, for all those things I would say all the best and see you around. All right, well, that of course is the competition that is going to be faced by this wonderful lad Lionheart. But indeed, the question does fall back onto us. Who do we support, mate? I mean, who are you going for? We have both the players who are pretty dedicated. Well, Yes. I think it's just time to find out. It is actually. I mean, enough banter coming in from the analyst desk. Let's quickly get this game started. Enough wait already. It is time to get busy with some Super Smash Bros. And for that, of course, we do have our talented casters ready to get started. So it says over to our casters, Akshit and, of course, Vishal. What is up, guys? Welcome back to Nodwin Gaming's KO Fight Night Season 5, powered by Nodwin Gaming Airtel India Esports Tour. Vishal, we're back with the best of the best of the best in the grand finale of KO Fight Night. And how are you feeling today, dude? Dude, honestly, the top four, you said it, man. You said it. It's the best of the best in the country. I honestly feel amazing about this. It's been a long journey for all of these players. It's been a hell of a run in all the qualifiers that they battled it out. It just looked beautiful. Yeah, I'm it's crazy. I honestly mean, at a like a loss of words, but it is pretty crazy. yeah, I mean, dude, look at the players that we have competing right now. We have Lionheart, we have Botman, we have Quaylectra, and we have SG. These are probably the top 4 or top 5 players in the whole country, and they're here to battle it out against each other to win that sweet 50,000 rupees prize money. All right, let's Ah. go. Let's get into the first match already. Yep, they've already got in. Lionheart versus SG, going in with Bowser and Palutena. Lionheart repping the level 0 tag, repping his sponsorship right there. And I mean, it's what do you think about this matchup, Vishal?
Honestly, these players know how to roll, right? They know how to go against each other. Palutena and Bowser, honestly, Lionheart with his Bowser does look pretty strong, right? Like we've seen him battle it out at every single tournament, but he wins with his Bowser. 100%. Like it's pretty crazy to see a heavy main performing so well and actually getting to the top. And he has patience. He has the perseverance. Yeah, I mean, clearly, I mean, you can see from his past sets, the way that he's played and the way that he's performed as well. Continuing his run of dominance, winning almost every tournament that the scene has thrown at him, and winning like probably 2 or 3 of our biggest tournaments as well. It just goes to show that Lionheart does not back down from a challenge, and he almost always rises to the occasion with whatever character that you want him to play. He started his run with his Ganondorf, which was dominant in the scene, and then he decided to switch to Bowser, which continued to be as dominant, even though people expected that he peaked with his Ganondorf. But That's so Lionheart, true, though. That's so true. Like you see his gameplay with his Ganondorf, and that character is kind of a low tier or considered a low tier, right? yeah, right. And imagine this person just dominating the entire scene with it, and then he switches characters, and then he does the same again. But so it really goes to show the kind of caliber that he accumulates and actually puts out there. Absolutely. I think I would wholeheartedly agree with you right now. And talking about Lionheart's Bowser, I mean, there isn't much that has to be said for it because his Bowser has been absolutely tearing the scene apart right now. And Oh, you can definitely. clearly tell, like, his Bowser is a character that has a lot of work put into it. You can see from his spacing to his movement to the way he cleans up stocks one after the other before the opponent even realizes it, the game is over, and they just see Bowser on the screen, and they're completely, they're at a loss of words. They don't know what to say, and I mean, you can see right now Lionheart showing absolute dominance in this game. Oh, definitely, dude. Like the thing is, these players know how to battle it out. Like you said, and this Palutena also. I don't even know what to say about this, honestly. It's crazy, dude. I mean, the way that both these players play, the restraint that they show against each other, the awareness that they have against each other. It's absolutely insane how well they're able to keep up the pace. And we've been talking a lot about Lionheart, but SG is definitely one of those players who can match that level of gameplay and match Lionheart's pace and take him right to the limit, because Lionheart knows that nobody in this top 4 bracket is a free win, and that he's going to have a tough competition at every step of the way to make his way to that sweet 50,000 prize pool. And while we're talking about only Lionheart, I think almost all 4 of these players, Lionheart, Shrey, Botman, and Quaylectra, have an equal shot at winning this 50,000 rupees. I think this is one of the most unpredictable outcomes that we've seen. Yeah, so like the thing is, Lionheart, like we've talked about, like he just dominates. Like, see that last game that he played, they did go down to the last stock, but Exactly. they did go down to the last stock, and you have to see that that kind of gameplay in them. Like it just blows my mind, right? That's true. I mean, it's absolutely crazy that Lionheart, he's. I mean, we speak so much about Lionheart, but Shrey has been one of the players who's been showing dominance ever since he returned to the scene in India. Yeah. He's been a top 3, top 4 player consistently the whole time, and it's crazy because like you don't expect it to. You don't expect a dominance like Lionheart and Botman to be challenged, but then you have Shrey Gandhi, you have players like Quaylectra and Roselle who constantly push these players to their limit and defying the standard of Smash Ultimate in India. And it's crazy how that standard just seems to be going up.
Yeah, when SG left, to America, he, how he had problems playing with people over here because he still wanted to play with us. So he had a lot of latency issues, but he still was top 3, top 4. Like he still managed to get those places even with You're like a lot right. of latency issues. So now that he's back, I'm so glad that we are able to see him battled out like this. You're right. Absolutely. I think, I mean, getting into this game too right now, uh, I mean, Lionheart definitely taking that game one. But, SG does have to clean up a little bit right now because he is a game down. And that does mean that the advantage is with Lionheart right now. Although, I mean, if SG wins one game right now, uh, then it could be a dead even set right now. I mean, you can tell, oh, SG, I mean, this Mario we've seen a lot, and this is, the classic rivalry, Mario, Bowser, SG, Lionheart. I think it's all coming together now. This is a part of the plot armor, you see. Yeah, so I mean that is kind of like a situation where he pulls out his Palutena, but then he counters and goes for his main, which he has performed insanely well. Yeah, I mean, definitely. And SG's Mario definitely not a character to be slept on. Even though he plays his Palutena a lot, his Mario is definitely one of the best characters that we've seen coming out of SG. Very smart. Mario is known to be one of the most honest characters in Smash over the generations across multiple games. And SG plays his Mario in a way that shows how strong his fundamentals are because he's able to do so much with a character that honest. And I mean, Lionheart, though, right now it's looking like Lionheart is pulling ahead. SG, though, he's trying to keep up right now. And you can tell that SG is playing a lot more carefully, using his fireballs, using those projectiles, trying to keep Lionheart away because he knows that Bowser doesn't have many options to approach easily. And the more that he can keep away and whiff punish Bowser, the better it will be for him. Oh yeah, so the thing is, Lionheart is a really patient player. Like, you can see it in his gameplay. He actually capitalizes on the mistakes you make, right? Like his neutral game is so on point that you can just see the kind of plays he makes. See that? Look at that out of shield up. He just goes for it. You're right, absolutely. And look, I mean, Lionheart is in a potential 3-stock situation, but he's at very high percent. And I've seen SG comboing characters from 0 to death online, and you can tell that this man, if he's given enough space, he can definitely bring this whole game back. Yeah, so so the thing is, wow, this 246% that you see, this 246 that you see, right? This 246%, wow, he took Oh that my last. god, it's a 3-star. What is this? Okay, Lionheart absolutely dominating SG that game too. We spoke a lot about his Mario, but Lionheart's Bowser, the tried and the tested, probably the best character coming out of the best player in the scene, and Lionheart just proving once again that his dominance could be probably the most unchallenged kind in this whole tournament. Lionheart taking it 2-0 right now. Shrey has a mountain to climb right now to bring this back because he has to reverse 3-0 Lionheart right now. Vishal, what do you think his odds are in a situation like this? Well, for a fact that you'd expect to see a counter pick again, since he performed not as great with his Mario as he did with Palutena. You're right. That's really confusing also because Mario is his main. I mean, yeah, I think he plays Mario and Palutena both pretty well, and he plays them almost at an equal level of skill. So it's going to be interesting to see what his character pick is, because he definitely did a lot better with his Palutena than he did with his Mario. And but you have to consider that he has to constantly switch playstyles to play between these two characters, and that does add a factor, to how well he's playing. So do you think, more important question, do you think Lionheart is going to stay Bowser, or do you think he's going to go for some style and try to whip out some of his less well-known characters, for a shot at the swag moments? Just the style on him, honestly. I mean, it does look like Lionheart does these weird things where he just
he does whatever he's in the mood for, That's right? true. So I mean, it could happen. I looking for that Ganon, live on this show. You know, it's looking pretty amazing, my Seeing man. everything go full circle, Yeah. from the first tournament that Lionheart played last year to the biggest tournament that we have so far. During this season of tournaments, I mean, it does go full circle for Lionheart if he plays his Ganondorf. But I mean, I think he might stick to his Bowser because Lionheart, clearly you could see in that second game that he was feeling his character. He was in sync with the way Bowser was thinking. And we do think, I mean, we see a Palutena pick coming out of Shrey Gandhi right now. And I honestly, let's just see how this game goes, dude, because the way Lionheart is playing right now, it does look like it's very difficult for SG to come back. But if there's a player that I can imagine coming back from this situation, there's nobody better I can imagine than SG himself. Okay, so let's get into game 3. Starting off with a pretty slow neutral, both of them moving around a little bit. Lionheart trying to get some openings with his up Bs, not working out. SG punishing all of them so far. Wow. Okay, so again, SG, playing really clean, getting that grab and back throwing him off the stage. Okay, I think there has been a small connection error, but I think the players are still in the game. So Vishal, let's just talk about how these players play against each other. We've seen Lionheart be absolutely dominant right now, and SG, he's been trying to keep up, but in that second game, we could clearly see that he got 3 stars. Not Vishal. And SG is a really big big on Mario, right? Like he could have gone in and he could have capitalized on Lionheart being at such a high percent. But thinking about that game, I really have no words to say. He was at 246%, a 3-stock situation. He just destroyed his Mario. Yeah, I mean, you could tell like SG's Mario was having a hard time getting down, and Lionheart's Bowser just did not let up. But he has switched back to his Palutena. So what are your predictions for this match, Vishal? What do you think? Do you think SG can pull it back right now? See, he can, because he did do really well in that first game, since he got Lionheart down to his last stock as well. Like it was at 0%, but it looked like a pretty good game. So it could go either way. Like SG is a pretty strong player. Yeah, right. He can battle it. He can take it. Absolutely, and I think SG's Palutena already, from the first stock that we saw that game, his Palutena was looking a lot more confident, punishing Lionheart for doing those careless up Bs, grabbing him, back throwing him. I think by the time that we got disconnected, I have a very strong feeling that SG was done with that stock. And I mean, if he had his first stock as powerful as that, I think it definitely means that he is ready, to challenge the dominance of Lionheart's Bowser. And SG, historically one of the players who's given Lionheart the closest competition in tournaments. We've been having a lot of tournaments within the community itself, and you can tell that SG has been one of the players that has constantly been an issue for Lionheart. And like with a dominance like that, if SG is able to challenge it, I think it clearly, it's a sign that Lionheart isn't unchallenged anymore, and that SG is one of the players that can definitely, take this set even from a 2-0 deficit. Oh yeah, for sure. Like SG, no, like SG and Botman, like you were saying, like these guys, they can take it from Lionheart. That's for sure. Like yeah, I mean, they just know it. They just know how to actually go against this player. Like Quaylectra, I think is still arguably top 3 or top 4. Like SG definitely took one over him, but he's still our parry god. I see these 4 players, anything can happen. And the best part is that all of these players have such different play styles. You have Botman with the
with the fast, the technical, it's Yeah. not raw aggression, but it's very, very like skilled and technical gameplay. He has all these interesting movement. He has these crazy combos that it looks like he almost makes up on the spot. And then you Yeah. have, Quaylectra, like hard fundamentals characters, plays so many So characters beautiful. so well. And, going clean, neutral game, beautiful punish game, knows exactly when to pick the spot to approach, when to pull back. And then you have, Lionheart. Lionheart, one of the more patient players, he plays and he knows how to wait for the right opening to come in. Yeah. And he's never ever in a situation where he's frustrated, like, oh, I need to get in right now. He'll always make sure that he waits because he knows that the opportunity will present itself. And then Yeah, as soon as he the keeps his opportunity, and as soon as the opportunity presents itself, completely destroying the opponent. And Yeah. obviously, then you have SG. He's like a mixture of multiple play styles, and he plays different characters in several different ways. His Mario, very fundamentals heavy. His Palutena, a patient, strong combo character. And SG, I think, is one of the players who's really adapted very, very well to the delay that online Smash Ultimate has, and that's been one of the biggest differentiating factors for him from the rest of the people on the PR. Don't you agree, Vishal? Yeah, for sure. Though, like that's the thing. Most of the other players have played offline more than online, right? And when we started doing the online tournaments, these guys actually didn't really like playing online because of the delay. I think right. SG already had an upper hand in that sense because he used to play online only. Right? True. We haven't seen him in an offline tournament yet. So the thing is, he can take this because he does have experience playing online. Absolutely. And it's not just his experience playing online. You can also tell that, apart from his experience playing online, SG, a very smart player of the game itself. I mean, I don't doubt that if SG showed up to an offline tournament right now, he'd probably still be top 3 or top 4 in India, without any question. Because it's not just about adapting to the delay. That's one thing, but knowing what to do in which kind of situation, that's definitely one of the biggest factors that allows people to rise to the top of the top in this game. Yeah, it's definitely hard, thinking about how these these characters go against each other. Like SG itself online, I said he has the experience, but like you said, he knows what to do online, so Exactly. he might be better offline. Okay, so we have a game 4, which means that SG did take that game. All right then. So SG already starting the route of his reverse 3-0. Let's see if he can make it back. Good combo right now starting off from SG. Already putting on 65% onto Lionheart. Just firing it on. Beautiful explosive flame. Oh my god, he's going for those explosive flames. Okay, so Lionheart going for, he's going ham now right at the ledge. Yeah, you can tell. I mean, Lionheart, he started off with SG started off with a very big combo, but Lionheart, couple of good forward airs, doing some good up Bs out of streak, and he's already made it back, and he takes the first stock with that down tilt. Oh my god! Down tilt. Lionheart throwing out all convention, just absolutely, after getting comboed by SG so well that entire first stock. He's the one who ends up taking SG stock before SG can take Lionheart. Oh no, the bad situation. He could have for capitalized SG. on that though. He could have capitalized on that. Yeah, I think He SG went made a offstage. small mistake by going off stage right there, because if Lionheart had gotten there a split second earlier, he could have easily killed SG right there. Lionheart, SG just waiting it out on the platform. Good spacing with his projectiles right now. Oh, nice. This forward air. almost looks like first game, right? Like Lionheart's at 200%, but Yeah, but SG definitely in a much better position. Whoa, Nice, okay, he went SG. for that. Both at 2 stocks each. SG with a little bit of a percentage deficit, but one good combo from SG and you can definitely bring it right back. Bowser, being a heavy character, does come at a cost, and for Bowser that cost is slow movement and one of the easiest characters to combo right now. Like, look at that, he's been getting those Nair strings consistently, 4 Nair strings, and he's at 50% already. Did Nice you up see the that other insane yeah. parry though? That was a He crazy parried parry. that neutral beam.
And he knew exactly when to parry. He parried the last projectile because if you parry any earlier, the remaining projectiles can still hit you and your parry is basically worthless. And in fact, sometimes even more useless than shielding because you take some extra damage. But Lionheart... That was a really good grab from Grab. SG as a... Oh, like, the down air. what? That spike? Oh my god, that was gonna be it. that was Yeah, off that's gonna ledge. kill. The side B from Lionheart just walking across the stage menacingly right now. Nice back throw again from SG. Let's see if he can get the kill right now. Good forward air, keeping him off stage. Beautiful explosive flame. Is he gonna clean this up right now? Okay, Lionheart getting back to the ledge. Still not back on stage. Oh no, he's back. He's in center stage. SG at the ledge. This is a bad position. How did SG manage to corner himself against Lionheart like that? He was in control that whole edge guard, and then all of a sudden Lionheart's back on center stage, and SG's in the corner. Nice These forward players air are again. so good that they actually, have such good fundamentals. They actually follow, center stage, and like when SG is off stage, he doesn't like risk it to, No, you know. SG DIing into that neutral B. Getting hit Oh, by so much. okay, yeah, he'll recover. Yeah, he makes it back and he make it back to center stage. Lionheart with some excellent ledge trapping. Those forward airs just so clean. SG. That air dodge. Unfortunate, he air dodged and then he got hooked by the flip. There's nothing he could do. Wow, Lionheart taking it 3-1 over SG. Dude, Vishal, this is our first set of the day. And we already have such highlight moments right now. The 3-stock, the fat combos from SG, the fat combos from Lionheart. That down air, I don't even know how that works, but it works somehow. That down air spike absolutely was so crazy. funny. Okay, if it was off ledge, that would have been end. That would have been It the would have end, been yeah. over. Clearly, Yeah. I mean, and SG, he got bounced like a basketball. He got knocked down and then he went right back up, and it was, I mean, some things about this game, even after playing it for so long, there are some things about this game that just cannot be explained, but they're just so hyped to watch, and I think that's what makes Smash truly a great game. The fact that not everything can be explained in this game, but there are just those, there is some skill involved, and there are also those random moments, and you can clearly tell that those moments of randomness, when even top players don't expect it. Yeah, so like that's the thing. Like you said, those moments of randomness. Like these players are so good that they actually keep each other away. They use the right attacks. They even space so well. It's so insane to watch. It's so insane to watch. But All right, then let's go back to the desk where Bloater is waiting to give us some feedback. GG's indeed, mate. I mean, thank you so very much for, by the way, of You course, have to give Akshat us- and Vishal. But dude, what a game. Yeah. This guy is on top of every single round. Lionheart. I mean, SG had a couple of rounds in there, couple of moments in there where it seemed like he might be able to clutch it. But Lionheart is too good. He's moving on against that Botman. Definitely. I mean, he is good. That's why he was in the upper bracket. And as you said, the opportunities being perfectly utilized by Lionheart. SG, as you said, did have his moments to shine as well. But Lionheart having an amazing run in this matchup. Well, it's time to look at the stats of the match and the winner's screen as well. It is going to be pretty impressive as to how the matchup actually went. A clean sweep coming in from the side of Lionheart. And as we said, apart from that first round, the first game, wherein SG did put up a close fight with the stacks that he had, Lionheart just like having an amazing time in the other two. Exactly. I mean, he was dominating, dude. Exactly what Akshat was talking about as well. Because the game went so quickly, so very quick. Lionheart was on top of that platform, controlling the platform and not allowing SG any space at all. I mean, double jump करके आप आ तो गए, but आप फिर वापस ज़्यादा देर रुकने नहीं वाले हो. Is what the main strategy was, I think. Exactly. I mean, controlling the pressure on the platform is going to be important, especially when you knock someone out. और वही चीज़ Lionheart यहाँ पे perfectly करते हुए आ रहे हैं. हम इनकी बात कर रहे थे कि हम इनको Dream Hack पे भी देखा था, वहाँ से इनको जानते हैं. The jersey that he's wearing as well is something that we remember. Level 0, a pretty big organization. So being sponsored has its own perks and the pressure comes in as well. But ये जो हमारे athlete है, इनके लिए pressure कुछ नहीं है. High pressure situations के अंदर भी बहुत ही perfect on point gameplay आता हुआ इनकी तरफ से. Absolutely. Another thing that I would want to go back to the casters that they pointed out is game कुछ
टेक्निकल है और कुछ इस तरीके से टेक्निकल है that there are microseconds where indeed certain things are done that you cannot just pinpoint out, but you know what happened. Exactly, that's the randomness, और वो हर चीज में होती है, और वही एक चीज होती है that separates the good players from the normal players, right? To be able to adapt to those moments. जितनी जल्दी आप adapt करके react कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहता है. एक बारी आ चुकी है हमारे पास ब्रैकेट्स के ऊपर, एक बारी फिर से नजर डालते हैं और देखते हैं कि जर्नी हमारी कहाँ तक पहुंची है. तो अपर ब्रैकेट की जैसे हम बात कर रहे थे, विनर्स फाइनल जो है वो खत्म हो चुका है. लायन हार्ट के पास क्लीन स्वीप आता हुआ एक और सीधा पहुंच चुके हैं ग्रैंड फाइनल्स की तरफ. फिर अगर बात करें लोअर ब्रैकेट में तो वहां अब हमें वो मैच देखना है. एंड देयर इज वन प्लेयर दैट वी डिड हियर अबाउट कपल ऑफ सेकंड्स अर्लियर. लायन हार्ट से खुद से सुना था हमने, लेकिन अभी हम दोनों प्लेयर्स के ऊपर एक एक नजर डालेंगे. Absolutely. I mean, dude, I absolutely do love for Quaylectra to be in that. But once again, as you pointed out, when it comes to Lionheart, and जो उन्होंने मतलब clear cut बोला है कि I am on Botman. Botman, I'm waiting for you. You better watch it. And that I'm pretty sure Lionheart is going to be praying for. Lionheart is watching out for Botman as well. I mean, he is prepared for him, but he is worried about him as well. That's what he said, right? उन्होंने यही कहा था कि if there is a player who can actually take him out quite easily, it is that one player sitting in the lower bracket right now. और उनसे लड़ने के लिए मतलब एक मैच है यहाँ पे जो बॉटमैन को क्लियर करना होगा बस. Just that one. But once again, the competition that he's going to be facing is Quaylectra. Exactly. और Quaylectra के पास भी वही opportunity है to move forward. Dude is so swift. Quaylectra is not an easy competition to defeat. No questions asked. I mean, I clearly do. Never mind the details and what happened last year, because this year is another story, another gamble altogether, where indeed all the players have showcased wonderful performances, but it all boils down to this moment. हाँ, हर किसी को prize pool के अंदर थोड़ा बहुत share मिल रहा है, but now it's not about that. Now it's taking it personally, and taking it personally to such a level that जो वो पिछले इतने सालों से वो चल रहा है, that feud will continue on. चलिए अब अगले मैचअप की बात कर लेते हैं. जैसे हम प्लेयर्स के बारे में तो बात कर रहे थे, Quaylectra वर्सेस बॉटमैन. दोनों आई मीन क्वालिफायर्स की जर्नी की बात करें, अनडिफीटेड रहते. ये चीज़ें हमने पहले भी देखी थी, एक बार नजर डाली थी जब हम प्लेऑफ्स के मैचेस इनके बात कर रहे थे. बट अब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि वो प्लेऑफ्स थे बस आपके टॉप 16 के. अब आप फाइनल्स की जर्नी पे स्टार्ट कर रहे हैं, और फाइनल्स का प्रेशर हमेशा से ही एक अलग चीज़ रहता है. चलिए अब प्लेयर्स से ही बात करके देख लेते हैं, जहाँ पे हमारे साथ ओशन जुड़ रहे हैं, और दोनों प्लेयर्स के इंटरव्यूज पर एक बार नजर डालते हैं. Absolutely. Ladies and boys and girls, स्वागत आप सबका. मेरा नाम है ओशन शर्मा, और अभी तक KO फाइट नाइट के मैच सुपर स्मैश ब्रोस के इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुके हैं. हमने लूजर ब्रैकेट्स भी देखे, हमने विनर ब्रैकेट्स भी देखे, और उन सब के बीच में बहुत ज्यादा बेहतरीन मैचेस चलते रहे. बट अब जिस प्लेयर से मैं बात करने जा रहा हूँ, उनसे पहले मैंने जितने प्लेयर्स का इंटरव्यू लिया, एवरीवन एल्स वाज लाइक fearing him in a way, because आप बोल सकते हो that he's got to this game or something. So we have Botman with us, and Rohit के नाम से भी जाने जाते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, thank you very much for giving your precious time out here, and welcome to this one. Thank you. Before we just start with everything in the conversations and whatnot, I would like to know about your introduction, like basic introduction. आप कहाँ से हो, आपकी studies and all, और क्या-क्या चीज़. So my name is Adapa Sai Rohit. मैं हैदराबाद से हूँ, और मैं अभी अपना एनिमेशन का 3rd ईयर फिनिश कर चुका हूँ, और कनाडा जाने का प्लान है नेक्स्ट. आपकी जर्नी कैसे रही है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम सुपर स्मैश ब्रोस आपने कब से खेलना शुरू किया, तब से अभी तक आपकी ओवरऑल नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव जर्नी किस तरह की रही? 2 years पहले I started playing competitively, and I joined the scene अभी, and then within 1 year I think I became rank 2 इंडिया में. अभी still continuing on that. So आपका favorite character कौन सा है, and why do you just choose that? So my favorite character is Joker. He's from Persona 5. So mainly he is very stylish. इसीलिए मतलब जो भी करता हूँ he's like he has combos. फिर stage के बाहर जाके मारता है. Like very fun to play him. Which is the strongest rival जो आपको लगता है कि जिनके सामने आपको टक्कर की कंपटीशन देकर कैसे लगा कि हाँ इनसे शायद मैं हार भी सकूं? Lionheart जो अभी like best player इंडिया में, उनके साथ हमेशा like from last 2 years जितने भी tournaments that I've attended सारे में he beat me. Like I got second to him every single tournament. I don't think I've beaten him even once offline. ऐसे. And from KO Fight Night, what are your expectations from this tournament as per your personal experience as at a whole? Right now, a lot of people have been getting better at this game, and in this tournament, in the top 16, everyone's really good, and even in the top 4 right now, सब लोग बहुत अच्छे खेलते हैं. और like
this tournament has given the chance for people to bring out their best. I say, like, that's why I'm going to try my best too in the finale. So Yeah. what are your strategies? Like, what are you planning to do कि आप वो एयरटेल इंडिया स्पोर्ट्स ग्रुप की जो पूरी अंक तालिका रहती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप उसमें कहीं ना कहीं उनसे ऊपर जा सके like what's on your mindset? ये टॉप 4 में भी like I'll try to have patience because अभी बेस्ट ऑफ 5 है ना, तो 5 गेम तक जा भी सकता है और उसके लिए like if I use up everything in the start then बाद में backfire होगा. So is there any message जो आप देना चाहोगे उस कम्युनिटी को, अपने फ्रेंड्स को, maybe Lionheart को भी if you just want to shout something? ये कम्युनिटी की वजह से वी आर ऑल हियर राइट नाउ एंड इट्स बिन ग्रोइंग. जब से मैं ज्वाइन हुआ था तब से इट्स ग्रोन अ लॉट नाउ एंड एवरीवनस वेरी वेलकमिंग एंड एवरीवनस लाइक सपोर्ट्स ईच अदर. अगर किसी से हार गए उनको जाके पूछोगे तो दे विल गिव यू टिप्स टू गेट बेटर एंड आई रियली लाइक दैट अबाउट एवरीवन and I thank everyone in my life for supporting me to get this far. An aggressive player who knows what the support of the community actually means. So that's Botman for you guys, and I would just say all the best for all the future endeavors जो भी आपके रहने वाले KO Fight Night उसके बाद भी maybe once again Canada जाकर भी dominate करना. So I would just say all the best for all those things and yeah, see you around. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to this interview for KO Fight Night. Today we're going to be having a very special guest with you. It's going to be Sarang. And first of all, I welcome you on this interview. I'm hoping it's going to be a very fun interview alongside with all those pre-camera moments that we have had right now. So it's going to be a fun one. So why don't you just start by giving a basic introduction of yourself? So my name is Sarang Agrawal. I'm from Mumbai, India. I'm currently studying in grade 12 and I love video games. I've been playing Smash competitively since late 2018. But how did the transition from being a normal player to a competitive player, how did that thing happen? I had gone to London once and I attended a mini tournament of sorts and really enjoyed it. So that's when I decided I wanted to go into the competitive Smash. You have had a lot of fans, a lot of favorites for the people. You have been a favorite for the people, but which is your own personal favorite character from the Smash universe? I really do enjoy playing a character called Ridley. So that goes back to Brawl because there was this one cutscene in story mode where Ridley absolutely dominated his enemy. Which characters do you think should be nerfed or buffed or something according to your standard? Like which character do you think actually needs some different changes in themselves? I would nerf Joker because he has this sort of comeback mechanic called Arsene, where basically his persona, which is what the game is also called, comes into play and gives you a lot of extra damage and kill power. And I would nerf that a little bit. But so talking about winning the games and winning the competitions, what are your future goals with the game? Well, I mean, I hope to become number 1 or at least stay consistent number 2 in Smash India. So how has your journey been with each and every instance of the game? So it's been great. The game came out in late 2018. 2 weeks after that, we had the Dream Hackathon. The Smash India community has been hosting tournaments in intervals at every 2 months or something. Is there a competitor that you feel is the strongest rival? Like a person that you're like, no, I want to fight him real bad, and I just want to dominate him or something. So I'd say Abirup Lionheart, number 1. I definitely want to win against him in tournament. Of course, Rohit Adapa, Botman. I want to beat him too. But what are your expectations from this tournament as the tournament progresses further? Today's matches, I realized I did a few things that were punishable. So I'm planning to improve on those next match. So where do you think you can be? Like where do you see yourself by the end of the tournament at the Airtel India Esports Tour? The ranking will be pretty much the same compared to what rankings we have right now. Because it's the same number of people participating to my knowledge. So I want to ask you, like, is there any message that you want to give to your fans, your community, your family, frenemies maybe, friends and enemies, those are actually going forward. So is there any message you have for them? Thanks for being supportive, thanks for being nice. Anytime I want to play, I just message in the group and there's always someone willing to play. Special shout out to Nitin. He founded the community along with Vishal and it's been great journey. I only joined towards the latter end, but it's been amazing.
Those are some really good words of kindness. I would say, and I would just say all the best for all the future endeavors that you have lined up for yourself, not just in the Indian circuit, the dominating circuits out there. So yeah, I would just say thank you for being a part of it. Thank you for giving up your precious time to this interview, and probably I'll see you around on the other side, dominating the areas. What is up, guys? Welcome back to Nodwin Gaming's KO Fight Night Season 5, powered by Airtel India Esports Tour and Nodwin Gaming. So, Vishal, I mean, we just got out of probably one of the most electric sets that we've seen probably this entire year. I mean, that was some insanely good Bowser gameplay from Lionheart, and That's a SG's for sure. Palutena, SG's Palutena is a tried and tested classic as well. Moving on to this set, though, Vishal, can you tell us what the players for this set are? Quaylectra. Okay, yeah. And our to very hype about own that. classic favorite, Botman. We heard India's #1 player call him his rival. And that just goes to show, how powerful Botman is, how much of a dominance even he has in the scene. Quaylectra and Botman, two players that have played each other once again quite a bit, in friendlies, and you can see how much they know about each other's playstyles when they play a set in tournament as well. They go for these options. Their mind games are on a different level, honestly, because you can see how much they played each other, and that experience shows in their tournament sets as well. Honestly, Botman and Quaylectra going against each other, like you said, they know each other's matchups pretty well. But Quaylectra playing the amount of characters he actually plays and is actually good at, Botman can still adapt. Botman still knows those matchups, and that's how much they played, together offline. Exactly. They've practiced with each other, basically. Yep. You can think of it like that. Yeah, and Botman is also one of those players who played a variety of characters in tournament. Botman has been switching mains since the start. We've seen his Pokemon trainer, we've seen his Crom, we've seen his Joker, we've seen his Inkling, and there are so many other characters that he's played in tournament as well. And I mean, it just goes to show that how good he is at Smash Ultimate in general compared to just playing a specific character. And I think that's one of the coolest things about both these players is just how good they are at the game overall, and how they aren't restricted to one particular character to be able to be viable to win tournaments. Yeah, so thinking back on it, right? Like his first ultimate tournament at DreamHack, which was also KO Fight Night, it was a downer for him because he got 13th place, right? Yeah. But then every single tournament after that, it's been what, second, third, second, maybe, I don't know. But A couple of first places as well. So those honestly. online tournaments, right? He's had consistency. He knows how to break even. Okay, like that's the reason Lionheart calls him his rival. Like he just topples over. We've seen insane comebacks from Botman in losers brackets and coming back and Joker doing a bracket Link. resets as well. Interesting matchup. I did not expect Quaylectra to play Link today. Botman with his classic Dante Joker. This has been one of Botman's best characters according to me in tournament. Joker, a fast character, hits hard, and that Arsene, as soon as he gets it, hits like an absolute truck. His fundamentals are so strong. Look at see Botman's that. movement. Look at Botman's movement. It's the best movement that I've seen probably this entire time that I've seen during this tournament as well. Look at him. Yeah, He's that's for sure. Like if you wanted to compare Lionheart and his that movement. backhead. Okay, so if you wanted to compare Lionheart and Botman's movement, right? Like Botman is a pretty fundamental player, but Lionheart Beautiful looks like. backhead. Hold on. We Is gotta that talk gonna about do this it? set real quick. And that's it. Botman only at 18%. Quaylectra's first stock has absolutely vanished. He didn't even need Arsene's help for that stock. Absolutely crazy coming off of Botman right now. Quaylectra makes it back to ledge. Lucky. Nice. Really lucky, Again, actually. good back air once again. Nice side B. Botman just using his character. I mean, we've been talking about Arsene and how powerful Arsene is. And Botman right now, he doesn't even need Arsene. He's been comboing him flat in and out with Joker. Just the normal Joker. Oh, okay. Ooh, okay.
Yeah, Botman recovers the stage. Okay. Oh, Arsene and is the out. Arsene is out. Oh my Yeah. god. Okay, this is gonna hit harder because he basically took a stock off Dud's Arsene, and his Arsene just charged up. Yep. And Botman, look at that. Look at the amount of damage and knockback Arsene moves do compared to, normal Joker's moves. And that is going to be so risky for Quaylectra. Alright, the Arsene gone, Quaylectra safe. Hasn't lost another stock yet, but Botman still on his first stock. And Quaylectra in a very risky situation right now. Oh! What? What? That was a dash attack. He used every tool in his arsenal. He stuffed Link's up B with the bomb that he got from Quaylectra, and he baited out the next up B immediately and punished it with a dash attack to get the stock. And the charge up to Arsene! Oh my god! Okay, yeah. Botman is absolutely on fire right now. He is not looking like he can be challenged. Good up B from Quaylectra, finally getting that first stock. Does get rid of Arsene because he's lost that stock right now, but Quaylectra in a bad situation right now. Starting to heat up though, getting some good forward airs and up tilts with his Link right now. Wow, what a nice grab! Oh, he goes for the hard read for the up smash right there. Botman though, punishing him with the up air, tries to get the up B combo, doesn't get it completely. Catches the bomb, but once again, Quaylectra not having any success with these bombs right now. Arsene is out once again. This is a very bad situation for Quaylectra because 2 good hits and he's done and dusted right now. Nice forward smash though from Quaylectra. Beautiful bomb! And he's brought it right back. That bomb actually got him! That bomb actually got him! Quaylectra's brought it right back, and Botman, all of a sudden, he was in such a commanding lead, and now it doesn't look like he's that far ahead anymore because Link, also one of the hard-hitting characters in Joker, not known for a great recovery without Arsene usually, and the fact that he doesn't have his Arsene charged up right now is even more momentum for Quaylectra. Quaylectra trying to get something started though, still hasn't touched Botman this time. Oh, commentator's curse. It happened. It happened. Botman is playing so clean right now. I mean, but even with all that, Quaylectra just absolutely not letting Botman take it for free. Started off in a slightly risky situation, but okay, Botman going to seal the deal right there. Cleaning it up. Joker taking that game 1. He went for that. Yeah, he did. He went for that. Quaylectra didn't have his jump, and Botman went for that combo. And I think Quaylectra took too long to use his up B because if he was closer and he could have used his up B to get back to the ledge, but it really looked hard for him to do it where he did. And good comeback from Quaylectra though. I think he can definitely ride this momentum back. That game was a very, very difficult mountain for Quaylectra to climb since he was already 2 stocks down. Botman still on his 3rd stock when Quaylectra started firing up. So, I mean, as long as he carries this momentum into the next game, I think Quaylectra can definitely make his mark on this set right now and potentially even win it. Botman's Joker, though, I mean, an absolute pleasure to see. One of the characters with some really great movement when you can use it. And he just looks so cool doing all of that movement. Yeah, so like you mentioned, he picked Link, and that's not his character at all. Like we didn't expect that pick from him, and actually get to the last stock as well. Like I honestly think he will counterpick because he does have better characters up his sleeve. That's for sure. I think so too. I mean, maybe we'll see his Ridley again. His Ridley playing absolutely fantastically against Shunitsu to make it into this grand final. Do you remember those F smash rest punish? Yeah, they were so good. And I mean, Shunitsu is such a good Jigglypuff player, but then he just dominated him. He absolutely did. And Botman does play a slightly different playstyle. Okay, so he's not switching the character. Yeah, he's not switching the character, but he's switching the skills. So maybe that's going to change something this set. Okay, I think you were right about carrying forward with the momentum as well. Like he needed the Link plays also, and if he switched characters. Botman starting really strong once again though. Still hasn't been touched. Still continuing this insane combo that he has. Okay, finally gets down there, but doesn't care. That down air went 22%, or like it's hard hitting. He tried to down B right there. He misses the counter. No charge on Arsene either. Botman so patient at the ledge. No. Oh yes, dude.
Damn, that's gotta hurt Quaylectra right now. I mean, he was looking a lot better already, but this is not. Oh, the hard Charged read. it up. He read the roll in so beautifully right there. And Just he was charged up just that forward charging smash it up. and let it loose, and a forward tilt to Dude, kill. Quaylectra just knows how to come back. Oh my god. This Quaylectra, after SDing that first stock with Botman at very low percent, has brought it right back. You know, just Link is, I think, probably one of the best combinations of a hard-hitting character with still relatively fast movement. And I think Quaylectra is being able to use that to its best potential, because he's been able to challenge Botman's movement, and he's also been able to land a significant amount of damage every time he hits Botman. Like, look at this combo right now. He got a forward air into a boomerang into a nair and brought it to basically even percent. What is he doing? What are these Off stage. combos? So, comparing, his Link to any other Link player in India, his Link is much, much crispier. Definitely, yeah. Oh, and the up B, that's gonna kill? It killed. No, he's alive. Botman DIing that is so far out. It almost looked like he died right there. Nice forward smash. Getting I that thought last for a second hit. he did die. Yeah, same. Getting that last hit before Arsene's out, Botman still going deep for that kill. Doesn't find it though. Keeping Quaylectra in the corner Even though. right Oh now. no. Oh, Quaylectra actually Reconnected. capitalizing with that up B. They're pretty Quaylectra. even. That And up B he's gonna let him connected. charge. Oh, the bomb. He connected the bomb so well. That And the boomerang as well. Oh my god, Quaylectra he's fired up now. Quaylectra showing us, that the game won was just him warming up. Did you see that take on the I platform? did. The answer. What? Crazy. What are these plays? Nice up B, back onto the ledge. Quaylectra right now. Yeah, Botman though, good ledge trapping, gets the grab. Quaylectra gonna make this back. Oh no, he goes again. deep again. Oh, Botman. Wow. That was a very scary situation for Botman right there. He got the tech though. Oh, What? and the That down air. what? The down air killing off its side. Wow. That was That's not really something. close. Yeah, But that's not that's something so that weird. Oh, bad DI for Botman. He got F smashed to the other side of the stage and still lost the stock. That was some bad DI right there. This He is probably so wasn't. even, dude. Yeah, wow. This is looking really, really close right now. Botman getting started with this insane combo though. Good pick for Quaylectra though. Like, Oh, nice Dropstone counter. sticking. Gets the Arsene with that counter again. Capitalizing off of that counter on the F smash. Okay, nice. Quaylectra still keeping it pretty close. Oh, beautiful Look at that. parry. The Botman parry has got slowed down. himself. Yeah, he- Parry caught himself. Yeah, he just capitalized on that parry. He just does it every single time. Botman's only been able to. Okay, never mind. I was gonna say he's only gotten one hit with Arsene so far. He's gotten two, keeping Quaylectra off stage right now. Nice on B, makes it back. Quaylectra What's with he these gonna do mind right games now? Is and he these gonna go deep? projectiles on Oh, point. nice dash attack. Oh, That's okay. gonna be it. I think he Quaylectra- tried to recover that with some bomb plays. I think so but too, but DIing yeah, too I far saw out. that. And, Yeah. If Quaylectra he DIing didn't fall that much, yeah. Yeah, he DI'd too far out, he got hit by that dash attack. I think he was probably expecting something else. And he Yeah. DI'd so far out that he just couldn't make it back. And he kind of was with a bomb in the blast zone itself. So, I mean, Yeah. Quaylectra going down 2-0 in this set, but that Link definitely looking a lot better than it was last game. Consistently playing really well. He And can take this with the Link if he definitely. tries a I little think bit harder. Yeah. Do you think he's going to switch to Ridley, or do you think he's going to stay Link? Honestly, Quaylectra's mind games, I don't know what to expect from him. That's true. I do not know what to expect from him. We know him for his mind games for just switching characters and That's just throwing your definitely- tempo off. Yeah, that is so true. And I think Quaylectra, he's one of those, when you switch a character, your opponent also has to adapt to the new matchup. And a lot of opponents can't do that. And Quaylectra moves between characters so fluidly because he's mastered his playstyle with each and every one of them. So it's a lot easier for Quaylectra to switch characters than it is for the opponent when Quaylectra switches characters. So let's Agreed. I just do not understand how this guy does it, because he has such good characters. His Robin is good. His Ridley is good. We saw him play Byleth. Like, do you expect his Link is looking really clean right now. exactly like those boomerang plays plus that bomb?
like his project, like it's looking on point. He has some weird mix-ups that it just goes throughout the whole game, like the whole set. It's so unique to watch. Yeah, definitely. Oh, the What? Joker Ditto for game 3. Oh no! Quaylectra. Oh, Botman starting off with a taunt. Interesting. Okay. Yoshi's story Joker Ditto. This is. I don't know what to say. Like, talking about how unpredictable Quaylectra is, I don't think either of us expected this Joker pick at all. I don't think even Botman was ready for this Joker pick right now. Well, I'm still not ready for it. They're so even, and Quaylectra was Quaylectra did the first attack. Oh, he went for the charge. He's gonna get the ascent first. Quaylectra in a good position right now. Botman keeping up the pressure though, keeping him off stage, seeing if he can make this back right now. Yeah, Quaylectra, he does manage to make it back up. Gets the down tilt too. That was lightning fast from Quaylectra right there. I think Dittos against a character that you're really good at is not actually viable. Wait, what? Wow. What? Botman. Oh, I think What? they desync. I think they desync. Oh no. Oh, okay. That's unfortunate. Yeah, So we see a desync coming in from both of these players right now. So I think they will be replaying that game. I don't know replaying if that it's game, but with proper percentages most likely. Yeah, most likely that, or they might just restart since they were both at 3 stocks apiece when that entire situation happened. So, I mean, yeah. Still, talking about how Quaylectra Joker looked already, like starting off on that first stock was so clean, and he got good hits off on him, so it looked pretty amazing. Yeah, definitely. So yeah, I mean it's his Joker. We didn't expect to see a Joker that good. I mean, and Botman's Joker, definitely a well cemented character in this scene. Quaylectra's Joker, you don't hear much about it. I mean, we say that Quaylectra plays all these characters, but you never expect them to be good enough to compete with the top level character's actual main. I've actually barely seen him play Joker. Like, he's played most of the other characters, but I've barely seen him play Joker. Right. Yeah. I mean, I agree. I've seen, from the less well-known characters that Quaylectra's played, I've seen his Snake, I've seen his Byleth, I've seen some of his other swordies, I've seen his Wolf play occasionally. I've never seen his Joker come out in a tournament as such, but yeah, Quaylectra, I mean, never giving us anything predictable. I mean, we do call him master of all. Yeah, that's true. I mean, that's the thing. He's not just the jack of all trades. He's the master of all trades. Yeah. He can play every character at the top level. He has such strong fundamentals. He knows exactly what to do with each character. I think that is definitely something that's special and unique to Quaylectra because he's able to find out exactly what he's supposed to do in a particular situation, with regardless of what character it is, and it's crazy how well he's able to do that, even at the top level of Smash Ultimate. I actually think that's all mind games because he only plays these characters to also figure out their weaknesses. Like if you play a character so religiously, like Quaylectra, but this is him playing all characters so religiously. Right? Yeah. it's like all mind games. Like, okay, yeah, definitely. I'm gonna play your character so that I can figure out what you're doing wrong. I mean, yeah, but the game 3 switch. Did you expect Quaylectra to switch characters game 3? No. Because, being down 2-0, you'd expect Quaylectra to, pick his main or one of the characters that he's really good at, to be able to bring it back. But seeing a Joker pick right there, I think that element of randomness that Quaylectra adds is always a pleasure to watch, regardless of where you see him play. Because it's so exciting. You never know what's going to happen with Quaylectra. It's such a spontaneous element that's involved in his playstyle. Yeah, but I mean, see that the Link looked really good. If he stuck to Link, he might have even got that game. But it looked pretty good though. Who's to say? I mean, that Joker was also looking really clean. I wouldn't be surprised if he managed to make a reverse 3-0 against Botman's Joker with a Joker himself. That would be some insanely hype stuff to see. And Quaylectra, definitely one of the players who can absolutely do that. No questions asked. Yeah, I mean, I hope there's no actual switch here, or I hope they don't redo the rules. I hope they actually go back down to the same percentages that they were, because that is the fair go-to.
Yeah, I think I would be interested to see that as well because Botman definitely did a lot of damage that first stock before Quaylectra Yeah. even got a hit on him. But who's to say with it's kind of hard to get the exact same percentages in Smash. You have to get the percentages up to a decimal point, and that could be a little difficult. But I mean, going around the same percentages could still be a viable option. But I mean, if the players have a gentleman's agreement, they might just replay that entire game as well. So But yeah, let's these just guys see. do go for that usually. We have a really, really humble community. Yeah, Yeah, 100%. And I think even these players know that all of us just want to see as much ultimate as we possibly true, can, and they true. they are the players that don't hesitate to absolutely deliver on what the community wants. So I mean, I'm very excited to see how this set goes. Yeah. 2-0, I mean, we have seen some comebacks, and Quaylectra does have, dude. Why he's a unique player. Like we've all been saying, he. I don't think there's any other player like him. Obviously, 100%. I right? absolutely agree. Uh, and he just came out of nowhere. This kid just coming and thrashing everybody at all these tournaments that you see, and this kid is so nice. He's He's really nice. so nice. You see Uh, Quaylectra, I mean, Quaylectra in game and Quaylectra outside are two completely different people. Quaylectra outside is I a think it nice dude. balances out. It balances out. It does balance out. You're right. I Yeah. mean, Quaylectra outside is like a really nice guy, Oh my God. wholesome, talks a lot. He's really funny, always on point with his jokes and stuff. And Quaylectra in game, absolute BM, taunts after every Beast. kill. He will Beast. style on you, he will flex on you, and he will do whatever he can to make you look like you're just an absolute noob who's coming to this game for the first time. Can't But believe you said that. it's so clear to see. I mean, I've So been a true. victim of the Quaylectra treatment, honestly. At ILG, I had to play Quaylectra, and he absolutely styled on me with his snake. He taunted after every kill. He did some of probably the craziest combos that I've seen ever happen in Ultimate with a snake. And it was a good show for everyone to watch, which was the best part about the way Quaylectra played. It's exciting, not just for the people who are playing, but also for the people who are watching. And I think that about Smash as a spectator sport, those hype moments are what keep the game alive to me. Okay, that's the thing though. Like this guy is like so nice. He just wants to play. That's it. That's all he wants to do. He plays you in a tournament set, and then he goes back to friendly and he's like, hey, you want to play? I really want to play with you against you. Like, okay. Okay, going back. Okay, gentleman's agreement. They're starting from the game completely fresh. Quaylectra looking This is a lot nice. better already. Botman got that really clean combo the previous game, but is not looking that okay for Botman right now. Quaylectra also getting a couple of hits in. Okay, Botman starting to find his footing once again. Quaylectra though. Damn. Okay, so this is looking really even right now. Botman with a slight lead, but Quaylectra does have the Arsene, which can easily tilt the game right back. And I mean, you can see how both these players are playing right now. Like Quaylectra's Arsene just piling on the ground. Botman's Arsene now though. Yeah, I've actually been noticing this a lot with Quaylectra. He actually tries to stay away from. Oh, the counter! He actually tries to stay away from Botman as much as he can when Botman has his Arsene out. Yeah, I mean that is the strategy, Arsene. But he still goes in for the hits as well. Like that's Definitely, the thing. yeah. His neutral is so on point with that. He plays the clean whip punish game with Botman's Arsene out because Arsene is one of those characters who will punish you so hard for approaching mindlessly because he has so much damage and knockback paired with such great speed. And I think whip punishing is definitely one of the better strategies to play against Arsene because although there is a mechanic in this game where if you consistently do damage to the player, the Arsene meter kind of does wear off. Oh no, I think we have another technical issue. I'm not sure if the players are still playing though. So it just, going back to what I said. So there is a mechanic in Smash Ultimate where the more damage you have on you when your Arsene is out, the faster your Arsene's meter depletes. So if you're consistently getting hit when your Arsene is out, your meter will be gone before you know it.
The problem with that mechanic is that a lot of players try to run in and try to get as much damage as they can because they want to get rid of that Arsene as quickly as possible. But Arsene is such a fast character, and paired with the insane amount of damage that he can put out, it's usually a very bad idea to do that. So Yeah. Quaylectra, keeping that in mind and playing accordingly, I think that's also one of the things that separates Quaylectra from the rest of the crowd as a top player in this community. Yeah, I totally agree with that though. Like you see his unique styles. It's just I hope they're actually playing the game right now and it didn't get disconnected, because that would be a really skimpy technical issue for us also, True. because I really want to watch what was going on. Yeah, that Joker versus Joker looked really hype. Really nice. Yeah. It looks like a really top level gameplay. I can't believe Quaylectra was actually kind of even that game. He was, and Like- we were here, like we were all being a little skeptical about Quaylectra's Joker, but he brought it back. He was like, you know what, you guys don't know anything about how I play, and I am good with every character for a reason. I'm an everything main for a reason. It's not because I just play all the characters. It's because I am an absolute beast with all of the It's not because I characters play that all the characters. I am all the characters. I Ooh, am all the characters. yeah. But All of yeah, yours, I mean, yeah, that's me. that's me. You're not playing according to you. You're playing according to me. And I think Quaylectra has, with everything that we say about him, Quaylectra does think a lot about this game. He's a very analytical player. He knows exactly what kind of situations to put the opponents in to bait out the move that he wants, and exactly how to punish it when that bait works. So that's definitely, one of the things that Quaylectra has been excellent at since the start of his journey in this community, and I don't think anyone here will doubt that right now. For sure, dude. Like this is a Quaylectra moment right now, because we're basically not talking about Botman here. Oh Like we my- know how I mean, good Botman look, is, right? So that's why Botman's we don't need Joker- to say it. Botman's Joker does all the talking that it has to do. You remember That's the so first two true. games and how clean he looked. The movement with that Joker, beautiful. I mean, moving fluidly. It didn't look like it was Ultimate. It looked like it was LA. I'm Dude, gonna he say has it. such It good looked like- fundamentals. It was like, so fluid. Ugh, Like looking it- at Botman move across the stage, using the platforms, using all these like complicated small micro techniques. micro spacing, dude. That micro spacing after every aerial, you see it. You see the Definitely. drift when he lands after an aerial. Also, it's so fast, right? It's so fast and fluid. Like, Yeah, definitely. Like Botman versus Quaylectra is one of those sets where I'm permanently smiling. Whoa! Damn. Okay, I think they went- Quaylectra already taking the first stop. yeah, I think they went back to game. I think they got disconnected. Yeah, I So- think so too. Okay, but Botman in a pretty good position right now. He doesn't manage to get that back in there. Quaylectra is in a much better position than you could think. It's like Because- Quaylectra seems to be doing better every match. Oh, the Ooh. Okay, yeah. See, he's really good with that. He knows when to go in with those. I've seen him do that so much. Like we've been talking about how fluid his movement is. He gets that exactly where he needs. Oh, look at that. He just waits Ooh, for he the just It's a oh back my air. god. Wow. Is he gonna get Another it? one, He gets it another again? one. I think it. Ooh, that Oh no, he gets it then, but Okay, it's okay. over. It's over. Yep. Quaylectra, wow, he manages to get the Arsene out, but to no was avail. such a He's quick so far second away. He was so far behind the stage that even with Arsene's recovery, he couldn't make it back. Beautiful air dodge by Botman right there. Wow, this is so fast paced right now. Botman connecting all of these side Bs right now. Oh, Quaylectra Except just that going one. for the forward smash. Quaylectra panicking right now. He's just been going for forward He has smashes. his so Arsene the out. Arsene is out. If Quaylectra plays this smartly, he can easily bring this right back with Arsene. But Botman right now yeah. looking really commanding. He's looking like he's in control of this game. Nice side B. What a counter from Botman. His Arsene is Okay. out too. This is looking like a Ooh, very that good counter. Quaylectra. Okay. Quaylectra, see, That gonna be Botman it? is so Oh. good at the ledge. Like you have The to down give air. him Oh, that. he tries to go for the down air into the up air. Doesn't get it quite right. Beautiful Very parry from Quaylectra. good. Damn, but no punish. He tries to go for the up smash, it looked like, but it didn't connect. Botman's Arsene, and that's it! Oh, that's it. Oh my god, that was so quick. That was such a dominant game from Botman, making, when we saw that game start, he was already a stock down.
Quaylectra looked looking like, so strong, right? yeah, Like that and first stock. What even it was happened? crazy. Yeah, nobody knows what happened. But Quaylectra, I mean, he definitely did a lot of work to get Botman stock before Botman could get his. But Botman just absolutely coming through with that second stock of his, not hesitating. That Quaylectra's second stock disappeared before either of us could say anything. We were just It talking vanished. for a few It was seconds, yeah. and it went from Botman took a stock, and then they both traded some moves, and then Oh at wait, 50%, Botman's just like, yep, forward air, forward air, forward air, boom, you're done. stock is it's gone. It's vanished. I mean, he was at 3 stocks, and then all of a sudden he was at 1 stock. Quaylectra, I mean, definitely really well played from Quaylectra, though. I mean, all props to Quaylectra because he has had Definitely. such a strong showing this tournament, going out at But- out at 4th place and Yeah. taking that 10,000 rupees prize pool. Now we're going to throw it to Dan, who's going to be giving Yeah, us my some. boy. Dan's going to be giving us some And- high-level analysis of the set that we just saw. Oh my God, guys, I've been watching this game on the stream and it has been some amazing, amazing gameplay from both players. Surprisingly, Quaylectra going for that Joker pick and it didn't really work out for him in the end. And it just goes to show you how much time Botman has spent becoming a character specialist with this particular character, knowing the ins and outs. Now, Quaylectra, as good a player as he was on point with some of his movement options, with some of his neutral attacks and aerials, but unfortunately, Botman capitalizing on his Arsene use, capitalizing on his back airs, getting him off stage, predicting his recovery really well. And that is something only a character specialist can do. If you're playing against someone like that, he knows each and every option that he can take to recover. And Botman just exploiting it in the last stock, as you could see there. He just did not let him come back to the stage. I wouldn't say just So- the last stock. I would say the last 2 stocks, or maybe all 3 of them, because he was up that once. He was up a stock, right? He was at a pretty high percent, but he was up a stock, and Botman already had lost his first stock. But then he just ran through it like a boss. I agree completely. He was completely dominating that choice from Quaylectra, and I think he could have gone for a more stronger pick, and maybe he should have, but didn't work out for him, unfortunately. So, yeah, we'll see if he can maybe improve his Joker next time. All right, so let's go back to the desk and see what the other people have for us now. Okay, so there seems to be they do want us to talk about this match a little bit more just because of how I crazy think it they love was. us too much, and they love these players too much. They love they these have players to. so much. The hype is unreal. The hype that this set had. I mean, Quaylectra did go down 3-0, but there were some fantastic moments from Quaylectra coming in that entire set. The way his Link played as well. At the start it looked a little rough, but towards the end of that first game, his Link was looking really, really strong. And then the second game also. The second game also, you have to talk about that. Like his Link just came back. He went in. Right, and his Link came back really, really well. All right, so now let's go back to the desk and see what they have waiting for us. Thank you so very much, casters. Indeed, what a game to cast as well as witness, dude. I mean, there were a few network issues in there that probably was a little disappointing for the players, but eventually, though, the way it played out, it was looking pretty strong from both lads. Yeah, it was pretty strong performance, but exactly as the players predicted, analyst and the casters even talked about it as well. Botman just running through his opponent and just making his way into that lower bracket final. So, time to have a look at the matchup, how it went. It was a close fight being put up by Quaylectra, but Botman just getting to those victories first before him, and a clean sweep as well, 3-0. Absolutely. Once again, it is a 3-0 scorecard that we're looking at, and that does imply one thing for sure. Yeah, it's going to be a tough fight. Well, Lionheart is going to be happy. Yeah. He's going to be really happy that he's finally got the competition he's been waiting for. Not yet, though. Botman is still going to have to play SG before he moves up. Oh, yes, of course, because I forgot. You're not talking, or well, rather, we are talking about that lower bracket, loser bracket, rather. Yes. And, GG's indeed. Of course, we're going to be looking at the lad going against SG, and SG once again.
Oof, not an easy man to beat. Yeah, and not an easy man to beat, but same can be said for Botman, right? I True. mean, the sort of performance he had. I remember I was watching the last qualifier that he had, and that was a great comeback from him as well. This time, against Quaylectra, clean sweep, Lionheart coming in with the same momentum. So SG is definitely going to have his work cut out for him. Let's see how the matchup goes. Absolutely, that's going to be a tough one, but indeed, I'm sure that when it comes to both the lads, they are pretty determined, and only thing separating them is going to be that one match, that one make it, break it, all sort of a situation, where indeed, this time around, I would not want to see a mirror matchup, though. I'll definitely like mirror Yeah? matchups, but let's see how things go, right? Alright, well, we'll go on a short little break, after which, of course, we'll tune in once again with all the matches that are still pending. So stick around, we'll go on a very short break, be right back.
Hello and welcome back once again to KO Fight Night. This is the arena that people have been busy with since the past 2 months pretty much, but now we finally step into the finals where indeed when it comes to the competition and the grind, it is coming to an end. But not so easy though, not so easy, because still now we've seen a couple of matches and every single one has been a phenomenal, sensational, witnessing match that you do not want to miss. But with that, of course, let's continue on the conversation. Joining me on the earliest desk, it is none other than Super Johnny once again to talk more about the lower bracket. Yeah, lower bracket, a high pressure, high intensity situation as always. And the players that we have lined up are also, I mean, full of excitement to watch. SG versus Botman is going to be the next matchup. Did see them in action. SG getting 3-0'd by Lionheart and Botman coming with a 3-0 of his own, just taking out his opponent. But this is what it all comes down to, right? Just one more match to go and then you move on for the finals. We do have the history in front of us as to how these players qualified. No losses to both of them. It was an amazing performance so far. It has been an amazing run by both of them. But these are going to be the last few matches that they get to play. So need to go all out, not just 100%. You have to put 120% in these. Absolutely, 125, 145%, and I mean 150% Yeah. damage if you can. That'll Yep. be like just ultimate, you know. Along with that, of course, is the question that was asked on that screen: who would win? Simple. Who would win? Right? Go onto the chat. It's right there. Type in whatever you think, and let us know as well as your friends in the chat that amongst Yeah. these two, who is that better? Who is that better suited? I would want to say not a better player, but better suited to go against the champion who is waiting in the upper bracket. That is, of course, Lionheart. Well, I mean, if they win, they do prove themselves to be the better player, right? And the victory is going to impact their status in the Airtel India Esports Store Big as time. well. So that is also going to be a thing that these guys are going to be playing for, along with the prize money for this KO Fight Night Season 5. And it is going to be it is going to be high octane action when these two guys go up against each other. But need to be a little bit careful though. Can't mess up a single moment, especially if you're going up against, I mean, if you are Botman going up against SG, or if you are SG going up against Botman. Need to be on your toes constantly. Constantly, so very true, because again, I mean, we've seen that gameplay coming in from Botman right now, and the dude is sensational when it comes to his play with Joker. But then again, what is SG going to be choosing is another question is probably going to be, well, hopefully the network stays strong with them. Well, yes, I mean, that is definitely going to be a thing. But we do have a couple of people with us, the people that we love so much, and we love to hear them cast and them break down the game as well. So let's head right with them. It's going to be Danish joining with Vishal and Akshat. So over to you guys. What's up, guys? Welcome back to Nodwin Gaming's KO Fight Night Season 5, powered by Nodwin Gaming, Airtel India Esports Tour. Guys, we're getting into the last two sets of the day. How we you are also guys joined by feeling Dan now? pre-game. So Oh yeah, yay. welcome Dan now, guys. You know, one of the best commentators in the scene. You know, he's been working so hard through the course of the qualifiers, and you know, now he's here to drop some mad in-game advice on us. So Dan, just let's talk about SG and Botman as players. How do you think they compete against each other as players? Look, honestly, up until SG showed up, we had long considered Botman to be number 2 in the community. He was definitely, on his best day, he can definitely beat Lionheart and be number 1. But before that, he was usually coming out a little bit behind. Captain SG has Falcon. since become really good. But we've gone into the match, so I'll let you guys take over from here. Okay, Captain Falcon, Vishal, what do you think about his pick from SG? Okay, weird pick. I don't know why he wanted to pick that. I think he just wants to style on Botman right now. This is so interesting because Captain Falcon isn't known to be one of the good characters in the game exactly. as well. You know, like Yeah, as far he as just wants to peers style. go. Yeah, but he's definitely a fun character to watch regardless of what Smash game plays. And SG right now doing really well with this Captain Falcon. Nice grab Botman? back. Yeah, Botman also doesn't look like he's ready for it. You know, like he was. I remember seeing him in the last couple of days. He was grinding against a bunch of Palutena players. You know, he occasionally playing the Mario, but I don't think he expected the Captain Falcon pick from SG, and I think that's clear because he doesn't know what to do. SG is so patient at the ledge. Like he's actually capitalizing on Botman's mistakes. Like Look at that he's forward just hit. He's so far away right now.
Oh, another rack of up air. Nice Okay, DI this from is not Botman. styling at all though. Like he actually is performing so well. Like you said, Botman. I don't think Botman is ready. Look at these. He's just pummeling him. He's getting all the damage that he possibly can against Botman right now. Is Botman gonna get it though? Tries to go for the back air, doesn't get it quite. Oh, nice up air, and that's gonna kill. Okay, so did you see that off stage? Like he actually DI'd away. Like he Oh, the precisely. He's going for the Falcon punch. He went for it though. Oh my god, it didn't get Botman, but he was so ballsy with it. Already going for the Falcon punch, dude. SG doesn't waste any time. You know, you said he wasn't styling. Here he is. This man is ready to style right now. I mean, he is a good stock lead now. Like so. Yeah, he does. The jab. Just increasing the lead right now. SG just playing so well with a character like Captain Falcon. Wow, I mean, oh, nice shield to shield situation once again. Both of them not getting anything specific major out of it. Oh, nice. Good nair from Botman. SG doing really well at the And ledge. back air, cleaning it Oh, right there. okay. Yeah. Still has Still some though. Arsene left. Still though. Still has some Arsene left in him, bro. It looks like Botman is adapting. Oh, Okay, he adapted. Spike. Oh no. What was that song? What did we just see? God. What did we just see? SG was looking so comfortable in the lead. Botman just grabs him, throws him off stage, downers him with Arsene and deletes his stock completely. It's that stock was so ruthless. It was insane. A Botman wasted no time at all. It was like one stock, gone 3 seconds later, 2 stocks gone. This Very guy. nice. Trying to go for it again. Oh. Good night. Oh, Botman he went is going all so out. Deep. He went all out. So deep. Botman, no fear right now. Absolutely going as deep as he possibly can. I mean, that's the only thing you can do. Like, if you're at that high of a percent and, you know, the opponent has one stock left, and if you're Joker with Arsene almost coming out, you'd rather go off ledge to try and, you know, get that last stock as well. Yeah, definitely. And like again, like, you know, SG started this game so clean, but Botman seems to have reversed the tide already. You know, one stock ahead, he's at very high percent, but so is SG. So Botman is definitely in a comfortable lead right now against SG. Oh, gets the grab again. SG has been going for a lot of these grabs. Yeah, like grab, pummel, forward throw. But he doesn't get anything after that. So nice after this, he goes for the up air again. Good DI from Botman to avoid it that time. That up air, that short hop up air by Oh, Botman the down also. tilt. Oh, he almost gets the up air. Ooh, Be okay, it. okay, now he got the up air. Oh, he footstooled him. Botman footstooled him. Oh, nice Okay. parry. Goes for the knee. Doesn't get it quite. Oh, that back throw. throw. Oh my Bad god. DI. Bad DI from Botman right there. Damn, this is looking really. What? Oh my god. Did you they both pass the ledge at the same time? This is madness right now. SG with a fat off. Oh my, what? Dude, What is he that? tries to go for it again. But he gets tired. Okay, what? Whoa, That whoa, down, whoa, okay. Whoa. Slow down. What just happened in that last stop? SG started coming back so clean right there. I mean, did you see that combo? He got the grab forward throw, jab, then he went for the up air. He got the down air. He got the down air the first time, but it sent Botman really far away to the side. And then he tries to get him with how did that another happen down air. though? That's the thing. Like, I if don't he know. got that down air, it should have just, you know, straight out destroyed Botman that stock. But, But how the hell did that happen? And then he missed the down air, and Botman with that perfect ledge hop down air to punish SG's recovery. But did you see that though? Botman so on point with not having Arsene off stage, and then he got that down air, and then he got Arsene so that he could Yeah. actually recover that far. If he didn't have that Arsene, Botman was out. Yeah, definitely. But dude, that was so insane. I mean, could you have imagined an ending like that? You know, SG's so far ahead, and then Botman all of a sudden bringing it right back, and then Botman in a comfortable lead, and then SG almost bringing it right back, and then it comes down to that one last missed down air from Falcon, and the ledge hop down air from Botman that ended up giving him that game. Vishal, I mean, I don't Honestly, have to say anything. I'm gonna say like a thank you for giving us these games because it's just so good to look at. Dude.
It's and it's this is one of the sets that has started off so explosively. Like we saw Lionheart versus SG, and Lionheart easily taking that first game and three stocking in game two. We saw there are literally Quaylectra Botman. stocks that we don't even know what's happening. We saw Quaylectra Botman, where Botman was absolutely taking it up against Quaylectra's Link. But this is the first set that we've seen whose game one has been so close today. SG And is so it's strong. SG, like that Falcon. What? How did nobody that expected Falcon that. Bay come out? That was a Like, Quaylectra why did moment from SG right there. maybe he had just had it up his sleeve, Yeah, maybe he did. SG's Falcon definitely putting on a great show that game. But I mean, I would be kind of surprised if he stuck to his Falcon, because I am pretty sure that Botman would have adapted to his Falcon by Yeah, the end of this that's for game. sure. You know, Yeah, you could clearly see you Botman. could see it. Yeah, you could see that he was finally adjusting himself to the matchup, and he kind of understood exactly what he was supposed to do against Falcon. So, I mean, let's see if he does stay Falcon. Oh no, he does switch to Palutena. This is the classic matchup that we all came in here expecting, and now we have it. SG going to Town and City, which is an interesting counter pick. Does have slightly higher blast zones off the top, so which means that it'll be a lot harder to kill the Joker off the top. Yeah, this is Palutena stage. Definitely, I think Palutena does really well on this stage. Than Joker, yeah. Yeah, definitely. Like, I mean, even in general as a character, I think Palutena just does really well on this stage with most matchups. Wow, that nice spacing from SG. Great going grab. for that grab. Yeah. Great back throw. Okay, so now all the platforms are gone. We basically have an FD-like stage. Ooh, another nice grab. Arsene still out though. Botman can definitely do a lot of damage with this Arsene if he's given enough room. Oh, nice. Good job avoiding that explosive flame. Arsene's gonna run out really quickly. Oh, okay. He tries to get that last side B, but doesn't manage to get it. Dang. Oh, nice shield on Botman. Punishing the forward smash with another forward smash. Oh no. Oh, Yeah, no. I Do think we we're have gonna another? see another technical issue here. Yeah. These players are so good that they've been breaking this game the whole time. The grand finales are breaking the entire. The breaking ultimate. Oh my god. Although, I mean, now that we're back into the more conventional territory of Botman versus SG, some statistics for you. Botman and SG have gone up against each other in many, community hosted online tournament finals. And their matches have usually been really close. And it's even in terms of how many wins they have, it's more or less the same, because Yeah. I can't think of a tournament where SG won undoubtedly, indomitably against Botman. And If SG played, there's definitely that chance that he could win. And I think he 100%. has won like a few, like Quite a one or few, two I mean. online tournaments, right? He's won probably around the same number of tournaments online as Botman has, and that just goes to show how confident these two players are, and how evenly matched up they are against each other. That Captain Falcon even coming out from SG, looking so clean. But I think we're going to be jumping back into the action. There seems to be a connection error, Oh, especially with the gentlemen's error. players. Yeah. They're gonna Okay. take. Oh, okay, no, they're not. Yeah, yeah. we're gonna see a proper fair game with Google percentages from last game. Let's see. I mean, SG was at pretty decent percent, right? Like, I think he was in a pretty bad spot there. But the problem is that you can't replicate the situation again perfectly, because Botman has that Arsene meter just slowly building up right there. But they're going to try to keep it. They're going to try to keep it as even as possible. Botman, look at that. He's so aware. Most other players would have been hit by Palutena. Oh no! The unfortunate air dodge from SG. Most characters would have been hit by Palutena projectiles, but Botman's so smart and so quick to react. He jumps above the projectiles, gets hit by the explosive flame that time though. He did a Nice really grab nice from job of placing that also. Like, he went for that jab Yeah, and Arsene then he coming out. actually placed Oh, explosive. down throw, back air. How much is he gonna get off of this Arsene right now? Nice grab. SG looking so Wow! clean. Oh, he's trying to What? snipe him. He's trying to snipe him with all the projectiles that he has.
Nice. Again, gets the down throw. Nothing off of it. Good DI from SG to avoid the follow-up right there. Oh. Botman going so deep for that. He went all in. He didn't give a damn about the platform at all. Yeah, He's he just didn't like, care yeah, really she's well. taken away by the platform. Hey, let me just try to, take him off stage. Wow, Botman looking really good right now. SG though, once again, showing us just how close he can bring it. SG with a slight percentage lead, but that means nothing right now. Like, look at that, one hit and the lead is gone. They're dead even. They're absolutely They are so completely even. evenly matched. And both these characters have such good kill confirms. Definitely, And, yeah. like, for a fact that these That's gonna be both it, these I think. players. Oh, No, great that's not DI gonna from do it. Botman. That DI was so perfect. Again. Yeah, Botman playing really. Oh, tries to get Oh that. no. Okay, so yeah, dropped he too went low. for that charge. He should have gone Dropped for too low for something the else for up B. sure. I think he dropped too low for the up B, trying Yeah. to do the down B and ended up missing. But it's really, really close because Botman can get one good smash attack for a good kill confirm to take SG stock right now. Forward throw. What's he gonna do from that? Oh, he gets the up B, makes it back. Oh, SG finds his way back to center stage really quickly. Nice side B from Botman, trying to get some extra overtime damage, with the poisoning from his side B. Nice players from SG right now. Oh, Botman getting that shield up really quickly right now. Good forward tilt. SG does he this gets the ascent. SG does this really nice thing where he, stays, goes in. Oh, no. He gets a few areas. Oh, what? I think he dropped too low and he fast fell and he couldn't even make it back with Arsene's up B. That's just, I think he jumped off stage to get something and then he ended up fast falling it without the move coming out. And That's actually something we have to talk about. dude, Like, he lost that first stock. Like went in. They were even. And what just happened? I don't know. I think there was definitely some ultimate buffer happening right there because I have a feeling Botman wanted to jump up and up air or do something like that with Arsene and then fast fall it, but he didn't get the move at all and only the fast fall came out, so he wasn't really sure what to do and he just kind of dropped far too low. But he ST'd twice. Like, it looks like serious mind games. Like, both these players are like, I think Botman's actually feeling nervous. I think so. I mean, there's a lot on the line this tournament, not just in terms of how much the prize money is, but even the title of being, the KO Fight Night champion. And getting the award, it from definitely Airtel means India. something. It definitely does mean something, and I think that's kind of why a lot of players are a little nervous. But Botman, he's known for being able to adapt, and he's known for being able to calm his nerves pretty quickly. So let's just see how it turns out in this game 3. I mean, SG's Palutena, definitely looking a lot better than his Falcon did because he was able to consistently compete against Botman the entire time, and it wasn't like game 1 where his Falcon was able to do something for the first stock and a half and then absolutely got deleted right after that. Yeah, So exactly. I mean, we just have to watch the next game. Oh, okay, yeah, we're Pokemon. Wow, Botman going for the switch. Pokemon trainer. They're switching characters and they're switching stages. This is just such a dynamic set right now. We're getting to see the best from both these players. Botman's Pokemon trainer, one of his first tournament characters, a really, really strong pick. He played it during the playoffs as well, I think, and he was looking really clean with it. These nairs. These nair strings. Oh my god, he went for that explosive flame. Wow, It he connected so well. managed to get the Ivysaur out in time because that was a really risky situation. Squirtle is a very, very light character and he's really easy to kill. So getting that Ivysaur there was very important. And the up B, he's gonna kill with that. Wow, Botman, really impressive stuff from coming up with that Ivysaur right there. I think this counter pick is what's actually give Botman the win. Because Yeah, I mean, Botman's so game good at adapting, like you said, right? Like, an SG needs time when he sees the counter picks, and I think he does have a better matchup against Joker than Botman's Pokemon trainer for sure. Right, yeah, I mean, you can see that because Botman can switch between 3 characters and Ashi has to adapt to that entire mind game of, what character is he going to play now? Is he going to switch right now? What am I supposed to punish with? So definitely adding a lot more variables for SG to deal with right now. But Botman, one of
the best Pokemon trainer players, in India, if not the best Pokemon trainer player in India. I would consider him the best because Lionheart is really good at playing heavies, right? Even though he Yeah. does have Pokemon Trainer as one of his. Oh, nice. Ooh! Clean back What? air right there. That was so clean. SG. Wow, Botman though not letting up with the Squirtle pressure right now. So the way Botman usually plays is he combos the characters up to around mid%, close to 60, 70 using his Squirtle because it's such a fast character with great comboing potential. And then he switches to Ivysaur and tries to get that kill. But if Botman manages to get to a high enough percent where threatened, or he's at a risk of losing the stock, that's when he switches to Charizard. So Botman has a very interesting way of playing with his characters as well. It's not just based solely on the way he's playing, but also on the way his opponent is playing. Like it is actually, he adapts. Like we've been talking about. Exactly. Like Yeah. He's the adapter of the scene. Like he knows how to adapt. So whenever he plays a different character, he'd see to it that he's at the right balance and at the fundamental point where you need to play these characters at these percentages, but also at the same time replying to your opponent. Like with certain characters, like where it wouldn't matter, that where the fundamentals wouldn't matter. So it's kind of like a balance of him sticking to what he. Ooh, okay. Going back into the gameplay commentary for a second, SG looking like he was about to die right there because he went so far away from that forward throw. But Botman actually at a higher percent. We've been talking a lot about his PT, but we haven't noticed that he's at a really, really high percent right now. Like that's why he's sticking to the Charizard, right? Yeah, even with Charizard, he is not guaranteed survival if he gets back thrown right now. So he has to play This is a pretty small really, stage. really carefully. That's true. I mean, Yoshi's story definitely not the biggest stage that we have in Smash Ultimate, but Botman, he's trying to get something with the Charizard. Oh, Nice. I got something with it. What? He's still alive. Wow, I thought SG died right there. I thought he got Star KO'd, but apparently not. SG put a stellar DI right there. Oh my god. Does that look like the DI from Botman against What was Quaylectra? What was that? I don't even know what that was. That was so fast and it knocked SG so far away. These guys are playing at The the... Oh, explosive okay, that flame. explosive Finally flame. getting that stock right there. Botman coming up with his portal. I don't know how he's going to get this kill right now, but he has to find it and he has to find it really quickly. Okay. Trying to get some nice. I mean, we saw how quickly he can find, and eliminate stocks. Oh, he but- tries to go for it. Ooh, okay, he didn't go for it. These players are playing so good right now. Sometimes I don't even know what they're doing. And it's just like, okay, that attack connected. Like, how did that even happen? He DI'd so well. Like, how did that even happen? I SG thought looking they were dead. really strong. He was running away with this game. But Botman that was such an aggressive back air because most Charizards in that situation, they're like, you know what, I think I have to recover, I have to get stage first, I have to grab the ledge and then I'll do something. Botman, kind of doing two things together. He's thinking about how should I recover, but at the same time, what kind of mix-up should I be doing to get the best possible outcome of this situation, and that gets him that back end. But the beautiful explosive flame from SG. Again, I knew it! He fled through it, but SG with a beautiful back air out of shield. And that's going to be it. I mean, SG taking that game, going up 2-1 in the He's set. up a game! Is this gonna be a 5 situation? I think so, dude. I mean, honestly, with these two players, it's going to be very hard to not have a game 5 situation because they're usually so evenly matched that they end up winning once against each other at a basically even rate. Like if you think about it, Botman won game 1, SG took game 2, and SG took game 3. But Botman is, just in good enough of a position to take game 4 as well. And the Pokemon trainer, it does take some time getting used to switching characters like that, but Botman definitely one of the better players at it. Looked like he was warming up towards the end. Yeah, there. towards that last stock, right? That fire blitz, and I think SG did place an explosive flame there, but Botman went in with the fire blitz because he knew that explosive flame was coming. He knew that fire blitz was just go past it, but SG just
just knew that that was coming too. The mind games mean, that they were both predicting each other's options, and they did the right thing. It's just that SG was slightly ahead in the mind game compared to Botman, and he managed to get that parry back air out of shield, and that ended up getting him that game. So I was SG gonna going think up. of like that stage is pretty small, and we would know why Botman stuck with Charizard towards the end. Like he was almost above 80% when he took SG's second stock, and he stuck to that Charizard because he knew that there was no other way to go. Like he needed to play that Charizard and no other character, because any other mistake from any other character would have come really early rather than that Charizard. Yep, I mean, and like talking about the importance that this game has in the set. So SG going up 2-1 means that if Botman even manages to take this game, game 5 will be played on SG's counter pick, which means that SG will have the advantage going into game 5 of this set, which is That's true. why usually game 3 is a pretty important game in terms of the set as a whole. In the long run, it does contribute to counter picks, and it also means that Botman does have to win 2 games in a row, and one of them is on SG's counter pick. So the clear disadvantage coming in for Botman right there. So getting back Okay, into we're game into it. 4, what do you think is the stage pick for this game? Smash? What? That's interesting. Botman, I mean, I think he did well on Smashville, and that kind of ended up doing well as well. Oh, Yeah. okay. Seems to We see be something. small technical issues once again. These players. We Okay, are we're going back. Yeah. Okay. Yep. Wow, SG already with 65% on Botman. Wow. This is looking like I don't know, honestly. Botman right here, he can obviously take this. We've seen the clutches that he does, but SG, I mean, okay, we've seen another technical issue, but Yeah. talking about SG, that last game was just insane. Just insane. That was the last game. I mean, it was so good. SG confident with his Palutena, playing so clean, and he was playing really well towards the end. Right? Botman was kind of picking up, but the Pokemon trainer pick just didn't seem to work for him. So I think the Joker pick is the right idea here, because he did seem to do a lot better with his Joker than he did with his Pokemon trainer. So I mean, let's see how Botman approaches this matchup, because when we went back into that game, we saw that Botman was already at a pretty high percent. He'd been comboed by SG around 65%, and SG just seemed to be piling on the damage. And Joker, one of those characters that is pretty light comparatively, and can still die pretty early. Although they started again. Yeah, they might have disconnected and restarted the game. Could be. But it looks really close again. Botman with the Arsene, though, I mean, definitely can't count him out with the Arsene. Oh, nice up B. Both the players making it back. Oh, Botman grabs in the wrong direction. I think that was an accident. Although that Nice these players down this is so even. It's really But even. Botman Look at looking that. so strong at the ledge, like he's doing he's keeping he's SG kept, away. yeah, he's kept SG in the corner this whole time. So this really good ledge trapping. Wow, SG finally finding his way back to center stage, but Botman definitely makes him work a lot for it that time. Oh, he tries to go for the back air. That's the thing. Oh, okay. See that recovery was beautiful. Okay, because he didn't go for the ledge, because he knew Botman would try something at the ledge, and then he actually went for that up smash on stage because Botman was still off the ledge. Mind games, just mind games. Yeah, Botman so getting that back air. Botman's way too good at the ledge trapping. Way too good. Really good. I think it's just something really special about Botman's ledge trapping, because he makes it look like you can do something to get out of the corner, like right there, like he makes it look like you can do something, but then he traps you right back into the corner and just hits you for so much more percent. I think Botman's entire game plan is trying to keep you off the stage. That's it. Like his ledge trapping is so on point. Like it's so much better than him being on. Yeah, and it makes so much sense because Joker's offstage game is really good, especially with Arsene out. The amount of knockback that he does, and the fact that he's not hindered by a bad recovery with Arsene
or like at least as bad a recovery with Arsene, definitely means that Joker can go for a lot riskier option. What a parry, but SG is ready for it. Damn. That was so. What? Okay. He beats him and Joker's like, okay, I'm out. He like, Now whoop. SG looking really clean all of a sudden, getting that Wow, okay. complete mesh Botman string. went for that though. Like Botman knew that explosive flame was gonna be placed, so he just Okay, fast Botman a has little Arsene. and took that up B. He has Arsene though. Arsene, I can't stress this enough, but Arsene can literally change the pace of a game. He can turn the tide in the blink of an eye because of how good Arsene is, you know, as a power up to Joker. So SG has to be really careful about playing with this Arsene because if he gives Botman enough room, this Arsene can easily bring this game back. Yeah, look, SG is just taking Oh, his he's just waiting waiting. out. He's waiting out the Arsene, but not that was enough. actually bad DI. Yeah, not enough though, because that dash attack from Arsene and the bad DI from SG is going to be enough to close that stock. Botman with a good situation right now because he can definitely ride this momentum to bring this game right back. He's so clutch. SG though, SG's been playing really smart as well. Like, look at him. He's been capitalizing off of everything that Botman's given him. He's not throwing away any opportunity either. That's for sure. Like, he tries to go for the grab back there. now SG. Ooh! Dash SG down. actually looking. F smash. Interesting. Okay. Dude, this is so like the mind games on this are so insane that I don't even know what to say. Look at this. Botman looked like he was about to reach this game and brought it right back. SG slightly ahead. I mean, he's been playing so well this whole game that you really never know how this game is going to turn out. And look at it, like this is what I was talking about. They're so evenly matched that every game comes down to last stock, last hit. Oh, Arsene's out. This is a bad situation for up a SG. stock and Oh, no, I think the he just got Nez. so nervous at the high percent. Botman Ooh! inches away from that explosive flame. The insane micro spacing. Both of He tries to these go for the guys- forward smash. Botman panicking a little bit. Both of these guys have holding his such shield now. insane, Okay, like he's setups. waited. SG's waited out the Arsene, which definitely means the advantage is in his court right now. Because Joker is going to find it a lot harder to kill. Good back air from SG. Botman off stage. That he drifted away from the Nice forward explosive tilt. flame. Botman Really, doesn't like, able to yeah, I steal it can't right get hit now. for that. Oh, he doesn't go for the 2-frame. I've seen Botman not going for the 2-frame at all. He's preferring staying to the ledge trap. Oh, he gets the shield up in time though. Nice dash attack. Damn, this is so close, Vishal. Oh! That back air! Oh my god! He reads the recovery onto the stage, gets him with that back air, and closes that out. Ladies and gentlemen, we're going to a game 5. Dude, Botman, so, dude, like, did you see that? He's so smooth. My heart is racing. My He's heart. moving. Yeah, he's moving. My heart is racing. My heart is in my throat right now because that game was so close. That was closer than any other game that we've seen, and that's saying a lot. They were playing footsies to the very end, and it ended up being Botman's one read onto SG's recovery onto the stage. That got him that back end, dude. Did you see that? You know how like sometimes when you get red and that's the last stop and the screen shows up, you know, the red screen where they zoom into Botman hitting him. That's when you realize how deep these players are thinking about each other and the way they're playing. These That are, was- yeah. I'm at a loss for words myself, and I can see you are too. I'm at a loss for senses right now. I'm recovering still. Oh Mario my picked lord! another I red can't screen. believe what these We've players seen- are doing right now. We've seen one of them switch characters. At least one of them switch characters each game. You know, we started with Except Joker. Botman, the first two, I think he didn't. No, switch we the started first two. with but at least that's what I'm saying. So at least one of them has switched characters. Every Yeah, game. yeah. The counter picks Yeah. have been Okay, picked. this Mario though did not look very good against Lionheart. Got kick stock, but let's see what it can do against Botman Joker right now. SG, his Palu was definitely putting in a lot of work, but let's see. Maybe he's trying to mix up Botman a little bit, because he's seen that Botman can adapt between two games, but he does have a little bit of a hard time adapting within the game itself.
So let's see how this turns out. Botman though keeping SG in the corner. SG is reversing the situation, keeping Botman on stage. They both make it back to center. Oh, Botman Honestly, doesn't you get can the see it. last one. You can see it like Botman's gameplay. He's more adaptive. He's not actually as clutch, or he doesn't play as many mind games as SG does, because Botman is really fast and he's so fundamental, and you know he takes those hits where he has. That count. Okay. Botman. Okay, that back air, dude. What even? He gets the down. He goes for it. That was so aggressive from Botman, dropping down with that. Oh, dude! What? SG, what a guy! I think Botman kind of forgot about Arsene meter. SG dropped down and dinked him once because he knew that as soon as that Arsene was gone, Joker had no way to make it back. That was insane. See, like I was saying, SG has these mind games that he can just pick off and do things like that. He paid such close attention to that situation because in most situations when Arsene is coming at you like that, you usually try to go for try to switch yourself out and try to make it back to stage. SG kind of going in really deep and hitting Botman because he knew that he would come back. Is Mario actually looking much stronger than his Palutena? Even though his Palutena performed really well, like this Mario looking too strong. This Mario is looking really good right now. Honestly, you're right, Vishaka. But I mean, the thing is, like, yeah, that happened. His recovery, it's very linear, with Palutena. I mean, he could have got back if he did the right. True, but again, like Mario's recovery is really linear. It means that it's very difficult to have a tricky recovery with Mario. You have to use your head, or you have to use every tool available to you in order to make it back with Mario. Because if you just up B, it's generally very easy for the opponent. Because we saw in that first half when SG tried to just up B and Botman dropped down with a counter and caught. So, but yeah, you're right about that though. He does have to have better, stage plays. But wow. SG has to clean up his stock and he has to clean it up really quickly because I actually think Botman's gonna take this. Yeah, I have a feeling too, but SG, he's come back from the situation more than a few times. He pummeled him. Good back. Oh, good forward air. Wow, nice. This is exactly what I'm saying. Like SG has to take this stuff really quickly because the more he lets Botman live, the worse his chances are. Because Botman is going to be able to pile on that damage as soon as he gets it. Like you have to take it as a given that as soon as he's going to cover you, but SG gets the back throw. Botman also on his last stop, which is down to the wire. I mean, it's hard to imagine that this is still losers finals. I mean, this is a grand finals worthy set right now. The amount of hype that this set has built up, the way these players are playing against each other. Look at it up there! Oh my god, he connected 4 up airs! He went for that platform cancel as well! He goes through again, up B, and that's it! Is the what? Grand finals? Lionheart very end! And SG? Oh my god! Oh my god! We need our analysis boy in here right now. Like, Dan, get in here. He has been seeing these games. Oh yeah, our boy's here. Okay. No, okay. He's also just as surprised as we are. I mean, guys, I don't know what I'm literally going to tell you this match can be defined as a tug of war of purely mental damage throughout. From the very start, you could see Botman dunking SG on his second stock and then just cleaning house in the first game. SG replying back by using very clever exploits of kind of linear recovery of Joker, exploiting it with a little nudge in 2 separate games and causing him to SD as well really early. Oh my god, the very last play from SG, I did not believe. I can honestly tell you I did not believe until the very end. Those ladder combos into the up B.
It has got to suck to be Botman right now. I can imagine his pain for being so very close, having the advantage, and then Shrey just coming from behind and ripping it straight Botman, out of him. I don't think he expected that up B there. I think he was just trying to DI for the up airs, and Yeah, he was. that He up was. B ended up costing him because SG literally read Botman's DI and up B, and It was just I think counted he as could have curse. easily lived that. He could have easily lived that with the right DI, but Botman just wasn't ready for it. That He was how just many up wasn't. airs was that? Like we need to That was we need to 4 get a uppers. counter. That No, was 4 but he did uppers. 6 And up then, airs before that. yeah, no, he did 4 uppers before that with the platform cancel, but then I don't know what happened after that because it He was did so like 4 fast. more up airs and then upbeat. The only thing I saw was the up air, and after that the up B where Botman tried to DI off, but that was just so cool because Botman thought he would have got away, but SG just taking that second Wow. to realize that happened. All right, so now let's go back to the desk and see what they have waiting for us. Wow, dude. Now Yeah. this is a game that everybody had been waiting for. What a Yeah, play. that was a game that everyone was waiting for, and everyone was waiting to find out who was going to take the victory. And SG just putting up an amazing performance. Absolutely, dude. That was so close, though. So very close. Every single round. I mean, Lionheart, SG, Lionheart. It was just a knock and turn every single second of those games. But indeed, as you move on to the final Yeah. battle, it was SG that took Botman by I mean, surprise. it was a really close fight, as you can see in terms of the matchups that these guys put. SG just taking the series in his favor, like bringing it into his favor from game 3 onwards, wherein the score became 2-1. And after that, Botman just coming back with a victory of his own. Came down to the very last match, and it was an incredible performance, but SG is going to move up from here and face once again the man who sent him to the low bracket just now in these finals, and is going to be going up against Lionheart shortly. Absolutely. He gets to redeem himself. Yes. I mean, it is going to be a redemption story, but Botman, an amazing performance from him, and a lot of expectations were there. I mean, people were cheering for him to move on to the finals to go up against Lionheart, a match that everyone wanted to watch, but SG just ruining the plans, getting back into the action again, and we have the brackets in front of us. The grand final, ladies and gentlemen. In a few moments, you're going to witness it. Lionheart versus SG. And if SG, I mean, if he has figured out what the mistakes were in that very first matchup, he is going to be able to give this one a tough fight. Oh, he certainly will be. I mean, if that was a lower bracket match, Yeah. well, now you're talking about a grand final, dude. And in this grand final, I am 100% hoping that it will go once again till the last game. It better. It Yeah. has to. I mean, definitely, we are expecting it to go to the last game. I mean, SG this time looked totally different if you compare him or his performance to the first matchup. Looked much more comfortable, warmed up already, and I guess that was it. That was just a warm-up match against Lionheart, and now he's ready for the real action. Absolutely, that's exactly what we are. That's what we can expect as well. And because before the gameplay even began, before match number 1 even began, Yeah. we were talking about the stats, and SG. Well, he's lost no game apart from that one that we just witnessed, or rather started the day with. And now, once again, he's probably going to be redeeming himself, or Yeah. maybe not. Maybe Lionheart will be, of course, dominating. Well, we'll find out with that. We're going to go on a short little break, after which, of course, is the grand finals. Please do stick around.
Hello and welcome back once again to KO Fight Night. The arena is certainly getting heated up as we've stepped into the finals, and this is the grand finals itself for Super Smash Bros. Ultimate that we're going to be stepping right in with Lionheart going against SG. What started it all off today? Match number 1 was the same lineup, and right now, once again, we'll get busy with the same. But before we get into that, let's chat more. Why not? Yeah. Johnny, Yes. dude, we just saw Lionheart OG gameplay coming in. But this time around, SG, like you were talking about it, he's bombed up, he's prepped. Can we predict? I mean, I don't think we can predict anything, No. right? Because even in the lower bracket finals, we predicted Botman to have the upper hand. But we knew SG was going to give a tough fight. He did actually end up winning that, in fact. And once again, he's going to face the same man. That was the reason that, he suffered he did not have a good start to the day. Lionheart definitely is going to have the advantage of, having the rest that he had, since with the first game was a victory. And after that, we had the 2 matches for the lower bracket. So he's going to be rested. He watched SG play as well. SG is going to be coming in with, the pressure on his end. Being really high on his side. Absolutely will be, because after all, he has just been pushing on along, Yeah. struggling through game after game, and SG now finally has to do that once again. Exactly. The first one was a clean sweep from Lionheart, right? 3-0. Exactly. And then against Botman, it was a really close It was a fight. battle, dude. It was a Yes. battle. It was a street fight, I have to say, with both the players just like swapping at each other, smacking at each other like with full power. Let's have a look at what's on the line. Once again, the prize money. Whoever wins this fight, the last one, is going to take home 50,000 rupees and will also be called champion for KO Fight Night Season 5 for Super Smash Bros. Ooh, this is going to be good. This is going to be good. Is it going to be Gandhi who's going to take it? Yeah. Or is it going to be Lionheart? Is it going to be his awesome skills that are going to be shooting away against SG? Or is it going to be SG again, who is probably going to be dominating? I would like to think so, because he's warmed up. He just showcased some wonderful plays, and he's like really in tune right now. Really in tune. But one thing that I will again request, please, network, please, do not spoil the vibe. Do not spoil the vibe, because that is one thing. It's just horrible, mate. I mean, even if the network does spoil the vibe, we have our casters who keep the vibe alive. And Always. I guess now it's time to head with them and see what they have to say about the match and make it more exciting for us. What's up, guys? Welcome back. Oh my God, did you guys just... That last set, I'm still recovering. I'm still not sure what to The thing say. is, I don't want to recover. That was so beautiful that I don't I want don't to know. recover from I don't it. know what to say, how to feel. I don't even know what happened, dude. But all props to Botman. Excellent showing from him. I mean, he's going to go home with 15,000 rupees, which is no small number by any means. And third place in a tournament that brought out the best of the best of the best is no small achievement. And I think Definitely Botman not. is definitely... I mean, there is going to be some sadness in the back of his head, but this is by no means a small achievement that Botman has done. And I think we should thank Botman and SG for just giving us such absolutely great games, nail biters to the very end, beautiful gameplay, and it's insane. But getting into this match, we see IVE coming out of SG. So grand finals, guys. This is going to be for that sweet 50,000 rupees right now. And Lionheart is playing his classic Bowser. We see an Ike from SG. I wonder why he picked Ike this time. Has anyone seen him play Ike before? I mean, I'm sure he has an Ike, like most players, but SG Ike, I've never seen it in tournament. Oh, nice awareness by SG there. He knows that Lionheart's got to go for that up smash read. He's just trying to, I think, counter pick his Bowser, and that's it. Yeah, but I don't know if that's gonna work for SG because I feel the same way. Oh, see, yeah. That's the thing with Ike, though. Like, Lionheart does this, and Ike's done. Yeah, I mean, that recovery definitely not good for horizontal recovery. It's very vertical, entirely vertical in fact, and you get almost zero horizontal space from it. So that's definitely going to be something against SG right now. But
Oh Oh no, there seems to be another no. technical error. I think the players might still be playing, but let's just see what Yeah. happens right there. Lionheart looking really clean that entire first stock, though. Just Yeah. catches him with fire, like he catches Ike's up with the fire, pushing him ever so slightly back, not allowing him to grab the ledge, and highlighting why Ike's recovery is as historically bad as it's known to be. Yep. He, See, I think he was just going for that counter pick, like heavy counter pick, because he just destroyed his Lionheart just destroyed his Mario before. And like looking at this, I don't feel like he's gonna perform too well with the hike. I think he should just stick to his main, maybe Palu, maybe Mario, but he should just go in with those rather than picking a character that I don't think any of us have seen him play. Yeah, that's true. I mean, I think SG is trying to pick characters that are good in the matchup, Yeah, but that's not, I mean, it's not necessary that you get the most mileage with a character true. who's as good at the matchup, but rather that a character with That you're good with, that right? you're Yeah. good at. Yeah, like I mean that's usually the differentiating factor. Dan, do you have any thoughts? Well, there's something to be said about the Ike pick getting a little bit of range out of the sword, trying to maybe get a little more space away from Bowser, maybe keep the grabs away a little bit more. But then we saw the horrible recovery that he has going up, just straight up and straight down. He has a side recovery option, but Shrey is just choosing to go low so often, and we know that Lionheart's really good at his ledge options, and he was there ready, waiting for him each time. Either it was with the flame or with the down smash, down tilts, all of them. He's just waiting there for that option. I So think yeah, that's also, yeah, like I think that's partly because if he plays like, Palutena and Mario, which are characters that usually go a little lower before trying to Yeah. recover. And that does translate to Zyke because that's how he's used to playing, the game. And I think that leads to him dropping too low with Ike, but that's usually a bad thing. Like that's a bad situation for Ike to be in, where Ike would prefer to be in, that kind of a tricky position where his recovery is a little ambiguous. Okay, starting once again, SG putting on some damage onto Lionheart to bring it back to even percent. But Lionheart, the clear lead now. Lionheart with a clear lead right now. Already a stock ahead and doing so much damage to SG already. SG making it all the way back from losers, losing the first set in this top four and then coming back from losers side, beating Quaylectra, beating Botman to get this match against Lionheart once again. They just seem to be waiting. I think they're For going the to. timer. Yeah, I think it's like Yeah, a neutral 550 maybe. sort of thing. So they're just going to be waiting each Okay. other out. Yeah, I think they're just waiting each other out. Let's just see what happens now. I mean, let's just talk about SG's journey for a bit. Like he definitely did not perform his best against Lionheart that first set, but ever since he's dropped down. Yeah, I think that's the only game he lost the entire from the qualifier until now also, right? Is that the only set that he's lost? Wow, I think so, yeah. That is very impressive from SG right now. Yeah. Oh, you actually caught him with that. That'd be nice. Lionheart at pretty high percent, but SG at even higher percent. It means that SG is more likely to die right now. And Lionheart, 3 stocks to 1. This is looking really bad for SG right now. I mean, I think I would wholeheartedly assume that SG is going to just lose this jump. Oh, it gets the side B onto the platform. Wow. Looking close, catches him with the B, but not going to be enough. Bowser has a lot of fight left in him. Even in this stock, his heavy weight really contributing to a lot of... No, the lag. I think that's it. That's going to hurt for SG. Well, that actually wasn't fair. I kind of hope they go back to that last top for SG situation because of the lag. But SG was surprisingly, he was pretty low. I mean, like even before the game started lagging, SG wasn't, No, I actually feel he could have recovered that. He was I think he as could have, low yeah, as after the lag. Right? Like he went and it wasn't low even after. because he was low. I think so. Pokemon Stadium has like this small pineapple sort of ceiling, and I think SG just ended up spacing and up being into that ceiling, so he couldn't get the full height of his up B as well. So I mean, let's just see what happens now because that was a situation that we didn't expect or want to see at all. I mean, obviously sucks when that happens to you and you lose a game.
Yeah, but I mean, let's just see. SG definitely one of those players who's confident in his ability. So I mean, I wouldn't be surprised if SG just decides, you know what, it's fine. Let's go to game two because I can win it all the way back from there as well. For sure. I mean, So I am hoping for a a counter pick from SG now. Obviously, let's see. I mean, hopefully, let's hope he picks his, you know, his Palu, because his Palu seemed to be his best character against Lionheart, even in the previous set. The Mario not looking as strong, but after that Botman game, I'm sure SG feels very, very confident with his Mario. yeah. I mean, getting Honestly, those up airs into up B. Lionheart, you know, he knows. He's really patient. He just has the right tools and he uses them so appropriately. Exactly. It's just a a big thing for us to see also. True. It's you just see the uniqueness in his gameplay. You see the patience that he has. He's so good at ledge trapping. You know that Ike, even if SG went for those side recoveries and going low and up being, Lionheart would have destroyed him way earlier I than think he he would could have have. done something for sure. Like, I mean, Ike's recovery is known to be bad. It's not because he has side B and up B, but his recovery is known to be bad because it's very linear and easy to predict, regardless of what move he does. And Lionheart definitely one of those players who will exploit every weakness that he can find in his opponent, not just in terms of the character, but also in terms of the playstyle of the opponent himself. Like he does find a way into your head, and once he gets into your head, he knows exactly how to control you and how to make sure that you play exactly how you dance to his fingers. So I mean, that's going to be interesting. But the thing with grand finals now is that SG comes into grand finals with a disadvantage because he has to win 2 sets of 3 out of 5, which means that SG has to win 6 games, whereas It is pretty Lionheart exhausting. has to win only 3. So it's going to be a little bit of a difficult climb for SG, having to play these many sets back to back, because if he wins this set, then he'll have to play 3 sets back to back, and Lionheart's had time, he's had his break, he's been able to play friendlies, he's been able to like work on his momentum a little bit, and stuff like that. But SG, it's been kind of a tiring run for him. What are they doing? Oh my okay. God. Going into game 2. What? SG playing Mars. Okay, so SG seems to be providing a tribute to Fire Emblem right now. We went from... looks good though now. See, I think this is a much better matchup for SG now than his last Ike pick. Why do you think so? Because Marth is definitely a floatier character, and Ike is basically more raw. Even though he's a heavy, he's more raw. Like SG is actually getting these hits on Lionheart right now. Yeah, rather right. than Actually, his that's very true. I mean, Marth, one of the lighter characters. Most people prefer. Look at that. Look at that. Clean. What clean is even? upguard. Okay, yeah, that Going, is. Marth, one of those characters that people just play Lucina instead because, oh my god, the forward smash. We were talking about SG that whole stock, and SG did so much damage to Lionheart, but Lionheart with one good forward smash absolutely annihilates SG. Yeah, that I don't It's an even. interesting pick though. Like, I mean, I would have definitely picked Lucina again over Mars because her hitbox is a lot more evenly distributed, and you don't have to space tippers to do as much damage. Mars Yeah, for has sure. a If higher. you Marth and Lucina is the better option. Correct. But Mars definitely has the high risk, high reward. Like if you manage to space all your hits right, he's going to net you so much. Like his tippers just do absolutely the craziest amount of damage and knockback. Honestly, And that last SG stock was disappointing because SG actually went for all of those combos. He tried to get Lionheart off, but To be fair, instead he of grabbing got the all of them ledge, as well. Like Lionheart was instead at of grabbing the ledge, 150%. he just went on stage, and that lag just made Lionheart Oh, he go for catches that him with forward the smash. upper edge. He catches the tournament with the Oh, upper, okay. and Is that's that gonna gonna be do it. it? Oh no, good he DI. actually did that. Good DI from SG right there. Oh, he gets him with the What? upbeat, but it's not gonna be enough. I think the last grab box of the upbeat didn't manage to make it to the ledge itself, so he couldn't catch it. Wow. This is looking like a repeat of game 2 from that previous set. Lionheart just such high percent. Oh, Okay, that up. as I say, commentators first, but Lionheart
still a clean stock ahead of SG right now. And especially with Bowser being a heavy character, he's going to benefit a lot from this compete because SG really has to find a low percent kill right now. Lionheart though playing so cleanly right now. Honestly, SG with his aggressive play right now is trying to put Lionheart off a little bit, but Lionheart just being patient as usual. Yep, I mean, and you can see SG is getting all of these combos, but he doesn't seem to be doing that much in terms of damage because Marth, if you don't space his moves right, he ends up being a lot more underwhelming. He hits a lot lighter than most other characters do, and it's with look at it, he's already at 98%, and Lionheart can definitely take a couple more hits. Oh my god! What even happened there? He caught his upbeat with the fire, and SG was so high percent that he couldn't do anything because he was in hit stun, and he just kind of fell to his death. I want to know, is she just messing around right now? Because that's kind of what it looks like. SG damn. Is he just giving the players the hype that he wants to give them? Because he went Ike first, now he went Mars, and they are pretty bad picks against Lionheart's Bowser. I wouldn't say against a Bowser. I'd say Lionheart's Bowser. I mean, okay, Lionheart is really running away with this. I think SG is still trying to get a shot at winning, but he's just kind of trying to play characters that are fast and that can combo Bowser quickly. But playing a character like Marth does require some amount of spacing, and that spacing requires practice. If he would have picked Lucina, I think that would have been a much more understandable pick to me. Because a good range, sword character can do a lot more compared to Marth, even with not the best spacing. So definitely an interesting pick coming out of SG. I'm not sure what he's going to play game 3. I mean, what do you think, Vishal? Do you think he's going to play another Fire Emblem character / Swordy? Or... I hope not. I really hope he goes back to his Mario and shows us what he's capable of. I hope so too, but with players like SG, it's hard to say. Nobody expected that Captain Falcon to come out game 1 against Botman. That's true, and he was pretty good with that too. True. I mean, Lionheart and SG. I think this is also. I mean, talking about how many grand finals we've seen in online tournaments. Botman, SG, Lionheart, Botman, Lionheart, SG. These guys have been at the top 3 for a very, very, very long time. With the occasional mix in, of the top 5 PR. Players like Quaylectra and Roselle, etc., making it into grand finals. But these 3 players, I think, undoubtedly have been the most dominant players. And, Lionheart and Botman being dominant online and offline as well. And SG, not showing up to offline tournaments much because he didn't live in India, but online being absolute monster. He's been hitting names and beating people on the PR left, right, and center. And that just goes to show his caliber as a player. I hope he doesn't mess around with Fire Emblem characters anymore. Even that Palutena pick will be great, okay? But just pick something you play. Woo! Do you see this? Wow, SG. He's just going up the tier list at this point. Interesting pick coming out of SG with the Wolf. I mean, Wolf definitely a fast character, can do a lot against Bowser, but I haven't seen SG's Wolf come out that much either, in tournament at least. I'm sure he's played in a bunch of friendlies, but in tournament to pull out a Wolf like this, it's going to be interesting to see. Oh no! God, that was so perfect. That was so perfect from Lionheart. So read on his recovery, dude. Lionheart has paid so close attention to the way that these guys have played. Lionheart's been conditioning him with over sets, I think it almost seems like, because he seems to be getting all these reads perfectly, pitch perfectly right now. He predicted that tournament winner from the ledge. He jumped up and back-aired him perfectly, knocked him off, and got that stop. But he's still at quite some high percent right now. Lionheart actually just going for these on-stage upbeats, it's just such a good move. The upbeat out of shield with Bowser. It's been Lionheart's one of his signature moves. Paired with the side B that he does. His upbeat out of shield have been
one of his, signature moves, if you could say. I But mean, he's looking much better than before oh, because nice forward tilt from Cedo, getting that pressure. Oh, the up smash. oh, Hit that him did kill raw. him. Oh, is that maybe gonna take it? Oh, he Nice. waited. Close, but nice forward air Wait. from. He, Oh, he goes for the okay. side. Okay, yeah, Subtle he move made it by back. Sh- Oh, wow, SG okay. right there. That's a good option from. The Oh, platform. oh my God! If that platform was there, I don't think I would have killed. Could Yeah, have DI'd I that. think Lionheart, such great awareness right there, Oh, up air, up smash. On the platform again. Lionheart Um, looking like he's going to win the entire tournament, SG on his tournament stock. Lionheart literally Lionheart 2 lose hits a away single from set, taking like- that 50,000 rupees and that title of KO Fight Night champion. SG desperately trying to claw his way back, trying to find just that one opening that can give him the game. He gets one. Doesn't get much off of it. Avoids the up the out of shield. Punches into the dash attack. Nice nair. Lionheart, I think that's Okay gonna be then. it. I think that's going That's to be gonna do it. it. Lionheart, the winner of KO Fight Night. Lionheart is your KO Fight Night Season 5 Smash Bros. Ultimate Champion. Taking home that 50,000 rupees and the title of the best Smash Bros. Player at this tournament. Lionheart has been absolutely tearing through every match that he's had. I don't think he dropped a single set this tournament. Dan, you got any words now? Honestly. Look, guys, honestly, I'm going to just say that SG tried. Okay, SG was looking for the options that he wanted, or that he thought could beat out at this point, Lionheart. But Ike, the hard-hitting sword character, did not work out. But Lionheart knowing exactly how to exploit his weaknesses. Moving to Marth, fast-paced would have probably worked out, and I would have liked to see him stick to that character and maybe try it a little bit better, because he was showing some good edge guarding options, but just not quite getting that final hit to close out the stocks, and which was the biggest problem across all 3 games for him. Just not managing to close out stocks early, letting him live up to 200, 250%, and just Bowser hits hard at any percent. So you could see he was edge guarding him really well in the game with Marth in the second game. And then as soon as Marth made one mistake, came back on ledge, Bowser came back, forward smash, bam, you're out of there. It was I over, am back yeah. in the lead. Honestly, So- it looked like Bowser, Lionheart was just playing around with him like a ball. Like, Yeah, true. I that's mean, really what it Lionheart looked like. looking absolutely indomitable that last set. I mean, I don't think if there was a way to cement yourself as the best Smash player in India and, do it at such a big tournament, I don't think there was a better way to do it than take such a clean 3-0 over, one of the other players that has shown us arguably the best sets this entire tournament. SG completely agree. also dropping only 2 sets, both which he lost Lionheart. Botman giving him such tough competition, right to the bitter end. That it came down to that one Mario combo. I mean, if we're talking about highlights, I think this top 4 alone has given us so many. And I mean, congratulations to all the 4 players who qualified. Lionheart It's taking really home been 50,000 rupees. SG going out with that nice 25,000. Botman 15,000, and Quaylectra, our youngest player, taking it out with 10,000 rupees. So I mean, that's it. Smash Bros. Ultimate. Let's go back to the desk and see what they have waiting for us now. All right, well, we've got our answer. We've got the answer. Yeah. It is a Lionheart day, and indeed, the dude is the champion for what a play, dude. I mean, no comparison to him. Well, definitely no comparison. Hands down, the man showcased why he deserves to be the champion this time around. Just a one-sided domination coming in from Lionheart. Did expect a much tougher fight to be put up by SG, but Yes. I mean, it looked like he was just in the same zone. He felt like it was just the first match of the upper bracket that we faced today in the finals, and well, being in the comfort zone definitely takes the victory. Absolutely, and now, well, right now, he is going to be a lot more comfortable because finally,
the pressure is over, I would say, right? Because again, it's just one of those high intensity sort of games. Once you get into it, once you start snowballing along with it, one game after the other, and then, well, as you reach closer and closer to the top, that pressure starts rising. Definitely. The pressure keeps on rising, but with the pressure, when you actually achieve this, when you have the opportunity to call yourself champion, it's all worth it. And it's all worth it for Lionheart right now. Congratulations to this lad for taking home the trophy and the 50,000 rupees along with it as well. Absolutely. Super Smash Bros. Ultimate Season 5 champion. It is Lionheart, and I'm sure he's won a lot of hearts in the chat. Of course, do share your love with the lad as well. If at all you do know his Twitter handle or Instagram, well, go right there. Tell him that, dude, I loved your match. 3-0, 3-0. I mean, that's just playing and toiling with your opponent. Not just him. I mean, if you are showing the love, show the love to all the players that were participating in this KO Fight Night Season 5 and have made this tournament really, really big. And it's been a pleasure to be here for Super Smash Bros. Ultimate as well. And, well, the fight is going to keep going on, though, because the Airtel India Esports Store, I mean, that's still a thing. Lionheart is going to be leading the charge right now, but he can still be taken down. Exactly, he still can be taken down, and then he might be taken down by you, sitting back at home, just thinking, dude, maybe, just maybe I could play the game. Well, yes, you can, and as soon as you start rolling along within one of those tournaments, you will be part of that Airtel India Sports Tour leaderboard, and perhaps you could showcase Lionheart next year in KO. Well, mate, I'm the ultimate boss. Who are you? Yeah. I mean, it's always a pleasure to watch young players come in and just go on a domination spree, just stand up to these old guards, or the OGs as we like to call them, and just give them a tough fight. It's always fun. But Lionheart once again showcasing how dominant he can be. SG, an amazing fight. Botman in that losers bracket finals, that was an amazing match as well. And well, the top four, as Akshat said, the top four, they gave us so many good highlights. Yes, they did. But amongst all of them, one game that I will certainly not be able to forget has to be that second match that we witnessed in the lower bracket, where indeed SG went against Botman. Oh yeah. And dude, what a sensational match till the last moment that was. Definitely. I mean, it was an impressive performance. Also, but moving forward from there, I mean, that match was the one that set us up for that grand final, right? Yes. And coming in from that sort of a matchup, SG, he had the momentum, had the victory quite close to him. But the finals did go in terms of in the favor of, in fact, Lionheart, and as we were saying, is going to help him improve his standing. Not just standing, but stick on the first position, because I'm sure he's up there on the first position right now as far as the Airtel India Esports Store is concerned. And huge shout out to those guys, Nodwin Gaming and Airtel India Esports Store, for the collaboration and the opportunity for the players to actually have that leaderboard set up for them. And also, well, the prize money that's there for the end of the year. Yeah, absolutely, because that again is all kudos to Nodwin Gaming for making it all happen, and along with that, of course, the entire community. Yeah. The community for KO has always, every single year, been spot on with their just open heart awesomeness that they bring to the entire saga of just one aggressive match after the other, yet you go into the chat and everybody's just so positive, and that is what makes a community so beautiful. We were there at DreamHack, and we remember how loud it got at the KO stage, and this time the chat was really loud. I mean, we are online, the players were playing online, we did see the network issues coming in, but still, you guys in the chat constantly cheering for your favorite players, cheering on the casters as well. You shout out to the casters and Danish as well. Absolutely, because these lads have been just putting in their energies and putting in their efforts, and of course for that we are very, very, very grateful indeed, because after all, it's all about talking and talking and talking. No, that's not it, mate. That's not it. What you're talking is, in fact, information. What you're sharing is information. What you're sharing are your thoughts, and that's what makes all those casts that much more wonderful. I mean, you've casted so many of these games as well throughout, and when it comes to the entire experience, it's always wonderful. I mean, it is always wonderful, and I've had the pleasure of casting with a lot of wonderful people as far as Street Fighter and Tekken are concerned. Right. I'm going to get into Smash Brothers as well, try and learn the game. Probably Vishal is going to be helping me out learn the game as well, and Danish as well. Let's see if I'll get in touch with those guys and try and see if they can teach me a thing or two about Super Smash Bros. Ultimate. And hey, maybe next time. Exactly. I was just about to point that out. Maybe next time, dude. Maybe next time. I mean, here I am talking to you guys thinking that
maybe one of you might just be on the stage next year around. But what do I know? There's a champions in right next to me. Maybe he could be the one as well. No questions about it. I'll try and play as well. I'll try and play as well. Yeah, I got want to. my name to be there in the rankings. But yes, with that, of course, it is congratulations and OG gameplay coming in once again from Lionheart. And I mean, throughout though, it's not only just today, right? It's throughout all the different matches that he has played. The stats speak for themselves. Definitely. I mean, the stats speak for themselves, and not just for the finals, but the stats for the journey throughout the qualifiers, then through the playoffs, and then taking the trophy in the grand finals. The journey for all these lads was amazing, but one has the right to call himself the champion. It is Lionheart. So let's just head into an interview with Lionheart, being joined by Dan. And All right. it is going to be an intense one. Oh, yes. Let's quickly get into the interview. Hello, everybody. Join me in congratulating my good friend Abhirup, aka Lionheart, in winning KO Fight Night Season 5. How does it feel, my friend, to get this huge prize pool? It feels really, really nice, and the competition was just so stacked this time. SG, Botman, Quaylectra, Win, of course. We cannot forget Win, who has like improved so much in past few months, as you know. He just joined community this year itself, and he has taken games off of me. He has taken games off of Botman. So it was absolutely amazing, and it was definitely, a very high pressure tournament. Yeah, absolutely. And you still managed to make it through some of our top 16 killers, absolute killers. How did you feel in that last game against SG? Describe to us what was going through your thought process there between the characters he was picking. So he went random and he got Wolf out of it. Okay. And the thing is, Wolf is actually not that bad against Bowser. I see. So it's like you get beaten, that's fine. But if you get beaten by someone who's picked random, that I think that's much more worse. So at that time, I was in more pressure at that time, and his Marth almost worked actually. It's just that he's not able to kill me because Bowser is extremely heavy. I agree. We saw your kind of potential to stay alive for really long, and it comes off as a sort of symbol of how you managed to stay on top of this community for this long and be so talented and be able to, take on all the opponents. So again, congratulations to you for winning this tournament and showing us why you're sponsored now by Level Zero Esports. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Abhirup, and really good place. We'll be right back after this short break. So.
हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत है केओ फाइट नाइट सीजन 5 में ब्रॉट यू बाय नॉडविन गेमिंग एंड इंटेल इंडिया ई-स्पोर्ट्स स्टोर। अब फाइनली उस चीज की बारी हो जिसका हमारे जो दर्शक है उनको काफी देर से इंतजार था। इट इज टाइम फॉर आवर शो मैच और उस चीज के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ओशन शर्मा और जो तो हमारे दो कंटेंडर्स हैं। सो ladies and gentlemen, time to meet the contenders. First, presenting थग अनिमेश थग अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमारे कंटेंडर नंबर 1 रहेंगे और कंटेंडर नंबर 2 स्काउट ओपी। आप दोनों से सवाल रहेगा, क्या आप लोग तैयार हैं? तो गेम अपडेट हो रहा है, गेम अपडेट हो जाए तो बाकी देखो मेरे को जितना लगता है ना कि हम लोग कंप्लीटली न्यू इस गेम में, तो इट्स गोना बी फन स्टार्टिंग 4 अरे राउंड्स बहुत हम लोग मजा को आएगा समझने के लिए। एक्सप्लोर करने हाँ, का जैसा हम लोग रहेगा, को पहला 4 राउंड मतलब समझने में लग जाएगा, हाँ बट यस इट्स गोना बी फन। इट इज गोना बी फन। और आप लोगों के साथ मेरे जो को कास्टर रहने वाले हैं इस एक शो मैच के लिए, उनके लिए भी सबसे पहला एक्सपीरियंस होगा। तो ओशन, हाउ आर यू फीलिंग? आई मीन टेकन वगैरह तो हम लोगों ने खेला, बट स्ट्रीट फाइटर के हिसाब से अगर बात करें तो वहां पर ऑब्वियसली गेम स्टाइल काइंड ऑफ सिमिलर है, बट हाँ थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। कैरेक्टर्स भी ऑब्वियसली डिफरेंट यूनिवर्सेस रहती हैं, तो वो सब आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग ऑफ द कंपटीशन एंड व्हाट नॉट, एक चीज मैंने सुनी आज कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती खबर रहती है, कुछ बेट्स वगैरह लगी हैं, कुछ ऐसी वो सब सिचुएशन जरूर ऐसे हुई ही, है। वो सब वो ऐसे ही अरे वो गलत चीज है, तो ऐसे तो बेट्स तो ऐसे बहुत कुछ लगा था, हो जाती है चीजें। तो इग्नोर करके चलो। well, मेरे anyways, को ऐसे सुनने में था कि जॉनी अपना मतलब दाढ़ी वाड़ी कटा के क्लीन शेव करके आने वाला है, बट वो भी नहीं किया, तो बेट कहाँ उससे है? दाढ़ी बहुत कम कर दी थी एक टाइम पे, वो 7 क्लास का बच्चा लग रहा था 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ते में वापस आ गई थोड़ी सी, बट आज शेव करने में भूल गया क्योंकि लास्ट टाइम ट्राई करी थी, उंगली कट गई थी हल्की सी। बट अभी जैसा हम बात कर रहे हैं, मैच काफी ज्यादा आई मीन एक्साइटिंग तो रहेगा ही। गेम आप लोग चार मतलब स्काउट ने कहा 4 राउंड के अंदर थोड़े बहुत बेसिक समझ जाएंगे। अभी मैं थक के साथ थोड़ी बात कर रहा था, थक को भी थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह बताई थी मैंने। आई होप मैच के अंदर यूज करने की कोशिश करेंगे। हमको कुछ कुछ पता चला, एक दो कॉम्बो मूव्स है जो मैं इसका के लिए अलग से लेके आया, उठा अरे के ये कॉम्बो, पटकेगा इसका। भाई ये कॉम्बो क्या लिखा है? हेलो भाई, मेरे को इतना हेलो पता है। हाँ, देख, हम है बस। 100% देखो, हम 100% श्योर है स्काउट रात को कम से कम 15-20 गेम खेले हैं। भाई हम मान ही नहीं सकता स्काउट ये गेम भाई नहीं बिना भाई खेले है। भाई मेरे आवर्स चेक कर लेना, लिटरली हाफ एन आवर भी नहीं होगा। मेरे को ठीक है, इतना मैंने खाली ये जाके एक चेक अच्छा किया है। आइडिया मैं दिया। इतना चेक किया हूँ, ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल्स में से दो दो बटन पे अरे लात वही है मारता है, दो अपना, बटन अरे मुक्का दबा मारता है बस। बटन स्मैश है मेरा, तो पता चलेगा स्क्रीन में तोड़ रहे हैं हम अपना इसको। well, वो भी एक स्ट्रैटेजी रह सकती है। अभी टफ सिचुएशन से बाहर निकलेगा स्काउट अपने कंट्रोलर के साथ बिल्कुल रेडी वहां पे एक्शन पैक्ड मैचेस के लिए। स्ट्रैटेजी जॉनी नोज के, जब जॉनी और मैं खेलते हैं मेरा स्मैशिंग स्ट्रैटेजी होता है और जॉनी एक्चुअली टैक्टिकल तरीके से खेलता है, तो वो जो स्मैश स्ट्रैटेजी रहता है वो मैं करता हूँ। एंड यस्टरडे एक्चुअली आई वन वन गेम, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट थिंग इफ एनीथिंग। यस्टरडे उनको जीतने दिया गया था क्योंकि हमारा रूल घर पे अलग चल रहा था कि मतलब जो हारेगा वो खेलते रहेगा और सबको ज्यादा खेलना था, तो लोग मैचेस थ्रो कर रहे थे ताकि वो ज्यादा खेल पाए। बट आज के लिए आई मीन फर्स्ट टू 10 की रेस रहेगी हमारे दोनों जो कंटेंडर्स है उनके लिए, और वही फर्स्ट टू 10 यहाँ पे हम स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। बस जैसे थक ने भी इन्फॉर्म किया था, अपडेट एक हल्का सा खत्म होने वाला है, उसके बाद लॉबीज में दोनों ज्वाइन करेंगे और फिर वहां से एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यस I mean, I would say one thing, हाँ ये वाला गेम तो अपडेट हो रहा है, बट मैं एक्चुअली दोनों से जानना चाहूंगा, स्काउट और थक से, इससे पहले अपने फाइटिंग गेम्स अगर खेले हैं तो कब से खेले, लाइक क्या जॉनरा वगैरह रहा आपका, लाइक आप मॉर्टल कॉम्बैट या टेकन या फिर स्ट्रीट फाइटर, क्या चीज आपको पहले अगर आपने खेली है तो कब से? ब्रो मेरा तो देखा जाए तो मैंने टेकन खेली है पहले, मतलब बहुत पहले, जब पता है जो पीसी में आती थी, दो मतलब हाँ। एक से एक बंदा एरो से खेलेगा, एक बंदा WSD से खेलेगा। मैं उस टाइम पे खेला था, फिर उसके बाद मैं मोबाइल गेम्स में मोटल कॉम्बैट बहुत खेला हूँ। फिर अब मैं PS4 कंसोल पीसी में जो आते थे खेल लेता हूँ। दैट्स नाइस। थक आपने आपने पहले लाइक फाइटिंग गेम्स के अंदर आपने कौन सी खेली है अगर है तो? मैं कुछ नहीं खेला हूँ, मैं बोला हूँ एकदम प्रॉपर। मैं देखो टेकन वो पीसी में जो आता था, शायद ये शायद उसी टेकन का बात करें, टेकन 4 या नाम से कुछ आता था, हाँ तो वो हाँ, मैंने शायद खेला है। हाँ हाँ हाँ, वो खेला, वो अभी याद है, जिसमें एरो एरो निकलता था ना, एरो एक नहीं नहीं, एक जन का स्पेशल वो जिसमें था। जिसमें दो बंदे खेलते थे ऐसा, एक बंदा हाँ हाँ एरो की से खेलेगा, एक बंदा WSD से खेलेगा, ऐसे दो बंदे एक वो कीबोर्ड पे बैठ हमारा के खेलेंगे। ऑफलाइन उस मल्टीप्लेयर टाइम, होता था उस टाइम, सेम हाँ इस पे बैठ के। हाँ वो उस टाइम पे होता था। वेल सही। स्काउट आई मीन पुरानी टेकन तो हम सबको याद है, और स्ट्रीट फाइटर भी बचपन में काफी ज्यादा खेली थी आर्केड्स में जाके, बट उसके बाद से तब से अब तक गेम में काफी बदलाव आया है। हमारी जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा बड़ी हुई है।
Johnny, we cannot hear you. लाइक ये भी जॉनी का एक स्ट्रैटेजी है, मैं बोलना चाहूंगा अगर कुछ भी हो रहा है, बट स्टिल ही इज गिविंग अप टाइम टू थक टू एक्चुअली, ताकि वो अपना आराम से अपडेट कर सके विदाउट एनीथिंग. सो थक 1% कितना हुआ है अभी तक? खैर अभी सेकंड वाले का 26% हो गया है, तो वो अपने स्पीड में चल रहा है. वो आराम से कोई ना हमको वैसे मुझे चल पता रहा था, वरना मैं अपडेट करके रखता. ओशन, तुमने लेकिन टेकन खेला है ना शायद? है. या मैं टेकन के हाँ ऊपर काफी हाँ. लाइक हाँ. तो आपको पता है बहुत पहले एक मतलब मेरे को याद नहीं कौन सा टेकन है जिसमें लास्ट फाइनल बॉस आता था, पानी के अंदर फाइट होती थी. पानी के अंदर मतलब पूरे गेम स्लो चलती थी. बहुत पुराना टेकन है वो, आई एम प्रीटी श्योर. टेकन 2 जब तब हाईहाची और जिन की फाइट होती है जिसमें वो डेविल मेरे को जिन नहीं बन पता, जाता है, मेरे को नहीं पता. दैट्स जिसमें टेकन सब 2. या सारे लेवल कंप्लीट करके फाइनल बॉस आता था, मेटल टाइप का होता था, पानी के अंदर स्लो मोशन फाइट होती थी वो, 2D या फुल. वही है. हम लोग सोचो फाइटिंग गेम्स के भी ग्राफिक्स में कितना किस टाइप से कहां से इवॉल्व और कैसे किए हैं. दैट्स क्वाइट अ लॉट. यस डेफिनेटली. आई मीन बहुत बहुत ज्यादा पीछे चले गए आप लोग. बहुत बहुत हाँ. ज्यादा पुरानी बात तो यहाँ कौन सा पे. टेकन है मेरे को याद नहीं है वैसे. बहुत आई पुराना थिंक टेकन है. थ्री के बाद ही था वो. थ्री के बाद का कोई वर्जन था. थ्री मैंने खेला था. उसके बाद जिस जो टेकन मेरे को लास्ट याद है, दैट वाज टेकन टैग टूर्नामेंट, और उसके बाद मैं सीधा 7 पे आया था. बट हाँ, उन्हीं के बीच में कोई वर्जन था स्काउट आप जिसकी बात कर रहे हैं. हाँ. आई मीन एक या जिसमें एक्चुअली हाईहाची जो होता है वो फाइनल विलन बनता है, क्योंकि जिन उस टाइम डेविल जिन बनता है, और आई एम समहाउ रिमेम्बरिंग इट्स दैट काइंड ऑफ अ फाइट के अंदर उसको क्लिफ से गिर दिया जाता है और समथिंग. वो आई थिंक टेकन टेकन 2 वन है. से चल रहा है, जब क्लिफ्स पे पहले उन्होंने काजुया को फेंका था. और मतलब स्टोरी लाइन यही है, क्लिफ से फेंके जा रहे हैं एक दूसरे को जगह जगह पे. पहले खाई में फेंक दिया, उसके बाद वॉल्केनो में फेंक दिया. Tekken is basically a family fight. That's actually they यस. made a game out of a family fight or something. फैमिली फ्यूज. वेल गेम की तो बात हम लोग कर रहे गए. अभी जैसा आई मीन स्काउट आपने बताया आपने कैरेक्टर टेस्ट करने की कोशिश करी थी थोड़ा सीखने के लिए. तो कौन सा कैरेक्टर आप स्ट्रीट फाइटर 5 में खेल रहे थे? अभी मैं एक कैरेक्टर है, रुको मेरे को नाम याद नहीं है, ब्लू कलर की टॉप पहनती है लड़की, एंड लाइक शी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर, ऐसा चुनली. यूट्यूब में बोला है. जो हाँ एग्जैक्टली वही. यस. तो तो उसका मेरे को एक चीज अच्छा लगा कि वो बहुत फास्ट है. तो लाइक मैं वो कैरेक्टर इसलिए चूज किया क्योंकि मैं टेकन के टाइम पे वो जो ब्रूसली वाला कैरेक्टर था ना, वो मेरे को या अच्छा था. वो ही फास्ट था, तो एक थोड़ा सा मैच हो रहा था प्ले स्टाइल. तो मैं चलो भाई मतलब स्पैम कर ही रहा हूं, तो मैं सेम प्ले स्टाइल में स्पैम करता हूँ. काफी अच्छी स्ट्रेटजी है. आई मीन थॉट प्रोसेस बिल्कुल ऑन पॉइंट है, क्योंकि यूजुअली प्लेयर्स भी यही रहता है, आप स्विच कर जाते हैं तो कोई सिमिलर चीज उठाते हैं. और चुनली के साथ अगर थग आप यहाँ पे कैन पिक कर ले, तो आई थिंक हमको एक ई स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का आइकॉनिक मोमेंट जो था वो भी उन्हीं दो कैरेक्टर्स के साथ था. इट I have to tell. I'll talk about that. I'll talk about. तो मेरा favorite moment है. There's a moment, Evo moment 37 करके रहता है वो, and उसके अंदर it was 2003, right Johnny? यस. इट्स क्वाइट ओल्ड, आई थिंक सो. 2003 to 2004 के अंदर इट्स लाइक 16 प्रिसाइज मूव्स यूज करने थे, जिसके अंदर एक्चुअली केन को जीतना था, केन को बीट करना था चुन ली को. एंड दैट्स 1 मिनट 27 सेकंड्स के अंदर पूरा ऑडियंस पागल हो गया था वहां पर, प्लेयर्स पागल हो गए थे. जिस तरीके से वो दुनिया का सबसे आइकॉनिक मोमेंट अभी तक करा. आई वुड जस्ट सजेस्ट, अगर ऐसा होता है, अगर चुन ली पिक होता है तो वहां केन पिक होना चाहिए साइड से. तो मेरे को एक चीज में बताओ Yeah. कि कॉम्बिनेशन इसमें किस बेस पे चलते. देखो मैंने इसमें इतना देखा है कि यस. अपने नॉर्मल जो 4 एरो कीज होते हैं उससे भी होता है और जॉयस्टिक से भी होता है. बट जब आप अटैक करते हो तो हर अटैक अपना आपका प्लेयर रुक जाता है. तो कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक का एक फ्लो ऑफ अटैक्स चाहिए. यस. ओके, तो यहाँ पे दो चीजें जो मतलब टेकन और स्ट्रीट फाइटर को थोड़ा सा अलग कर देती है, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर में आप सिर्फ अपने हिट कॉम्बोज से भी अलग अलग कॉम्बोज एग्जीक्यूट कर सकते हैं. आप सिर्फ अपने जो पंचेस और किक्स के बटन हैं उनसे आप कॉम्बोज में ट्रांजिशन कर सकते हैं. बट टेकन के अंदर स्काउट जो चीज आपने नोटिस करी वो बिल्कुल परफेक्ट है कि कमांड इनपुट्स हम इनको बोलते हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्शन भी इनपुट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू हाँ ट्रांजिशन इनटू अ कॉम्बो. अब वो चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि मूवमेंट अगर आप कर रहे हैं नॉर्मल, तो आपने भी फील किया होगा कि मूवमेंट के टाइम आप डायरेक्शन पैड यूज कर रहे हैं, बटन यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा आसान रहता है. लेकिन कॉम्बोज करते टाइम, जैसे अगर केन की हम बात करें, रियो की बात करें, उनके फायर बॉल्स होते हैं, तो वो ऐसे आधा सी बना के हमको फिर पंच का बटन दबाना होता है. अब वो चीज जॉयस्टिक से ज्यादा आसान रहती है. तो आपकी प्रैक्टिस में आपको आई थिंक ये थोड़ा सा आपने भी प्रैक्टिस किया होगा कि दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली स्विच करते हुए रहना. तो आप मुझे इसका टिप्स बताओ यस. स्ट्रीट फाइटर 5 का, कि आई मीन इसमें आप मुझे कॉम्बिनेशन का कुछ
बताओ टिप्स, एक दो टिप्स हम लोग को बता दो कि ये करोगे तो आपको एक कॉम्बिनेशन दे सकते हो। आई मीन डेफिनेटली लो के साथ हमेशा स्टार्ट करना है, नीचे डक करके रहना है, डाउन बैक पे हमेशा जाना है, क्योंकि डाउन बैक से आपका जो ब्लॉक है आपको अटैक्स कम पड़ेंगे, वो एक बहुत हाई प्रायोरिटी चीज रहेगी। उसके बाद वेल ओके, थक का गेम डाउनलोड हो रहा है तो लेट्स सी इफ ही हियर्स दिस। अभी के लिए थक कुछ मेरा चीजें पिक गेम कर ही सकते डाउनलोड नहीं हुआ, मैं अब यहाँ मुझसे पे थक वही देख रहा स्ट्रैटेजीज हूँ। जरूर सुनेंगे यहाँ पे, बिकॉज थक को भी देखना है कि स्काउट को कैसे ला सकते हो। थक के ऊपर तो पूरा पूरा अपना ध्यान रखेंगे कुछ भी करके। मैं थक तो पूरा थक ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठा हूँ थक और बस। मैं सेम, अभी अभी थक और मैं सेम कंडीशन में, एक्चुअल में हम लोग का अभी हम माइंड लोग सेट एक्चुअली सेम सेम कंडीशन, हम लोग एक डिफरेंट ट्रांस में, डिफरेंट हाँ जोन हम में। थक ने जो कॉफी पिया मैं 1 घंटे पहले पी चुका हूँ। थक थक थोड़ा मतलब थोड़ा लेट टाइम पर आया है बूस्ट पर, लेकिन थक बूस्ट के लिए पूरा तैयार। लाइक ही इज रेडी फॉर द सीज, ही इज रेडी। थक मेरे को याद है मैं जैसे ही डिस्कॉर्ड पर आया था बात करने के लिए, थक एक ही चीज सुन रहे थे जॉनी से, दैट वाज R1+R2 एंड दैट्स हाउ यू विन द गेम। मेजर चीज वहीं पर आती है। वेल R1+R2 का भी मतलब वो वी ट्रिगर वाला जो सीन है उसके लिए या भी एक रिस्की मूव है कि वी ट्रिगर आपका जो बार है वो तभी बढ़ता है जब आप डैमेज ले रहे होते हैं, तो आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी जब तक आप उस ट्रिगर एडवांटेज पे पहुंचेंगे। बट उसके बाद जैसे रियो की अगर बात करें, जो एक बहुत बेसिक कैरेक्टर है, काफी आसानी से आप दोनों खेल सकते हैं, और केन भी, रियो और केन एक क्लासिक मैचअप आपके पास रहेगा। या तो चुनली का जो पिक है यहाँ पे स्काउट के लिए, उसके लिए आप जितना क्लोज डिस्टेंस पे रहेंगे उतना ज्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि काफी एक हाई प्रेशर हाई मोबिलिटी कैरेक्टर रहता है। चुनली का एक मूव है, उसका मैं इनपुट भूल चुका हूँ, दैट्स बहुत ही एक आइकॉनिक मूव है, दैट्स द स्पिनिंग किक, जिसमें वो अगर आपने पुरानी स्ट्रीट फाइटर्स में से आपको याद हो, वो घूम के ऐसे लाते चलती थी उल्टी होके। हाँ उसका उसका इनपुट मैं भूल चुका हूँ और उस मूव का नाम भी भूल चुका हूँ, बट दैट इज समथिंग जिसको आप गैप क्लोजिंग के लिए भी यूज कर सकते थे। एंड यस सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बोल रहा था कि तो इसमें कुछ ऐसा पावर मूव्स नहीं, जैसे टेकन एंड ऑल में एक पावर मूव होता था ना कि अगर ये पावर मूव लग गया देन तो वो स्पेशल ओपोनेंट मूव इज है, देन। वो स्पेशल मूव है, बट कॉम्बिनेशन बिठाना होगा तुझे। वैसा पावर मूव नहीं, आपने एक देखा होगा, एक नीचे एक बार रहता है सीए का, हाँ राइट? सी हाँ, तो एग्जैक्टली। वो वो बार जब आपका पूरा हो जाएगा तो हर कैरेक्टर के लिए अलग होता है, बट मोस्ट कॉमन इज आपको 2 बार सर्कल बनाना है, 2 बार क्वार्टर सर्कल, और फिर उसके बाद हैवी पंच या हैवी किक से कॉम्बो एग्जीक्यूट होता है वो। और ठीक उसके है। लिए भी वो एक बार आपने मार दिया तो समझिए 40% हेल्थ का बहुत अलग आ एडवांटेज रही आ है। गया। थक इज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इन हिज लाइक भाई मूवमेंट में प्रैक्टिस कर हम रहे पूरा भाई हैं। ये लेके बैठ गए हम भाई भाई। रुको, मैं भी प्रैक्टिस कर लूँ क्या बाहर जाके रूम से? स्काउट है। देख स्काउट, तू कितना ही बन ले, मुझे पता है तू पूरा रात बैठ के खेले है। भाई ने नहीं किया तो आर्स चेक कर ले भाई, इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? बोल रहा है But पूरा just रात imagine, खेला है just 2 घंटे। imagine a speculation, थक आता है Yes. पहला राउंड, थक जीत जाता है दूसरा राउंड, थक जीत जाए, इमेजिन क्या होगा। लाइक उसके बाद फिर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होगा। थक लाइक भाई मैं तो, प्रेशर तू भाई, चाहे पूरी रात खेला, मैं अभी डाउनलोड करके खेल रहा हूँ। भाई भाई ब्रो स्काउट खेला है मैं पूरा नहीं रात, भाई, हम मैं नहीं 100% खेला श्योर ब्रो, है। देखो मैं बता रहा हूँ, आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेला हूँ भाई। Well, ट्रस्ट Actually, मी, आई हैव okay, नॉट। Johnny, yes. one person that you think will win out of Thug or Scout, one person. Ooh. वेल फाइट काफी क्लोज होने वाली है, बट मैं स्काउट के साथ जाऊंगा बेस्ड ऑन कौन सी गेम्स उन्होंने बताया मेरे को सुबह सुबह कि वो ये खेल सब के आ खेला रहे है हैं। रे, ये मैं बता, अभी ये पूरा रात जगा भाई क्यों देखो था, मैं इसीलिए मैं ये मैं हमको मैं बता आएगा जाके 10 भाई स्टोरी डालेगा, हमसे पूछो हम भाई बताते भाई हैं। भाई मैं ये तुमको बता स्काउट रहा है। हूँ, देखो सिंपल सब। सी चीज है, हाँ। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो जल्दी यस, अडेप्ट कर लिया गेम को वो मारेगा, सिंपल, हाँ, जो एग्जैक्टली। जो जल्दी एक बार समझ एक गया। बार वो पता चल रहा होगा कि क्या हाँ सामने वाला तीन का वीक चार पॉइंट तीन है, चार किस तीन तरीके चार गेम क्या चीज समझने में डिफेंड लग नहीं कर जाएगा, पा रहे। 3-4 गेम लगेगा समझने में, हाँ भाई ये बटन दबाने से ये हो रहा है, तो फिर हो जाएगा। आई मीन आपने एक चीज बहुत राइट। सही बोली, अडेप्टेशन एक बहुत ही की फैक्टर रहता है गेम के अंदर। और थक ने भी एक चीज बोली कि सामने वाले गेम के साथ साथ सामने वाले बंदे को भी समझना पड़ेगा आपको कि मतलब क्या Yeah. ब्लॉक नहीं कर पा रहे, कौन से अटैक्स उनकी वीकनेस पड़ रहे हैं। स्काउट को और रेज कराना है हमको खाली। कुछ नहीं, स्काउट रेज हो जाओ। That मैं kind of मैं comes अभी up as a ऐसे, tricky situation अगर मैं बोलूं, but still, मैं भी yeah, चिल we'll see how स्टेट में that हूँ। comes up. हम तो बोला अगर हम लोग कनेक्टेड रहेंगे क्या, हम लोग एक दूसरे को सुन पाएंगे गेम के बीच में? हाँ बात कर हाँ सकते हैं एक सुन दूसरे के पाएंगे ना। बारे तो ये गेम के पे जो उलू करूंगा। स्काउट रेज कर रहे हो बोले। ओके में। ओके, नहीं तो भाई फन फैक्ट, अभी तो आप लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं तो वहाँ पे साइट सिलेक्शन का उतना बड़ा प्रायोरिटी नहीं रहेगा, बट ईवो जैसे टूर्नामेंट्स जो होते हैं जहाँ पे लैन होता है, तो ओके। वहाँ पे यूजुअली साइड बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि जैसे चलिए टेकन हम लोग सबने खेली है, टेकन के साथ स्ट्रीट फाइटर फिर भी बहुत ज्यादा गैप रहा होगा सबका, क्योंकि 4 मैंने भी नहीं खेला and बहुत ज्यादा एक मिसकम्युनिकेशन हो गया था वहाँ पे कि काफी लोगों ने ड्रॉप किया था, एंड देन 4 की कम्युनिटी कंपेटिटिव सीन चली थी, बट 5 पे अभी लोग ज्यादातर मेरे को दिखाई देते हैं। बट टेकन सबको आइडिया है, गेम हैज रिमेन्ड द सेम बहुत लंबे समय से। तो जब मैचेस होते हैं
साइड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे लोग लेफ्ट साइड पे रह के प्रैक्टिस करते हैं और उनकी मसल मेमोरी सारी की सारी लेफ्ट साइड पे रहती है, तो राइट साइड पे रहना एक Okay. डिसएडवांटेज रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेयर आ गया जिसको राइट साइड पे खेलने की Yeah. आदत है तो वो बाकी सारे लोगों को दिक्कत दे देता है। अब साइड डिसाइड लैन पे गेस कैसे होती है, लोग उसके लिए रॉक पेपर सिजर्स करते हैं। हम लोग को कोई भी साइड दे दो, हम लोग चार मैचेस सीखेंगे मेरे में। हम लोग को मैं तो साइड नहीं, सीखना और क्या है हम लोग मसल चार, Okay, let's do one thing हाँ then. हम लोग Loading चार Johnny, game let's मैचेस do one समझे thing. क्या कब क्या होने वाला है। Johnny, I would say Well, let's do one thing. जब तक जिस obviously सब हिसाब से कुछ आप नहीं लोग So होता है. एक हिस्ट्री गेम रही कितना है देर लास्ट करता है जॉनी? 90 सेकंड्स का एक राउंड होता है और उसके 3 राउंड आपको खेलने होते हैं एक सेट जीतने के लिए। Okay, and we are doing race to 10 sets यस, अभी। फर्स्ट टू 10 सेट्स। आई थिंक ब्रेक डाउन हो चुका है ये कि अलग अलग सेट्स में अलग अलग उसमें अलग अलग Okay, ग्रुप्स में खेले जाएंगे। आई मीन अभी okay, जितना okay, खेल सकते हैं वहां स्कोर लाइन कंटिन्यू होगी, नेक्स्ट हमारा जो okay, शो okay, मैच का okay. सेगमेंट तब रहेगा ठीक उसके है। अंदर। यस, वरना बहुत बहुत लंबा स्ट्रेच वरना हो जाता खेलते खेलते। हाँ भाई एग्जैक्टली वही मैं फर्स्ट सोचा कि तब तो फर्स्ट टू टेंस इज लाइक, जैसे अगर हम अपनी गेम्स की बात करें जो हम लोग मैच पहले खेलते थे, जो गेम्स हम पहले खेलते थे, वहां पे 1v1s का कॉन्सेप्ट बहुत ही एक आइकॉनिक रहता था कि आप लोग एक स्कोर लाइन को टच करने के लिए। तो फर्स्ट टू टेंस फाइटिंग गेम्स के लिए वही सेम 1v1 का कॉन्सेप्ट है। और अ, बहुत बहुत ज्यादा एक मेमोरेबल मैच होता है जब दो प्लेयर्स आके डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब फर्स्ट टू 10 खेलने वाले हैं। और बहुत ही एक बड़ी हिस्ट्री भी वहाँ पे उन दोनों प्लेयर्स के बीच में रहती है। आई मीन काफी सारी आइकॉनिक स्टोरी लाइंस है ऐसी जो इन FT10 मोमेंट्स के साथ आई है। उनमें से दो आई थिंक ये एक नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है आप लोगों के लिए भी। इमेजिन कीजिए गेम खेलते खेलते मजे आने लगे एंड वेल यू गेट हुक्ड ऑन स्ट्रीट फाइटर 5 नेक्स्ट। Who knows? या मतलब यू नेवर नो, अगर अगर गेम में मजा आ गया और ऐसा लगा कि हाँ कुछ डेफिनेटली आई थिंक एंजॉय करेंगे हम, विल डेफिनेटली कनेक्ट, और एल्स इंटरेस्टिंग लगा तभी मैं साइन अप किया के लिए। So I think it should be fun. Especially Scout. Scout तो बहुत UFC ये सब भी खेलता है stream पे. यस, I've seen him playing a lot of boxing games. So I think he might be able to connect. मैं Yeah, वो obviously love fighting and stuff, तो मतलब जैसे कोई भी फाइटिंग एक्शन बेस्ड गेम्स रहती है, स्पेशली यूएफसी हो गया या फिर टेकन हो गया, तो ये सब में क्या है, जो एक बोलते हैं जो खुद कनेक्ट कर सकता है आदमी का, लाइक बचपन से अपन एनिमे देखते हुए आ रहे हैं, तो उसमें भी फाइट्स एंड ऑल है, तो ये चीज बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है खेलने के टाइम। जी हाँ, और कुछ ऐसी गेम्स के भी नाम लिए, UFC जैसा स्काउट ने मेंशन किया था, एक गेम थी जो मैंने थोड़ी कम खेली बट थक आपने जैसे कहा था, स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन। वो एक गेम थी जो बचपन में हमें काफी ज्यादा खेली जाती थी। और वही फाइटिंग गेम्स, आई मीन आप एक गेम खेलते हैं फिर आप दूसरे गेम में ट्रांजिशन करते हैं, एक ट्रांजिशन की वजह से थोड़ी बहुत आसानी रहती है कि आपके पास एक्सपीरियंस रहता है पुरानी गेम की मेंटालिटी का। और आप दोनों ही अपने अपने टाइटल्स के अंदर कम्पिटिटिव प्लेयर्स रहे, हाईएस्ट टीयर पे आप लोगों ने परफॉर्म भी किया है, और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ यहाँ तक आ रहे थे। तो आई थिंक एक बहुत बहुत ज्यादा एक कम्पिटिटिव मैच तो हमको डेफिनेटली देखने को ही मिलेगा आप दोनों के बीच में भी। Yeah, I mean like Scout said कि एक बार वो जिस समझ में आ जाए तो obviously heat up हो जाता है, टूर्नामेंट इंटेंसिफाई हो ही जाता है, एंड स्पेशली रेस टू 10 है वो भी एक सेट बेस्ट ऑफ 3 होता है, so it's a pretty long journey, so I think it's gonna be fun, and gradually थोड़ा सा सीख भी जाएंगे तो वैसे मजा आने लग जाएगा। जी हाँ, आई मीन मजे तो आएंगे। और मजे हमारे दर्शकों को बता दूं कि ये शो मैच रहेगा, इस शो मैच के बाद जो हमारे स्ट्रीट फाइटर 5 के ब्रैकेट्स है, जहाँ पे जो हमारी कंट्री के टॉप 4 प्लेयर्स है वो compete करने वाले हैं। अयान वहाँ पे मौजूद होंगे, प्लेन गौरव आ रहे हैं अपर ब्रैकेट से, देन वी हैव अमन इन देयर एज वेल, एंड वी हैव द डार्क लॉर्ड हिमसेल्फ। तो काफी ज्यादा इंटेंसिटी इसके बाद भी हमको देखने को मिलेगी। और उसके बाद दिन के end में एक बार फिर हमारे जो गेस्ट है वो एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे अपने थॉट्स देने के लिए, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा विद द गेम, वाचिंग द मैचेस एज वेल। वेल अभी भी आई थिंक थक एक ही सवाल रहेगा मेरे से, अपडेट कहाँ पे पहुंचा आपका? I think we have 2/3 done, so एक और बचा है, I think उसके बाद will be good to go। मुझे पता ही नहीं था, और I would have definitely this सब, क्योंकि कल रात से जब मैं लगा लिया था इंस्टॉल पे तो I wouldn't have got this come to this situation, but ठीक है, अब वेल can't really help it। टाइम तो हर चीज को लगता है, टाइम के साथ आई मीन पेशेंस हमें भी, आई मीन इसके साथ तो पेशेंट रहना सीख ही रहे हैं। अब एक एक कॉन्वर्सेशन हमारी सुबह भी चल रही थी थक आपके साथ ही कि अबाउट द सीन ग्रोइंग।
अभी कुछ देर पहले हमने स्मैश सुपर स्मैश ब्रोज अल्टीमेट के मैचेस देखे थे, जहाँ पे लायन हार्ट करके एक प्लेयर थे, जस्ट टेकिंग एन अमेजिंग विक्ट्री। स्पॉन्सरशिप भी अब प्लेयर को मिल चुकी है। इंडिया में जो एयरटेल इंडिया ई स्पोर्ट स्टोर का लीडर बोर्ड भी है, वहां पे भी काफी अच्छे से लीड कर रहे हैं। इट सीम्स लाइक ओके। बहुत ही ज्यादा एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आ रहा है। बाकी सारे प्लेयर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि प्लेयर्स प्रैक्टिसेस करते हैं, चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, बट हाउ डू यू बीट समवन हु इज always at the top and looks like a god at the game that he plays? I think Scout is the best person to answer this because he Yes, has that thing to always get better, like अपने पूरे जर्नी में he always wants to get better of anyone he sees जो इसके ऊपर होता है। तो I think Scout, you are the better person to answer this. तो लाइक मुझे तो ये लगता है कि यार no one can stay at the top क्योंकि you know that every time there's one guy who's gonna come out of nowhere and beat you. The one thing that I keep in my mind is that you just need to keep going. कोई ना कोई तो आपसे बेटर आएगा, बट मैटर क्या करता है कि आप उससे क्या सीखते हो, किस चीज के लिए वो आपसे बेटर हुआ है। आप वो चीज सीखो, ऑब्वियसली देन यू बिकम बेटर देन हिम। Just learn the thing. There's nothing bad to accept that something is better. Someone is better than you. You need to learn some skills which is better, which he has acquired than yours. Just learn it and move on. डेफिनेटली। आई मीन बहुत ही अच्छी चीज बोली आपने कि जो चीज वो सामने वाला इंसान आपसे अच्छी कर रहा है, आप उसको भी पिकअप कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, अपना स्किल सेट बढ़ाइए। और अभी तो हम इस शो मैच के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। कल हमारे दर्शकों को बता दो कि मेरे इस साइड पे जो शख्सियत बैठे हैं, उनके साथ मेरा भी एक मैच होने जा रहा है, एंड दैट इज गोना बी टेकन 7। आई होप ओशन यू आर रेडी टू like get a beating. I chose the game for a reason, man. Yeah, you did choose a game. You couldn't win last night as well. कल रात को भी, I mean, इतने मैचेस के लिए चले हमने, and ये बस कल रात को रखा गया था loser stay, और I don't want to stay by yes, being a loser, right? well, I ये देखिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस मिल चुकी है। I hate you. I know you do. But well, still, if talking about anything, I mean, Tekken कल रहेगी, आज Street Fighter रहेगी. I still Yes. kind of feel sometimes, you know, Super Smash Bros का भी हमें एक बार ऐसे करना चाहिए. And I remember जब obviously ये सब कुछ start होता उससे पहले Thug was saying कि हम एक team match क्यों नहीं करते or something. If it comes to that or something happens, I mean, एक team match भी कहीं ना कहीं अपन लोग plan कर सकते हैं right around in the future or something. जी हाँ, आई मीन टीम मैच अगर हो, हम चारों को खेलने मिले, तो मजे काफी ज्यादा आएंगे। आई मीन चारों अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, एंड एक्साइटिंग तो बहुत ज्यादा होगा। Exactly, exactly. I would say that will come up in a very good of a vibe or something with everything just coming out. And so far with the stuff, I mean, स्काउट का हमने पूछ लिया, ऑब्वियसली तो उनका कैरेक्टर भी पूछ लिया, चुन ली वो यूज करेंगे। अगर वो यहाँ पर अपना मेन एज कैरेक्टर लेकर आते हैं, I'll still be waiting on थग कि थग अपना कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं। प्लस सी एवरी कैरेक्टर इज गुड, एवरी कैरेक्टर इज बैड इन ऑल ऑफ देयर स्टफ। आई मीन इट ऑल मैटर्स कि आप कैसे यील्ड करते हो, और एक मैच, दो मैच, तीन चार राउंड्स के बाद आप कैसे यील्ड करते हो। प्लस फ्रेम्स के ऊपर भी बात आ जाएगी बाद में। दैट विल बी, आई वुड से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सी आउट देयर। ओशन, आपसे मैंने थक से भी बहुत बातें कर ली, स्काउट से भी बहुत बातें कर ली, Yes. तो आपका एक्सपीरियंस भी जानना है कि I आपने guess We are one ready. second. I guess थक का डाउनलोड जरूर हो गया something. मेरा डाउनलोड हो गया फाइनली, आ जाओ एंड हम भाई, लोग आ अब जाओ, स्काउट let's. अपने कंफर्ट जोन से निकल जा। Oh एंड my पूरा God. स्काउट यूएफसी खेल खेल के पूरा यूएफसी फाइटर की तरह रेडी UFC होके mode, नहीं yeah, नहीं, Scout is मैं out there in UFC mode. मैं थोड़ा अपना रूम को शिमला बना रखा हूँ, समझ रहे हो, थोड़ा सा ठीक है, चिल माहौल बना रखा हूँ। Yeah, so Johnny, you were asking me something. मैं आपसे बस यही पूछ रहा था, वही सेम सवाल जो मैंने थक से भी पूछा, स्काउट से भी पूछा, कि स्विच करने पे आपका एक्सपीरियंस क्या था फाइटिंग गेम्स के साथ? I mean, as of now, पहले भी हल्के फुल्के तो खेले थे, but हाँ वही playing as in casual and going as proper competitive या कुछ भी ऐसा, and watching matches and all, because I would still say अगर मेरा Tekken के साथ बोलोगे तो Tekken के लिए मेरे पास वही आएगा, Asana Nash, best name that there is, JDCR versus Lil Majin, हमेशा मैं उसी के बारे में बात करता हूँ जब हम मिलते होते हैं, you know, King का मैच जो रहता है, Yes. one of the best things, and Evo moments, so वो देख कर it's like कि हाँ, that kind of gives an adrenaline rush, but हाँ उस चीज को देखना and उस चीज को खुद में yield करना, वो चीजें बहुत इन डाउन में आती है। I mean, all those games and everything with the abilities and what not. I mean, अल्टी कब यूज करनी है, जब अगर टेकन की बात करें, like that's kind of my main from all these fighting games. टेकन की बात करें, जब रेड एचपी पर आप पहुंच गए तो वहां पर किस तरीके से कमबैक्स निकाले and all those things. So वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, but हाँ उस टाइम पर जो प्रेशर सिचुएशन होती है, हम लोग तो फील कर चुके होते हैं जब भी हम लोग खेलते होते हैं, Well, but I वो wanna see प्रेशर these guys सिचुएशन के actually, साथ डील yeah. करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है हमेशा की तरह। बट अभी कुछ ही देर में हम बढ़ने वाले हैं हमारे शो मैच की तरफ। आई मीन लॉबीज अब आप लोग ज्वाइन कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, एंड उसके बाद अपने अपने कैरेक्टर्स भी पिक करने वाले होंगे। एक कैरेक्टर मैचअप तो हमें पता चल चुका है, बट
थक की तरफ से हमें जानना बाकी रहेगा कि थक क्या खेलेंगे। Yes, I would I say mean like मैं कैरेक्टर चूज कर रहा हूँ, बस मैं लॉगिंग इनटू सर्वर का कुछ एरर आ रहा था which I think is sorted now. Yes. But स्काउट I think चुन ली लेगा, इतना तक मुझे लग रहा है. Thug But go I for think we can Ken. Thug go randomize for as well. Ken or We have Ryu. this Go option. for Ken or Ryu. Yes, Trust you me. have the option to randomize. Scout Yeah. randomize. Yeah, we can go randomize. Yeah. All right. How about let's Random go first 5 rounds with a randomize. random characters. Then Okay. after first 5, when we start learning the mechanism of the game, we go with the characters what we love. What we love. How about Okay. that? Done. That works. Okay guys, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. And okay, I have entered and I need to view my invitations. I got invitation. Let's go. Almost good to go. Okay, almost there. और जो अभी आइडिया I mean स्काउट ने सजेस्ट किया, I love that. 5 games with totally random पांच games characters. What the random. fuck? You are from Canada चलो. or what? अरे वो उस टाइम हम बस फटाफट कर लिया. Setup. Canadian thug. Canada. इंटरनेशनल यहाँ पे स्किल सेट लेकर आएंगे बाकी प्लेयर्स का. देखते हैं कि कितना एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा थक को. बट अभी के लिए 5 रैंडम कैरेक्टर्स. Okay. उम्मीद करूंगा किसी के लिए I mean नहीं, मेरी उम्मीद रहेगी मिरर मैचअप देखने को मिले मेरे को रैंडम में भी. Mirror matches, they are not fun, bro, to be honest. बट मिरर मैचअप्स इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कि अब सामने वाला क्या करने वाला है, आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट कर देते हो. तो एज अ व्यूअर इट्स लाइक इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. Is there any range attacks in this? यस देयर आर. फायरबॉल्स काफी कैरेक्टर्स के पास अवेलेबल होती है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो. वही वो क्वार्टर सर्कल पंच वाला जो मैंने इनपुट दबाया ना, बताया आपको, वो रियो. So basically with the right joystick, right? यस विद द लेफ्ट जॉयस्टिक. Okay, left joystick. The angle, जहाँ से हम shot The angle moment, लेते हैं. the moment angle Random बने. करते हैं, आजा स्काउट. Okay, let's go. Well, Okay. the game is about to get started, and with that, we are about to jump into the action. Ocean, I mean, Thug और Scout तो काफी देर से ready बैठे हैं. ये Ocean, क्या आपसे क्या मेरा सवाल रहेगा, क्या दोनों आप रिव्यू आ तैयार गए. दोनों रिव्यू आ गए. मैं प्रॉपर Nice. उस फोकस जोन में बैठा हूँ ऐसे अच्छा, प्रॉपर. प्योरली रैंडम ना. ठीक है, चलो. See what happens this one. Interesting, boys. Let's go. Toryu. Okay. Yes. Capcom Pro Tours का एक एडवर्टाइजमेंट आता हुआ हमारा Johnny. छोटा सा. अब एक एक करके दोनों रिव्यूज की एंट्री. Johnny, दो रियो यहाँ पर आ रहे हैं. What do you think? What's going to happen in the situation? I mean, Scout का रियो या थक का रियो? सिचुएशन के बेसिस पे I mean अभी देखते हैं. थग हमारे ब्लू वाले रियो और स्काउट व्हाइट रियो. ओह it all starts right now. के साथ शुरुआत. शुरुआत सीधा उनको पता चल चुका है उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है. यहाँ पर पंचेस, किक्स, हर एक चीज अच्छी बेहतरीन चल रही है. लेकिन पीछे भेजने के लिए फायरबॉल का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ पर थक निकाल रहे हैं. काफी अच्छा बेहतरीन यूजेज थक की तरफ से, फायरबॉल्स की तरफ से, और प्रेशर भी उसी से बना रहे हैं. बट वो जंप्स के लिए जाने की कोशिश स्काउट के साथ, और एंटी एयर वहाँ पे आता है. स्काउट की स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी है. वाओ, वी ट्रिगर एक्टिवेशन आता हुआ थक की तरफ से. अब एक चीज मैं बतानी भूल गया इनको कि अगर ये वी ट्रिगर के बाद अपना क्वार्टर सर्कल, आई मीन वो फायरबॉल वाला जो अटैक रहता है उसके साथ अगर उसको होल्ड करके रखें तो ये फायरबॉल को चार्ज कर सकते हैं. अब अगर ये फिगर आउट कर लेते तो अच्छा रहता है उनके लिए. बट स्काउट यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं. उन्होंने बेसिक्स पे स्टिक करने की स्ट्रैटेजी अपनाई है, और वो बेसिक्स ही हेवी पंचेस, हेवी किक्स, मीडियम पंचेस जो है वो काफी ज्यादा डैमेज दे चुके हैं थक को. बट कॉर्नर में डाउन हो चुके हैं. हेवी पंचेस आते हुए, 2 बैक टू बैक स्लैप डाउन सर के ऊपर. एंड वेल, स्काउट टेकिंग द वेरी फर्स्ट राउंड. That was a good round for Scout. I mean, थोड़ी सी दिक्कत है, बट वही बेसिक्स के अपने पंचेस और अपनी किक्स रिलाय करते हुए बहुत अच्छा निकाला. लेकिन यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से काट मिलवाने की उनसे कोशिश करी. लेकिन अब आती है बारी वापस से थक की, और थक अच्छे तरीके से उनसे एक रिटेलिएशन पंचेस के सीक्वेंस पे गए थे, लेकिन एक अपर कट बेहतरीन तरीके से जाता हुआ उनका. लेट्स सी हाउ द सिचुएशन जस्ट कम अप एज द थिंग्स आर गोइंग. लेकिन दिक्कत यही बन रही है धीरे धीरे. अब आती है ग्रैपल्स की बारी. I mean, बहुत हो गया बेसिक. अब प्रॉपर एक ही अटैक मिल चुका है यहाँ पर तक, और उसी अटैक के बेसिस पर बार बार जाने की कोशिश, लेकिन नॉट. डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटेंस मैच यहाँ पे चल रहा है. स्काउट फिर से एक बारी कॉर्नर में जा चुके हैं, बट देखिए ओह ग्रैपल के लिए जा रहे हैं. आई थिंक 4 गेम से कम टाइम थक करते हैं, वहाँ भी ग्रैपल यहाँ पे आता है. और जैसा मैं कहने वाला था कि इन दोनों को जिस हिसाब से ये लोग आई मीन
वो एक कंपेटिटिव प्लेयर का एटीट्यूड होता है और जो एक माइंडसेट होता है, आप चीजें जल्दी पिकअप करते हैं। प्लेयर्स आर मच मोर क्विकर विद देयर रिएक्शंस। ये दोनों को 4 गेम से कम लगने वाले हैं इस गेम को समझने के लिए। कुछ भी बोलो, at the end जीतना भी हुआ है, हाँ, किसका नहीं जीतना है, वो बात आती है। वाह, ग्रैपल तू कर रहा है, मुझे बोल रहा है भाई, देखो अरे भाई। वो तो मैं भाई ये देखो बोलना चाहूंगा जिस हिसाब से आपने स्टार्ट करी थी ना, वो मैच स्टार्ट होती है सीधा फायरबॉल। मेरे को लग रहा है अरे वो वो तो तो अपने फट गई, गेम भाई, खेल रहे बटन हैं। स्मैश भाई मेरी फट एकदम गई, मेरे को simple लगा like भाई स्ट्रेटेजी भाई है। मेरे को स्काउट लगा कि स्काउट भाई बिना क्या मार स्ट्रेटेजी दिया भाई, बनाए फायरबॉल स्ट्रेटेजी वायरबॉल बनाकर खेल लगा रहा है। भाई मिरर मत करो यार, अलग कैरेक्टर मजा आएगा। Well, हाँ, अरे randomize क्योंकि करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक और मैचअप। और एक और हाँ, चीज एक बोलना कैरेक्टर चाहूंगा। सेलेक्ट ऑफ है, सो वी कैन नॉट सेलेक्ट कैरेक्टर आई गेस। हाँ चलो चलो। हाँ वी आर लॉक्ड एट रियू। अब रियो के साथ आई मीन काफी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। थक एक और आपको टिप देना चाहूंगा, जब आपने वी ट्रिगर एक्टिवेट किया, वी ट्रिगर के बाद अगर आप फायरबॉल मारते हैं तो आप वो जो पंच का बटन होता है उसको दबा के रख के फायरबॉल को चार्ज करके छोड़ सकते हैं। तो पता पर करता हूँ फायरबॉल अगले चल गेम के फायरबॉल मैंने मारा हाँ कैसे। हाँ, मेरे वही को बात बताओ, है, पहले मुझे ये बताओ फायरबॉल ढूंढना कैसे। होगा। वो मार तो रहा था पर मारा कैसे। देखिए डायरेक्शन इनपुट आपका सही था, आपने पंच दबाया, उसके पहले हाँ लेफ्ट स्टिक को आपको क्वार्टर सर्कल में घुमाना है, बस क्वार्टर ठीक सर्कल। है। अगर स्काउट को बताओ, स्काउट अगर आपको पॉल याद हो टेकन से, जो हाँ ओवा मारता था, ओवा हाँ का हाँ इनपुट याद है आपको? सी हाँ हाँ, दबा के ओके मुक्का, वही ठीक है, सेम सी बना के मुक्का। वेल चल सेकंड मैच के अंदर चढ़ देखते हैं किस तरह से हमारे जो दोनों कंटेंडर्स हैं इस बार खेलने वाले हैं। कैरेक्टर इनके पास सेम ही रहना, तो कैरेक्टर के ऊपर ये स्टक करेंगे, लेकिन गेम प्ले के ऊपर अब बात आती है कि वापस से फायरबॉल से फिर से शुरुआत यहाँ पर थक निकालते हैं फायरबॉल के द्वारा। एंडिल 1 सेकंड से कि मैंने मारा उसमें, लेकिन ये नहीं पता कैसे है, लेकिन हेवी पंचेस के ऊपर यहाँ पर स्काउट आते हैं। डैमेज देने की काफी अच्छी कोशिश थी, थोड़ा सा जंप लेकर के बैक एंड पर गए जरूर है, लेकिन दिक्कत बन रही है। I mean, have a look at one, each and every one of them, वो एक ही चीज पर जा रहे हैं, वो है बेसिक पंचेस, और उसके बाद कभी ग्रैपल के ऊपर जाएंगे। लेकिन एट द एंड आई वुड से अब स्काउट के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो चुकी है, जिस तरीके से थक ने शुरुआत करी है यहाँ पे। ये शुरुआत काफी अच्छी करी, बट स्काउट यहाँ पे अपने बेसिक्स के साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि किस तरह से रिटेलिएशन हमको देखने को मिलेगा। देखिए हेल्थ एडवांटेज स्टार्टिंग में थोड़ी सी निकालने की कोशिश की, ब्लॉक बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ये चीज हमारे दोनों प्लेयर्स अब थोड़ा पेशेंटली खेल रहे हैं, यहाँ पे गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अगर मिस्टेक करी आपका हर्ट बॉक्स जो है वो आपने दिखा दिया सामने को, जाते ही सीधा हैवी के क्रश काउंटर वहाँ पे आता हुआ स्काउट की तरफ से। बट ओके, थक की तरफ से वहाँ पे एक अपर कट, बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा अपर कट निकला जो, लेकिन स्काउट की अब बात है क्योंकि हेल्थ बहुत कम, थक फाइनली ही एक्चुअली गेट्स वन गुड राउंड फॉर हिमसेल्फ। एक राउंड की विक्ट्री यहाँ पे थक ने निकाल ली। और हमारा जो FT10 का रेस है उसमें आई मीन बराबरी ऑलमोस्ट कर ली है इन्होंने स्काउट की। अब यहाँ से आगे बढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओ साइड स्विच करके सीधा स्काउट अपने मूवमेंट के साथ काफी ज्यादा प्रिसाइज है। I have to say. Exactly. That's really true. लेकिन अब देखना पड़ेगा आगे क्या चीज होती है, बिकॉज़ वापस से शुरुआत यहाँ पर करी जो है सेम काइंड ऑफ एचपी थी, लेकिन अब थक की एचपी थोड़ी सी कम हो चुकी है यहाँ पर ब्लू, जो कि अगर हम बोलना चाहे बहुत के पास है, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है यहाँ पर स्काउट के लिए भी हल्की फुल्की, लेकिन तक उनको एक और पिक्चर डाउन कर चुका है, कोद में लेकर जाते हैं। लेकिन अब आती है बारी स्काउट की, पास से पलट दिया जा चुका है यहाँ पर, बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट अपने हिस्से में निकालने की कोशिश स्काउट ने करी जरूर है, लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि अब मुश्किलें थोड़ी सी बन सकती है। यह मुश्किलें काफी ज्यादा बन सकती हैं इनके लिए, बट थक की तरफ से रिटेलिएशन, थक पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा है। स्काउट राउंड में बराबरी करते हुए उसके पास वी ट्रिगर इन्होंने लगा दिया था। सीए के लिए इनपुट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलिए उस पे नहीं जाएंगे। बट स्काउट आई हैव टू से बेसिक्स पे काफी ज्यादा अच्छे खेल रहे हैं, और उनकी स्ट्रैटेजी जो है कि आप वेट करें सामने वाले के अटैक्स मिस होने का, वेट करें और उसके बाद अंदर जाए। दैट इज द परफेक्ट गेम प्लान। परफेक्ट गेम जिस तरीके चीजें यहाँ पर बनकर आ रही हैं। और खैर आगे की बात अगर हम करें तो स्काउट को आप देख सकते हैं कि हेल्थ थोड़ी सी कम है, लेकिन थक को भी अपने एरिया पर लेकर आ चुके हैं, लेकिन थक बार काफी बेहतरीन तरीके से स्काउट की हेल्थ कम करी, फायरबॉल्स का यहाँ पर इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से निकालते हुए, ब्लॉक अच्छा किया, लेकिन पीछे आते हुए उन्होंने काफी अच्छे तरीके से रीड भी किया। थक इज ऑन अनदर लेवल राइट नाउ, ये पूरा राउंड वो निकाल सकते अपने हिस्से के लिए, और साथ ही साथ गेम भी अपने हिस्से में बना देंगे। एज यू कैन सी ये टैक्टिकल गेम प्ले आ चुका है थक के लिए, थक इज प्लेइंग विद माइंड्स राइट नाउ, जिस तरीके से वो गेम प्ले बना रहे हैं। आप देख सकते हैं जब वो पीछे
जाते हैं। एक अच्छा फायरबॉल का प्रदर्शन यहाँ पर निकल कर आया था, लेकिन अब आते पंचेस की बारी। हैवी पंचेस की कोशिश जरूर करी थी, बट एट द एंड स्काउट बहुत कम एचपी पर बचे हैं यहाँ पर। थग उनके लिए भी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन एक अच्छा हैवी पंच यहाँ पर मुश्किलों में डाल सकता है स्काउट को। ही इज जस्ट सर्वाइविंग इफ एनीथिंग, बट ब्लॉकेज के ऊपर सारी चीजें बन चाहिए। गुड ब्लॉक बाय स्काउट, अ वेरी गुड ब्लॉक बाय स्काउट कमिंग आउट इन दिस एरिया, लेकिन स्काउट को बहुत ज्यादा हेल्प कम करनी पड़ेगी। थग के वो कर सकते हैं, दैट विल बी आउट देयर, बट थग कोई चांस नहीं देंगे। जी चांस दिया जाए। और थग आई मीन अपने दूसरे गेम के लिए आप कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं। वहाँ पे तानसेन मारे जा रहे हैं, फायरबॉल बिल्कुल डाइव इन के बाद। अरे वो नहीं, वो घूम के कैसे मारा मुझे तो हाँ मेरे को भी जानना है घूम के कैसे मारा। स्पिनिंग व्हील किक, दैट वाज गुड, दैट वाज एक्चुअली वेरी मारा। मैं गुड। बोला अच्छा, मैं बोलने वाला था ऐसी स्काउट मारा, मैं बोला था स्काउट अच्छा पूरा सीख के है। फिर मैं मारा, मैं बोला नहीं, बोल के फायदा नहीं है, घूम के कुछ बटन दबने से हो गया। हाँ बट स्काउट ने मारा तो आपने ब्लॉक कर लिया था, आपने कैंसिल कर दिया था। आपने मारा तो स्काउट को पड़ा था। हाँ बट ये तो काफी अच्छा था, मजा आया, काफी मजेदार था। कैसा लग रहा है? मैं थक से जानना चाहूंगा बेसिकली थक का फीलिंग कैसा है इस टाइम ये वाला मैच जीत कर, लाइक आती सेकंड मैच एक प्रॉपर डोमिनेटिंग रन पे। नहीं मतलब आई थिंक एक चीज बहुत अच्छा मुझे वरुण ने जॉय ने बताया था कि इसमें थोड़ा सा होल्ड करके खेलो। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट डेफिनेटली हेल्प सेकंड गेम में स्पेशली, यू नो, क्योंकि आप अगर काउंटर देते हो तो उसका डैमेज काफी ज्यादा मिलता है अगर आप काउंटर कर रहे हो तो। तो आई थिंक दैट रियली एग्जैक्टली, लेकिन अब अगला वाला रहेगा बिकॉज़ देखो 1-1 का स्कोर लाइन हो चुका है। नेक्स्ट वन विल बी, आई वुड से 3 में तो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा नेक्स्ट वन कुछ भी होता है। और इसके अंदर इस वाले मैच के अंदर थग ने बहुत बेहतरीन जो कमबैक किया, उससे अब शायद स्काउट को थोड़ा डर के रहना पड़ सकता है आगे वाली चीजों के अरे लिए। हम लोग को कैरेक्टर कैसे सिलेक्ट करना है? कैरेक्टर आई थिंक मैच से पहले आप अपनी सेटिंग्स में जाके यू पिक योर फेवरेट कैरेक्टर, वो आप ऑनलाइन मैचेस के लिए फिक्स्ड रहता है। आई मीन ऑनलाइन जब मैं खेल रहा हूँ तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अभी के लिए I think yes, now you should be able to select the characters. Yeah, now you can, I would say. How are we supposed to? That's what I'm asking. That's what the production well depending on how the lobby is made. Because जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ऑनलाइन मैचेस में थोड़ा अलग सा सिनेरियो रहता है। ऑनलाइन मैचेस में आप अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स में जाके यू एक्चुअली सिलेक्टेड। ओके हम दोनों ने रिव्यू वापस ले लिया। I would say random characters के अंदर रिव्यू ही बार-बार आ रहा है, तो वही एक चीज चलने वाली है। नहीं रैंडमली हम लोग खुद पिक रिव्यू डिफॉल्ट नहीं अब कर सकते हो। ओके वी गॉट इट। Yeah, now you got it. Now we can pick it. Now we can. ओके अब क्या, अब रैंडम्स पे चलेंगे या फिर No, let's pick it. Let's pick. Okay. Let's. All right, so Scout, I know Scout is going for Chun-Li. For sure, Scout is going for Chun-Li. Okay, we are picking. I want to see Thug क्या pick करते हैं. I have that thing in my mind. Same. Thug is also thinking what he is going to pick. Thug is also in that thing. मैं कैमी लेने वाला था, मेरा कैमी सोचा हुआ था थोड़ा। Okay. भाई सीख क्या है ये कैमी? कुछ तो है ये, सीख क्या है? हम कुछ सीख के नहीं आए। सुनो, तुम अगर चुनली जानते तो हम कैमी जानते हैं, बस बात खत्म। भाई चुनली मैं ऐसा कुछ जानता नहीं। हेलो भाई। Well, चलिए मैच की तरफ ही बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछली बार तो रियो की तरफ से काफी खतरनाक कॉम्बोज दिए थे। आई मीन हमारे दोनों के दोनों दावेदारों ने। इस बार जो मैचअप रहेगा वो क्या करते हैं, चुनली वर्सेस कैमी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। Now it all just comes up to this thing. I mean, different character selection जरूर आ चुके हैं इनके पास, and Chun-Li is out है। अब देखना पड़ेगा कि स्काउट क्या इनका सिग्नेचर मूव यहाँ पर यूटिलाइज कर पाते हैं। पहले ही मैच में उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्काउट आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड पर रहेंगे, थग लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर रहेंगे जरूर, लेकिन जंप मार करके वापस से एरिया डालने की कोशिश। डैश काफी बेहतरीन तरीके से आपने निकाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझसे स्काउट के लिए बहुत मुश्किल हो सके, ऑलमोस्ट एक परफेक्ट शुरुआत यहाँ पर थग ने निकाली है। He is just not stopping at all. He is actually not stopping, but अब आते हैं स्काउट। Now he knows कि Chun-Li का अटैक्स किस तरीके से उठाया उसने, लेकिन वापस से स्काउट he is actually in quite a bit of trouble। लेकिन थग के लिए भी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। काफी बेहतरीन से यहाँ पर किक्स का इस्तेमाल किया जाए, डाउनवर्ड किक्स यहाँ पर इस्तेमाल हो जरूर है, लेकिन स्काउट he is still at a bad situation at in this area। आप देख सकते हैं जिस तरीके से थग यूटिलाइज कर रहे हैं, हर एक चीज बेहतरीन तरीके से निकालते हुए। Oh my God, this is looking amazing for Thug if anything in the health advantage। Oh, मैं स्काउट की बात से सहमत रहूंगा कि थोड़ी थक गेम सीख कर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे खेला है, शुरुआत ही स्वीप से जाके और फिर क्लोज रेंज में सीधा जैब्स जाते थे उनके, वो सबसे क्विक अटैक्स होते हैं आपके। और हर लाइक
उस एक जैब की सिक्योरिटी के चलते ही कब ग्रैपल में वापस देखिए फिर स्वीप आता भाई, इनको एग्जैक्टली पता है इस कैरेक्टर को कैसे खेलना है, बट स्काउट वापस स्टेप बैक करते हैं और वो जो गेम स्काउट आता है स्पीड उनका मतलब एक की फैक्टर रहने वाला है, वो चुनली की स्पीड किक्स होती है उनका बहुत बेहतरीन यूटिलाइजेशन, बट अब स्काउट की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन रिटेलिएशन आया था थोड़ी देर पहले, बट अब थक वापस आते हुए ऑलराइट। नो सिचुएशंस यहाँ पर अब स्काउट के फेवर में आ चुके हैं, बट कितनी देर तक एक चीज होगी, 72 सेकंड 70 सेकंड यहाँ पर बचे जरूर है, लेकिन तक खेल बहुत कम हो चुका है। सिचुएशन यहाँ पर स्काउट के हिस्से जाएगी, आप एक दूसरे को टॉट मारने की कोशिश बैक एंड से अगर मैं बोलना चाहूँ, लेकिन अब बात ये आती है कि स्काउट यहाँ पर किस तरीके से गेम निकालते हैं। अब ये राउंड निकालेंगे लेकिन पूरा गेम निकालना अभी भी उनसे हल्का सा दूर है, एक और हल्का सा जैब अगर लग जाए, बट नो ऑन दिस साइड डैश करने की कोशिश थी, बट हियर इट इज द गेम एक्चुअली गोस टू स्काउट इन दिस वन। यस स्काउट आई मीन काफी जल्दी समझ गए और आई थिंक चुनली के मेमोरी जो है इनके पास वापस आ चुके हैं कि वो स्पीड को कैसे यूटिलाइज करना है, और अब देखना ये होगा कि कैसे रिटेलिएट करेंगे स्काउट। हम ये थक की तरफ से जो एक चीज होती है वो समझ चुके हैं कि स्काउट के लिए डायरेक्शन चेंज करना थोड़ा सा एक इरिटेटिंग चीज रहता है, ये देखिए क्योंकि उसको डायरेक्शन चेंज करने में हल्का सा 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है और थक उसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमेशा कूद के दूसरी साइड जाने की कोशिश रहती है। Deciding in the best ways कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाला राउंड भी स्काउट अपने हिस्से में निकाल सकते हैं, बट you can never underestimate thug in these kind of scenarios। I mean, हमको पता है पहला गेम उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से निकाला, लेकिन स्काउट still doing good, still doing amazing out there, लेकिन उनको भी हल्का सा यहाँ पर करारा प्रहार पड़ा था। अब टक के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बहुत ज्यादा हो चुकी है, बहुत क्लोज ये गेम जाता हुआ, बहुत ज्यादा क्लोज सिचुएशंस के अंदर यहाँ पर ये गेम पहुंच चुका है, बट एज ऑफ नाउ इफ यू जस्ट लुकिंग एट ऑल द सिनेरियोस, आई मीन इट्स जस्ट वन थिंग, थक को देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पर ये निकालते हैं अपने लिए सब कुछ। डेफिनेटली आई मीन ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है, थक यहाँ पे एक ग्रैपल के लिए जाते हैं, स्काउट की एचपी ले ली, ओह स्काउट व्हाट इज दैट? I mean that is the beauty of having V trigger। वहाँ पे स्काउट ने जो एक V trigger एक्टिवेट उनका अगर आप बाहर देखते हैं, नहीं थक का V trigger एक्टिव था, बट डक करते टाइम जो एक लो किक होता है, आई मीन ईवो मोमेंट 37 आपको याद हो, वो आइकॉनिक इसलिए था कि आपको मल्टीपल हिट्स पैरी करने होते हैं और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, वो लास्ट हिट वहाँ पे कनेक्ट हुआ बट बहुत ही क्लोज, एंड थक आप डेफिनेटली गेम खेले, आपको क्या आइडिया है मैं बोलूंगा क्या कर रहा है। Thug knows about quite a lot of things in this one अगर मैं बोलना चाहूँ। अब देखते हैं अगले गेम में क्या चीज होती है, आप देख सकते हैं स्टन यहाँ पर किया जरूर था, लेकिन अगले गेम में यहाँ पर स्काउट वापस से अपना डोमिनेंस असर्ट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट दिस गेम कैन एक्चुअली गो टू देम द वे इट इज एक्चुअली स्टार्टिंग अप विद एवरीथिंग, और ये वाला गेम आराम से अगर हो तो स्काउट अपने हिस्से में बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या पैरी सही तरीके से हो पाएगा, उससे बहुत मुश्किल है यहाँ पर थक के लिए, एंड देयर इट इज द गेम एक्चुअली आई वुड से दिस वाज एन इजी वन फॉर स्काउट। Yeah, definitely. I mean, एक dominating performance यही होता है ना, उन्होंने कहा था थोड़े मैचेस लगेंगे मैच समझने के लिए, गेम समझने के लिए, और अब आई थिंक वो समझ ही चुके हैं कि उनका कैरेक्टर कैसे खेलना और सामने थक जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। साइड चेंज, एक अच्छा एंटी एयर आता हुआ, और थक के डैशेस वो हमेशा ऑन पॉइंट, थक के डैशेस बहुत बेहतरीन तरीके से जा जरूर है, लेकिन वही बात आती है जब तक डैशेस के ऊपर रिलाई करते हैं तब वो तब वो कैमरे से बहुत अच्छे अपने लिए शॉट्स बनाते हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने इनके कैम्स भी देखे थे और अब ऐसा लग रहा है कि गेम फेसेस आपको देखने को मिले दोनों की तरफ से। now they are properly focused with everything, क्योंकि अब ये बात आती है पहले 10 तक की जो रेस है वो इनको बनानी पड़ेगी, लेकिन इस सब के बीच में अब मुश्किलें हो चुकी है थक के लिए वापस से, बट स्काउट को भी उतनी ही मुश्किलें निकालते हुए पहले करने की कोशिश थी लेकिन नहीं हो पाया, और वापस से थक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, एक और बेहतरीन जैब अगर यहाँ पर जाता है, एयर किक बेहतरीन तरीके से गई थी, बट एक फाइनलाइज, एंड देयर इट इज स्काउट, स्काउट्स लुकिंग अमेजिंग विद एवरीथिंग। जी हाँ, काफी जल्दी ये समझ चुके हैं चुनली के इनपुट्स वगैरह को, और अपने ओपोनेंट को भी काफी जल्दी से रीड करना शुरू कर लिया है। स्काउट कैसा राउंड रहे आपके ये वाले चुनली के साथ? कैरेक्टर थोड़ा एक पहला राउंड समझने में लग गया कि हाँ उसका मूव्स कौन सा किधर लग रहा है, तो फिर समझ में कौन से बटन से क्या कॉम्बो से, तो समझ वैसा शॉट्स पे ले रहा था मैं। जी हाँ, थक की तरफ से भी आई मीन जब नहीं ये वाला स्टार्ट तो हुआ अच्छा था, खेला। थक आपने भी काफी बेहतरीन शुरुआत करी थी कैमी के साथ, जब सीधा आप स्लाइड्स मारे जा रहे थे और आपको समझ आ गया था कि वो एक जो स्पिन किक का कॉम्बो है और आप स्पैम कर रहे थे, तो इसका भी जो एक किक का कॉम्बो है ना स्काउट, जो तो ऐसे जो एकदम सीधा एक बार में 6 किक कॉम्बो है, वो वाला फंस जाता है, उसको डॉज करना देखना होगा कैसे डॉज करना है उसका पैरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कसम से मेरे को लिटरली आइडिया नहीं था, मैं देखा हाँ, ये तो आया वही भाई बोलता ना, एक बार दो बार बटन दबाता फिर पता चल जाता है ये है, तो उसको स्पैम करते रहो।
बोला भाई क्या मार अरे रहा वो है गलत ही सीन होता है। उसका पैरी बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, जो भी चीज बन रही है। लेकिन अब मैं एक ही चीज जानना चाहूंगा कि थक से कि अब थक करना क्या है? लाइक स्काउट का देख लिया, अब क्या करना है? लाइक क्या लगता है कि किस तरीके से हराया जा सकता है? कोई नया कैरेक्टर या फिर सेम कैरेक्टर के साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज है समथिंग? अरे हम रैंडम दबाया, हमको फिर से चुनने मिल गया। भाई मुझे बता इसमें वी ट्रिगर यूज कैसे करते हैं भाई? मैं अच्छा, भूल गया। वी ट्रिगर के लिए R1 और R1 प्लस R2 R2 एक साथ। हाँ। बस उसके R1 बाद R2 क्या करना exactly. समझ नहीं आया। उसके उसका बाद पावर बढ़ जाता है बेसिकली। तो थोड़ा ऐसा सा कुछ आपके मूव नहीं, ऐसा advantage कुछ रहता है। फायर वाला टाइप का ड्रैगन वैगन निकल के मार दे, ऐसा कुछ वो नहीं? कैरेक्टर स्पेसिफिक आपके Yeah, पूछ रहे थे that वी that ट्रिगर you're की thinking बात। of a different character or something. Well, अगला मैच यहाँ पर शुरू होता हुआ। अब देखते हैं इस मैच में क्या चीज बनती है। हम इन कैरेक्टर्स की तो बात कर रहे थे, जैसे तक ने बोला रैंडम चूज किया था, बट स्टिल इसके अंदर भी उनके लिए दिक्कतें थोड़ी सी हो चुकी थी। चुनली यहाँ पर वापस से हाउ इट जस्ट कम्स अप एंड चुनली वर्सेस कैमी, दैट्स द सिचुएशन जो यहाँ पर चलने वाली है। लेकिन अब बात ही आती है, शुरुआत यहाँ पर थग किस तरीके से निकालते हैं। सेम गोज फॉर स्काउट एज वेल। डेफिनेटली आई मीन अच्छी ओपनिंग आपको एक अच्छी लीड दे देगी, बट फिर से वही मैचअप यहाँ पे। और जैसा आई मीन जब आप गेम नहीं खेल रहे होते तो कैरेक्टर्स को समझना बहुत मुश्किल होता है। और ये एक जो चुनली का ये किक्स का एक्सप्लॉइट है, इसको आप स्पैम करके काफी मैचेस निकाल सकते हैं अगर आप साइड स्विच करने लग जाए तो। क्योंकि थक की ये देखिए ये स्ट्रैटेजी रहती है, अब यहाँ से ऑप्शंस क्या रहते हैं थक के पास, वो जब साइड स्वैप करने के बाद ही कैन गो फॉर अ ग्रैब और वहां से वो कॉम्बो अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थ्रो कमांड थ्रो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद वी ट्रिगर भी अवेलेबल है, EX बार अवेलेबल है, काफी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। बट वो तब आते हैं आपको जब आप गेम बहुत लंबे टाइम से खेल रहे हैं। अभी के लिए एक बेसिक जो सेटअप है वो तो यहाँ पे थक ने फिगर आउट कर लिया, और स्काउट ने उनसे बेहतर फिगर आउट कर लिया कि थकनेस वो किक्स ही है, वो सीधी लाते जो सीधा पहले मुंह पे फिर छाती पे फिर पेट पे जाती है, उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। I mean that's not just giving you one hit point. वो आपको ये देखिए काफी सारे हिट पॉइंट्स इकट्ठे दे रहे हैं। 5 हिट पॉइंट्स लास्ट टाइम ऑब्वियसली मिले जरूर है, तो वो एक चीज बन जाती है और उसी के बेहतरीन तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज करें। आप देखिए 6 हिट पॉइंट्स यहाँ पर इस वाले अटैक के अंदर निकाल कर लेकर गए हैं स्काउट, और अब वो काफी बेहतरीन तरीके से अपनी हेल्थ नहीं जाने दे रहे हैं। एंड आई वुड से यहाँ पर वी ट्रिगर्स यूज कर सकते हैं थक, लेकिन देखेंगे कि उसके बाद क्या करना है। वही जो स्ट्रेटेजी रहती है कि उसके बाद किस तरीके से स्ट्रेच आउट करना अपना गेम प्ले, वो थोड़ी सी मुश्किलें यहाँ पर बन सकती है। लेकिन इन सबके बीच में स्काउट बहुत बेहतरीन तरीके से गेम वापस से अपना बनाते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड्स जहां पर स्काउट अपने हिस्से में गेम लेकर जाएंगे। एंड देयर इट इज, स्काउट वंस अगेन गोइंग फॉर अ गुड वन। ये काफी ज्यादा अच्छे से आई मीन हर एक मैच के साथ और ज्यादा कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। चलिए तक आपको एक और टिप मैं देने वाला हूँ। आपने एक जो किक्स थी स्काउट की तरफ से जो आ रही थी चुनली की तरफ से, उनको काउंटर करने के लिए आपने सोच आपकी बहुत सही थी कि आप जंप करके दूसरी साइड जा रहे थे स्विच करने के लिए जब उनका एनिमेशन स्टार्ट होता था। बट अगर मैं इससे डॉज भी करूं, अगर मैं इसके ऑपोजिट साइड अगर अपना उसको पीछे करूं तो भी तो होना चाहिए। यस, अब डाउन बैक हो नहीं रहा एग्जैक्टली। वो तो मैं समझा कि अगर हम लोग लाइक इसका डॉज का वो है ना कि आप अपने एनालॉग स्टिक को मूव करो। यस, अब पीछे करके आपको होल्ड करके रखना होता है उसे। बट मैं दूसरी चीज की बात करूं, आप जंप करके जब दूसरी साइड चले जाते हैं ना, वो चीज आप बार बार कर रहे थे। दूसरी साइड जाने के बाद उनका एनिमेशन चल रहा होता है, आप उस टाइम पे यू कैन गो फॉर आपका मीडियम पंच और मीडियम किक। आई मीन आपका ट्राइंगल और सर्कल आप एक साथ दबाएंगे तो वो ग्रैब के लिए चले जाता है। ग्रैब के साथ आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। And that I would say would change quite a lot of things. Like जहां पर obviously वहां पर रहता है स्काउट को बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है जब वो किक्स मार देते हैं, लेकिन अदरवाइज थक के लिए दिक्कत हो जाएगी। थक बाद में उनके लिए दिक्कतें कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सेम सिलेक्शन, आई वुड से कि अब सेम सिलेक्शन पर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि स्काउट शायद चुनली पर ही वापस से जाना चाहेंगे। स्काउट के ऊपर एक हल्की सी हंसी आ रही है चेहरे पे, वो इसी चीज पे जा रही है कि हाँ वो उस पे कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। मैंने चुनली को आप उनका जो 10 गेम प्रैक्टिस करके आए नहीं, मैं बोला था चुनली को ही चला हुआ है, इसका सारा प्रैक्टिस निकलेगा भाई। ये जबरदस्ती का प्रैक्टिस भाई, चुनली का प्रैक्टिस है और चुनली ही चुन लिया इन्होंने स्काउट ने पूरी। वो पिक काफी ओपी सा लग रही है स्काउट के लिए। हाँ काफी अच्छी 4-1 का। से हम ये था कि फर्स्ट टू 10 की फाइट थी, उसपे 4-1 का स्कोर लाइन अभी के लिए चल रहा है। अब देखना चाहूंगा कि ये 5-1 होता है या 4-2। बिकॉज़ अगर 4-2 भी होता तो ये होगा कि हाँ थक तब भी एक प्रॉपर फाइट देने के लिए पूरा तत्पर। ओके यस, लेट्स गो आ चुके हैं हमने। मतलब लेट्स सी यहाँ पे
थक जो है किस तरह से रिएक्ट करेंगे इस केन वर्सेस चुनली। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट ईवो मोमेंट 37। आपको यहाँ पे ईवो मोमेंट 37 तो नहीं, यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। आई मीन प्लेयर्स आर स्टिल लर्निंग, सबकी कोशिश कर रहे हैं। But still, yes, Johnny, but still, let's just go for Evo Moment KO Fight Night. Evo Moment KO Fight Night. यहाँ पर हमें एक Evo Moment KO Fight Night चाहिए। चुनली ने काफी बेहतरीन तरीके से शुरुआत करी है। Scout once again. Alright, so this is I would say how it just starts. And उसमें भी केन जीता था। अब देखते हैं यहाँ पर केन किस तरीके से ऑब्वियसली अपना गेम प्ले बना पाते हैं। Well, so far I would say it's looking decent out there. लेकिन दिक्कत यही होगी कोई अपना V trigger इस्तेमाल करना शुरू करेगा नहीं, और यहाँ पर किक्स काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। पहले कोई हिट नहीं निकाल पाए, but let's see now when it just comes up, going for the V trigger and going for a good one. लेकिन यहाँ पर कमबैक की बारी हो सकती है अगर बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर तक very low on HP, there he goes down. थग वो फायरबॉल्स बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। अगर वो फायरबॉल्स का इनपुट वो स्पैम करने लग जाए तो आई थिंक नए प्लेयर्स जैसे स्काउट और थग दोनों ही पहली बार खेल रहे हैं, जब आप नए होते हैं वो फायरबॉल्स काफ़ी ज़्यादा अनॉइंग होते हैं क्योंकि आपकी मूवमेंट्स ऑन टाइम नहीं होती, क्योंकि हर बार आप जंप करके डॉज करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें नए जब आप स्टार्ट करते हैं तब करना मुश्किल होता है। तो यहाँ थग उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी के लिए देखिए जैब्स के लिए अपने जा रहे हैं और आई मीन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर वो पंचेस तो कनेक्ट नहीं होगी। डिस्टेंस क्लोज करने की कोशिश काफी अच्छे से कोशिश कर रहा है, बट वही दिक्कत हो रही है क्योंकि जैसे ही पास पहुंचते हैं स्काउट की तरफ से वो लाते आ जाती है जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये देखिए आप देखिए सीधा 4 हिट एक बार में लेकर जाते हो। यहाँ पर काफी अच्छा ऑब्वियसली पैरी करने की कोशिश थी, और ये राउंड अगर निकालते हैं वो 5 गोल्डन अपने लिए इकट्ठा कर देंगे, खड़ा कर देंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें स्काउट की हेल्थ थक की हेल्थ काइंड ऑफ सिमिलर थी, लेकिन अब आती है बारी उन लातों की, और वो लातें यहाँ पर बहुत बेहतरीन पड़ रही है। ही माइट जस्ट एंड इट विद दिस। आई मीन जिस तरीके से ये जा रहे हैं एंड काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर लोअर चाप मारने की कोशिश की, बट एट द एंड यही लातें एग्जैक्टली यही एक अच्छी एंडिंग निकालती है। और स्काउट एक और बार चुनली, आई वुड से चुनली इज लाइक द गॉड कैरेक्टर फॉर स्काउट राइट नाउ। कुछ भी आ जाए स्काउट के अगेंस्ट वो नहीं हारने वाले। चुनली के आगे तो नहीं, बट थक यहाँ पे ये चुनली इज फास्ट, ये बात सही है। मतलब आई थॉट की स्पीड ऐसा इतना गेम स्टार्ट हो गया ऑलरेडी ऑलराइट, सो दे डोंट वांट अ टाइम टू रेस्ट। मैं यही बोलना चाहूंगा जिस तरीके से स्काउट ने जब तक थक को पता चला गेम स्टार्ट हो गया, स्काउट ने ऑलरेडी वहां पर मुक्के मारने शुरू कर दिए थे। well, हमें भी नहीं पता चला था कि मैच यहाँ पे स्टार्ट हो गया। हम भी यही चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी चीजें हो रही है, बट ऑल राइट थक अगर ये इनपुट इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा इनको फील हुआ होगा इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था, वो फायर अपर कट के लिए, और तात्सु एक और यहाँ पर परफेक्टली कनेक्ट होता हुआ। तात्सु के साथ आप काफी ज्यादा डैमेज अपने ओपोनेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट हेवी किक्स आती थी, काफी अच्छा एड ऑल ऑफ अ सडन थक यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस ले रहे हैं। स्काउट साइड स्विच करने की कोशिश, बट फिर से वही वो किक्स जो है वो बहुत डेडली साबित हो रही है। लेकिन अब तक एक ही चीज के ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हो काफी बेहतरीन तरीके से वो डैमेज करने की कोशिश थी, और साइड वो एक ही साइड पर रहना चाहते थे, बट अभी के जब वापस उन्होंने साइड चेंज कर ये किक्स आई वुड से और फायरबॉल काफी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट होता है। सेम एचपी पर ऑलमोस्ट दो आ चुके हैं, 55 सेकंड्स ऑन द क्लॉक। लेकिन अब स्काउट के लिए मुश्किल हो सकती है, वापस से किक्स और फायरबॉल्स के ऊपर जा रहे हैं, एक और बार किक करने की कोशिश यहाँ पर और बेहतरीन तरीके से कनेक्ट होती है। ये गेम तक अपने हिस्से में निकालते हुए जी, और काफी बेहतरीन तरीके से इन्होंने निकाला। आई मीन शुरुआत स्काउट ने ली थी फर्स्ट ब्लड के साथ, बट उसके बाद जो चीजें लेट्स सी कि आप गैप रखते हैं अपनी वो स्पिनिंग किक के साथ, आपका तात्सु आपको एक कॉर्नर में ले जाने की अपने ओपोनेंट को अपॉर्चुनिटी देता है। ये देखिए गैप क्लोजिंग प्लस डैमेज, और वो हाई डैमेज जो होता है उसको अगर आप लो आके ब्लॉक भी कर लेते हैं तो उसके बाद सीधा वो एक लो स्वीप के लिए जाते हैं जहाँ पे ट्रेड निकालते हैं। वंस अगेन फिर से आई थिंक तात्सु मारना अब तक ऑलमोस्ट फिगर आउट कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा बार उसे एग्जीक्यूट कर लिया है। एग्जैक्टली काफी बार इन्होंने यूटिलाइज किया। लास्ट मैच में तो मेरे ख्याल से इनके जीत का मेजर श्रेय उस अटैक को ही जाएगा तात्सु के यहाँ पर, लेकिन चुनली किक्स भी यहाँ पर कम नहीं है। एंड आई वुड से ये वाला राउंड स्काउट अपने हिस्से में लेकर जा सकते हैं, इनको वापस से बस वही करना है, एक सेफ डिस्टेंस बनाकर किक्स वहां पर देते रहना है, एंड ही इज ट्राइंग फॉर इट। एक काउंटर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर निकाला जरूर है, लेकिन अब देखते हैं कम एचपी में क्या कमाल यहाँ पर थक कोई निकाल पाएंगे। ही इज वेटिंग फॉर, ही इज ट्राइंग टू गो फॉर इट। एक बहुत बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर करने की कोशिश, लेकिन उसके बीच में कॉट ऑफ खुद हो गए, एंड आई वुड से दिस राउंड माइट जस्ट एक्चुअली गो टू थक टू स्काउट सॉरी व्हाट कंफर्ट में, एंड थक के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। 1-1 का स्कोर लाइन दोनों इकट्ठे कर चुके हैं इस राउंड के लिए। वेल यस 1-1 का इक्वलाइज हो गया। मेरे को अभी एक चीज रियलाइज हुई, मैंने एक चीज तक गलत बताया थी कि ग्रैब्स के लिए जो मैंने इनको इनपुट बताया ग्रैब्स, दैट्स द स्पिनिंग किक वाला ग्रैब्स के लिए। Oh, so you said yeah, the one that you told about the triangle and yeah, the medium budget उसकी जगह स्क्वायर और एक्स करना है इन लोगों को ग्रैब के लिए।
ट्रायंगल और सर्कल से समथिंग else happens. थक जरूर मैं कुछ श्लोक जरूर यहाँ पर देना चाहेंगे आपको, उसके बारे में बाद में, खैर उसके बारे में बात हम करेंगे। बट एज ऑफ नाउ लेट्स सी ये गेम के अंदर ये वाला राउंड कौन निकालता है, कौन सा डिसाइडर बन जाएगा। और ये डिसाइडर राउंड यहाँ पर ऑब्वियसली नंबर्स एडवांटेज किसी ना किसी को दे सकता है, या फिर तक जो कमबैक उन्होंने निकाला है वो कितना आगे लेकर जाएगा। बट जल्दी नॉट स्टॉपिंग एट ऑल, नॉट एट ऑल, विद ऑल द बेस एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। लुक एट दिस वंस अगेन, ओह लॉर्ड दिस वाज अमेजिंग। एक फायर अपरकट निकल कर आता है उनके लिए। क्या ये वापस से कोई सिचुएशन यहाँ पर अपने से लेकर जा सकता है? ही इज गोइंग फॉर इट, बट क्या गेम कमबैक निकाल पाएंगे? नॉट एट ऑल। 5 hits and the game goes to Scout. Oh my god. Yes, but बहुत ज्यादा क्लोज। हाँ, एंड बैटल बहुत ज्यादा क्लोज था ये मैच। भाई मजा आया भाई, ये वाला सॉरी ये वाला में तो अलग ही मजा आया। मैं बोला था आपको बाय द वे पहले जॉनी कुछ बोले, मैं एक बात बताऊंगा। थग आपको जॉनी ने एक बात बहुत गलत बता रखी थी, उसके कारण आप हार रहे थे, आप ये बहाना मार सकते हो। ट्रायंगल और सर्कल से देयर इज समथिंग एल्स। ग्रैब के लिए यू हैव टू गो लाइट ट्रायंगल एंड स्क्वायर। यस, आई गेस नो ट्रायंगल एंड स्क्वायर, एक्स ट्रायंगल एंड सर्कल, एक्स एंड स्क्वायर आपको प्रेस करना है। यस ठीक है, बेटा, बट आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ एवरी डिफरेंट वो है ना, लाइक कंट्रोल सेटिंग है। यस, बट ठीक है, इट्स गुड एक्सप्लोरिंग। मतलब अगर आप बटन स्मैश भी करते हो तो कुछ बीच बीच में जो होता है ना, वो सब में अलग है। फायर अपरकट जो आया था फाइनल राउंड में, फायर अपरकट जो आया था 1 सेकंड लगा था कि गेम पूरा स्काउट के पास चला गया। स्काउट आपका क्या रिएक्शन था जब एक तो फायर अपरकट अरे आया नहीं, और उसके तात्सुस पड़े? मैं ऐसा फिगर आउट कर रहा था कि मेरे को इसमें बताया ना, एक मूव है इसमें जो लोअर किक मारता है, फिर एक हाई किक मारता है, फिर मैं अपना कॉम्बो यूज करना चाहता हूँ। मेरे को वो तीनों को लाइन अप करना है, एक लोअर, एक अपर, फिर एक कॉम्बिनेशन, फिर पंच। बट वो चीज में सीक्वेंस नहीं गिर रहा है। वो क्या हो रहा है, 2 किक चले जा रहा है तो थग रीड कर ले रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन रीड नहीं होती चीजें। वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर हम लोगों को क्या करना पहली है? बार खेल रहे हैं कट करना है। डेफिनेटली। बट काफी दबा दे जल्दी Scout। आपने चीजें फिगर आउट की। आपने कहा था 4 गेम, आई थिंक दूसरे मैच के बाद ही हमने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी थी। आप स्ट्रेटजीज पे बिल्ड करनी स्टार्ट कर दी थी आप दोनों ने। थग हाँ, मतलब हर कैरेक्टर एक्सप्लोर करने में मजा है। आई बिलीव मैं रैंडम प्रेस कर रहा हूँ तो अभी ये आया कैन, काफी अच्छा कैरेक्टर लगा मुझे। मैं भी हेवी अटैक से इसके बहुत। अब से मैं भी रैंडम ले रहा हूँ गाइस, तो मैं ओके वेल एक और रैंडम मैच अब हम चुनली छोड़ के देखते हैं क्या। मैं बोलूंगा थक को चुनली लेना चाहिए। मैं बोलूंगा इस बार थक को चुनली लेना चाहिए, और चुनली लेकर के थक का वो देखे थक तू लास्ट में ले लेंगे, इतने गेम तो एंडिंग है। यस, अब मैं थक के साथ सहमत हूँ। चुनली हमने देख लिया, अब और कैरेक्टर्स देखते हैं कि और क्या किसके पास आता बिकॉज़ है। पॉइंट इसकी लोगों को दिखाना है व्हाट दिस गेम एंड इज ऑल स्काउट को अबाउट। एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए। स्काउट ने लास्ट गेम से पहले बोला था कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसमें ड्रैगन निकले। उसको देखो, हलसिंह को कुछ हो गया है। ये वो आ गया है, उमागा था ना उसमें। अच्छा, WWE का उमागा। अपना WWE में जो वो खाता था। मैं चुनली नहीं लिया लीच, वो बुगीमैन था भाई। बुगीमैन उमागा नहीं, उमागा तो अंगूठा मारता था। हाँ, WWE का कुछ भी पूछ लो यहाँ पे, वो चल जाएगा अपने से। WWE तो सबने बचपन में हेलो सबको बहुत हेलो भाई, क्या हुआ? चेनमैन लेके अच्छा, अरे बर्डी आई थॉट ऐसा होता है कि ब्लैंका यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसा। ये कोई फाइट ही नहीं है ब्रो। ये क्या हो भाई? इनके फेसेस देख करके अभी यही चीज समझ में आ रही है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो भयंकर होने वाला है जब भी स्टार्ट होगा सब। कुछ भयंकर हो रहा है मेरे ख्याल से ऑलरेडी। ओ भाई क्या हो रहा है भाई? ये इसका हाथ लंबा भाई ये सब बातें वैसे तो सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ सुन के ठीक ठाक ही लग रहा है जो भी हो रहा है। भाई ये क्या कर रहे हैं? हेलो सुनो, एक बार इसको नचाएगा हम। रुक स्काउट, पीछे भाग। रुक ना, ये देखो ना फुल डांस दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रीट फाइटर अलग लेवल पे आ चुकी है। आई है तो मजा है यही भाई। ये देखो ना, ये क्या है? ये क्या है ब्रो? हमें भी अभी देखना है एक्चुअली। बात ये हम आपको ही देख पा रहे हैं, हम भी देखना चाहेंगे कि ये है क्या एक्चुअली। अब समझा, ये छोटा मारते दूर पहुंचाए थे। अरे अभी मैच चालू नहीं हुआ है अपना, ये ट्रायल चल रहा है अपना। अरे रुकना, मैं भी तो समझ रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी सुनने को मिली है जो मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें नहीं सुननी चाहिए थी। मैच में क्या होगा मैं ये जरूर जानने के लिए उत्सुक रहूंगा। ओ भाई 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 भाई, क्या हुआ? सब मेरे को नहीं पता, कुछ दबाया भाई। मेरा बंदा खाना वाना खा बीच में खेलते हैं। मैच के बीच में लंच ब्रेक। Things have actually changed. That escalated quickly. मजाक में क्यों दे दिया?
भाई ये केओ होना ही है, उसका शरीर में जान नहीं है। वो देख उसको बैठ गया। भाई उससे बैठ जाएगा तो मर जाएगा मेरा कैरेक्टर। ओ भाई वो ये इसको कुछ हुआ, नशा हुआ भाई, भाई गलत नशे भाई। ओ भाई हम प्रोडक्शन से दरखास्त करेंगे कृपया हमें भी दिखाया जाए, हम भी उस चीज को देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। परंतु जो भी चीजें यहाँ पर चल रही है, लाइक आप एक बात सोचो जॉनी, एक बात सोचने वाली है, जो इनका ऑब्वियसली फेस एक्सप्रेशंस निकल कर आया, दैट्स द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट दैट आई वुड से एवरीवन जस्ट वेट फॉर व्हेन इट कम्स टू द फाइटिंग गेम्स, बिकॉज़ फाइटिंग गेम्स हाँ थोड़ी सी क्विक होती हैं, बट उन क्विक गेम्स में भी जो एड्रेनलिन रश निकल कर आता है ना गेम्स के बीच में, दैट्स द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट आई वुड से जो बिल्ड अप करता है पूरा। सिर्फ एड्रेनलिन रश नहीं, आई मीन हमारा जो गेस्ट है देखिए कितना ज्यादा फन होता है। आई मीन आप हारे अभी तो हाँ, अभी तो दोनों सीरियस हैं, अभी दोनों सीरियस हैं, अभी दोनों सीरियस हो गए क्योंकि आई थिंक समथिंग इंटेंस इज गोइंग ऑन राइट नाउ। ये क्या था? हेलो एग्जैक्टली समथिंग इंटेंस इज गोइंग ऑन, लेकिन उसके बाद स्काउट एक ही बात बोलेगा, मेरा बंदा खाना खा रहा है, मैं खुश हूं। क्या चिंगारी मार रहे तुम? अरे खा और दोनों खाना वाना खा रहा है भाई। अच्छा ये ट्रायल राउंड था शायद। उसको उसकी शक्ल तो देखिए एक बार। बट चल अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ट्रायल राउंड है या जो भी जीत कौन रहा है? मैं जीत गया स्काउट। ओह अरे एंड बैटल कर दे। अच्छा अच्छा बट चल बट अलग ही कुछ कैरेक्टर है भाई, दोनों ही अजीब सा कैरेक्टर था। भाई इसका कैरेक्टर पता है, जहाँ खड़ा हुआ था हाथ से इलास्टिक बना के फेंक रहा दूर तक। हाँ स्काउट। एक मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे तक, स्ट्रेची डाल सिम और बर्डी आई थिंक। हाँ एक बहुत पतला सा होगा जो हाथ वाथ और पैर लंबे कर रहा होगा बहुत ज्यादा और आग ऐसे मुंह से फेंक रहा होगा, और दूसरा इज गोना बी अ बिग फैट वन और चेन ऐसे घुमाते हुए आया होगा। डाल सिम बर्डी एग्जैक्टली। वो भाई वो तो भाई मेरा बंदा इसको मार रहा है और खाना खा रहा है, भाई वो तो बट चल थक मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक गेम खेलने से पहले और अभी गेम खेलते हुए जैसे जैसे ट्रांजिशन हो रही है, लाइक हाउ आर यू एंजॉयिंग द सिनेरियो दैट्स जस्ट बिल्डिंग अप विद एवरीथिंग? आई बिलीव बहुत एक्सप्लोर करने का है, जितना मुझे पता है इस गेम में कैंपेन मोड भी है जिसमें यू कैन ओपन अप डिफरेंट कैरेक्टर। मुझे जी इन लोग के साथ भी खेलना है, सो आई थिंक लेवल अप करना पड़ेगा। कैरेक्टर्स अनलॉक करने के लिए यू हैव टू बाय द पैक्स ऑनलाइन। वो चीजें परचेस करनी होती है, एक पास आता है स्काउट इज लाइक अभी अपग्रेड में यू गेट एवरीथिंग। गाइस सॉरी टू इंटरप्ट, एक बात बताता हूं आप लोग को, अगर जितने भी हम लोग ये फाइटिंग गेम्स के एकदम फैन बॉयज है, तो आई थिंक जंप फोर्स आपने सुना होगा गेम, जिसमें अपने को एनिमे और सारे गेम्स के एक टाइप के क्रॉसओवर मिलते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट गेम्स मेरे को जो लगता है, क्योंकि आप सोच लो एक जगह नारुतो एक जगह गोकू है, दोनों लड़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा कॉम्बिनेशन क्या चाहिए आपको? I mean, exactly. वो गेम मेरा बहुत बहुत ज्यादा मन था वो खेलने का, बट मेरा पीसी बहुत खराब है तो मैं नहीं खेल सकता। You should go for PS4. Trust PS5. PS5 is what I'm waiting for. PS5 और obviously 3080 is what I'm waiting for. उसके बाद ही build up कराएंगे अगर कुछ होता है तो। Trust me, get PS5, you're good to go. Yeah. कोशिश रहेगी, और वो गेम डेफिनेटली मैंने मिस कर दी थी, बट अगर खेलने को मिला तो अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में डेफिनेटली मैं जंप फोर्स ट्राई करना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि सबकी फैंटेसी रहती है। फिर जॉनी एक चीज करेंगे अपन लोग, जॉनी एक चीज करेंगे, यू एंड मी वर्सेस थग एंड स्काउट, ये चीज करेंगे जब अपना ऑब्वियसली पूरा सब कुछ बिल्डअप हो जाएगा, अपन करेंगे कास्टर्स वर्सेस प्लेयर्स काइंड ऑफ सिनेरियो। प्लीज जॉनी बी ऑन माय साइड बिकॉज़ आई नो यू प्ले गुड। मैं जंप फोर्स नहीं खेलता, स्काउट ने मेरे से ज्यादा खेली है, स्काउट के पास बहुत एक्सपीरियंस है, स्काउट मारेंगे हम लोगों को। Yeah, got it. Yeah, then scout is on my team, that's all. वैसे व्हाट्स द स्कोर? 5-1 आई गेस। 5-1 is the score line right now. 5-1 overall score चल रहा था। I mean, well, see, it's all for fun. Who's counting? It's all for fun. 6-1. अरे unable to find. 6-1 होते हुए I would say one thing, who's counting? It's all out there for fun. Yes, exactly. I mean, count एक प्रोडक्शन काउंट रख रही है जो स्क्रीन के ऊपर आपका काउंटर आ जाता है, बट उसके अलावा हम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं, आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो playing for the first time, it's fun. And it's a very good scenario. I mean, it's a very good transition मैं बोलना चाहूँगा। अभी जब ट्रायल रन चल रहा था तो हम लोग के फेस एक्सप्रेशन वाले थे, and I'm pretty sure you guys are having a lot of fun. हाँ मतलब it's fun, you know, जब आप स्पेशली नया कैरेक्टर, I think it's definitely fun when you get to। अभी स्काउट जब मुंह से आग फेंका मेरे पे, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ना, थोड़ी पता था आग से आग फेंक देगा। I would say स्काउट के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। हाँ चुनली का तो मेरे को पता है कि चुनली इज लाइक फास्ट एंड शी रेडी कर लिया ब्रो मैंने। ऑप्शन दबा स्काउट। मैं कर लिया हूँ, तू ही नहीं है रेडी। It's all gonna start really soon. Johnny once again, वही सब चीजें वापस से यहाँ पे होने वाली है। चल रैंडम दबाते हैं,
ठीक है? Okay, we'll Okay. get a chance to नहीं select the character. नो Random रखते हैं नहीं random. रैंडम मत ले, जो कैरेक्टर यूज नहीं किया वो यूज करते हैं, चल। अच्छा ठीक है। हाँ 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 तो वही चीज कैन इनके लिए हो भी गया, सरप्राइज सुन फैक्टर सुन, बन जाएगा। तू मेरे को एक गेम खेलते, तू मेरे को कैरेक्टर दे, मैं तेरे को कैरेक्टर देता हूँ, चल। ठीक है, डन। ओके, यू गो फर्स्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज। चलिए चलिए अब देखते चल हैं। तू कैरेक्टर दे। तो मैं मेरे साइड से दे रहा हूँ, लाइक आई हाँ एम ऑन द लेफ्ट। राशिद ले ले तू। राशिद, ये राशिद ओके था ठीक है। जिसने अब मैं बोलता हूँ, तू ये ले बॉटम से एक्सट्रीम राइट, बॉटम से एक्सट्रीम राइट। चश्मा वाला, फैंग चश्मा वाला। हाँ वो टोपी फैंग पहना फैंग ब्लैक कलर का, हाँ वो ले चश्मे ले। और टोपी ले लिया, चलो। आ, Let's जॉनी का see, भी मैं फेस गेम में एक्सप्रेशन देख देखना के लग रहा है चाहूंगा। पॉइजन जॉनी हेलो। खुद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। यस, मैं गेम में देखना चाहूंगा कौन सा कैरेक्टर्स उन्होंने पिक किए हैं। राशिद एंड फैंग इज आर व्हाट दे भाई आर इसका अंदर सेइंग फैंग है वो पॉइजन डालता विजर्ड है। टाइप का, विद द गॉगल्स एंड एवरीथिंग। हाँ फुल राइट। कूल लग रहा है। राशिद मैंने रिप्लेस में देखा है, मेरे को आइडिया है, बट फैंग यस हाँ मेटा की अगर बात करें, देयर इज अकूमा हमेशा से स्ट्रॉन्ग आपको दिखता है। बर्डी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जो आई मीन इंडिया के जो बेस्ट प्लेयर है। आपने थोड़ी देर पहले बर्डी खेला था ना था हमारे यस थक का कैरेक्टर बेस्ट तरीके से चल रहा है यहाँ पे। खैर ओह माय गॉड, oh my god, this is really amazing. This is something like a different scenario. ये एक्चुअली हवा का झोंका मार डैमेज बहुत कम मैं बोलूंगा कि था कि यहाँ पर दे पा रहे हैं इन सब चीजों के अंदर, बट स्काउट ही इज लुकिंग गुड। ओह बहुत बहुत भयंकर। आप एक्चुअली एनिमेशंस को यूज कर सकते थे कंफ्यूज करने के लिए। वेल एक चीज बोलना चाहूंगा कि दोनों कैरेक्टर्स जो पिक करे गए हैं, दोनों के दोनों काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। यस Now have a look at this. Have a look at these moves. आप ये moves देखो, सारे बहुत different moves जा रहे हैं जिस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में वही बारी आती है। I would say यहाँ पर थक ने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया अपने सारे moves को। I mean he's just trying to go with the parries and everything, लेकिन Scout अब Scout के पास काफी अच्छे तरीके से चांस आ सकता है। नो डाउट उनकी हेल्थ कम है। ओह I mean, चलो एक्चुअली इसी मूव में आ जाते हैं। जॉनी एक्चुअली इसी मूव में आते हैं। हालांकि नशे यहाँ पर चलाकर बोल रहा है जिस तरीके से यहाँ पर फाइट चल रही है। जी आई मीन काफी ज्यादा हाथ हिलाए जा रहे हैं हवा के ऊपर और yeah he is losing out there pixel by pixel. Okay, that's different, but final round. वेल फाइनल तो है। अच्छा एक चीज बताना चाहूंगा कि अब या स्काउट का राशिद इज अ लिटिल बिट इजियर टू प्ले इन कंपैरिजन टू फैंग। यहाँ पे वो चीज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ बी ट्रिगर ना यूज करें। स्काउट को मैं यही बोलना चाहूंगा, बी ट्रिगर ना लगाए राशिद के ऊपर। हाँ स्काउट आपका वी ट्रिगर एक्चुअली आपकी हेल्थ को पूरी मोबिलाइज करने की कोशिश। फैंग के हिट्स डू इम्पैक्ट दैट आपके अपोनेंट की हेल्थ कम हो जाती है। Oh, over time. Yes. Rashid wins. बाय ये बहुत बहुत डिफरेंट है। different ये है। मैं बोलूंगा हाँ वही चीज, जैसे ऑब्वियसली फैंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज इन इट्स एवरीथिंग। आई मीन राशिद वाज एन ईजियर वन जिस तरीके से, क्योंकि उनके पास सिर्फ अटैक्स और वो अटैक्स के साथ ग्रैपल्स और सब चीजें यूज हो सकती थी, बट फैंग का यूटिलाइजेशन बहुत बहुत डिफरेंट जाता है। जी हाँ, और आई मीन एक नहीं, सवाल फन था फैंग, बट उसका वो एक पार्ट क्या था वो जिससे एक किसी को लग नहीं रहा और वो कुछ 3 सेकंड ले रहा था एनिमेशन का। वो भाई क्या इसका है ये कैरेक्टर हवाई क्या है, ये पर्पल क्या एचपी, करना चाह रहा है? वो पर्पल एचपी करता था, उसके बाद वो ये चीज नहीं, करते हुए भी आपको एक्चुअली अटैक दे रहा था वहां पे। ठग उसकी बात कर रहे हैं।
वो जो हाँ हाथ यार, करके तो वो ऐसे हिलाने ऐसे ना पता नहीं भाई, नागिन डांस कर रहा था ना क्या कर रहा था भाई, गलत ही चीज था। वेल अच्छा, तो फैंग और राशिद दोनों के दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर थे। थक आपका सवाल था स्काउट मेरे से दे, थोड़ी देर इस बार पहले पहले कि तू दे। competitive मेटा मैं अगर बताऊं लोगों को, तो बर्डी काफी अच्छा चलता है। देन कैरन एक बहुत तूले, कैरेक्टर है जो अरे तू काफी देगा ना, खेला तू जाता है, देगा। तो वो दो कैरेक्टर मैं मैं दूं, बोलूंगा काफी ठीक ज्यादा है। एक अच्छे मिस्टर मेटा में हमको एम नजर बिसन आते ले, एम बिसन हैं। बॉटम के मतलब। बट अब कैरेक्टर पिक्स लेट्स सी। भाई वाह भाई, कैरेक्टर्स आर वो लुकिंग टाइमर ही वेरी, चला कुछ गया, भी टाइमर बोलो, ही चला सब गया कुछ भाई, यहाँ पे सही है बहुत भाई। वियर्ड हो चुका है शुरू। मैं फैंग मेरे को मिल गया यार, नहीं चाहिए था मेरे भाई को। एक बार देख ना, कुछ अलग मार के देख मुझे। भाई कमाल फैंग गाइस, देख लिया कमाल, भाई यही मैंने। चीज करनी है भाई ये स्काउट, वी यार, नीड दिस भाई फ्रॉम यू। नशे है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे भाई नशा हो फैंग जाएगा भाई। दिलवा दिया भाई, स्काउट जबरदस्ती कुछ स्काउट और स्काउट दिलवाया अगर था। तू ये हारा, स्काउट अगर तू ये हारा, तेरे को हारेगा जब कैमरा पे आएगा फैंग वाला डांस करना पड़ेगा। बट स्टिल लेट्स सी अब इस वाले राउंड में क्या होता है। स्काउट वर्सेस थग, स्काउट वर्सेस थग यहाँ पर यूज हो रहा है और काफी बेहतरीन। ओह वेल हाँ, स्काउट स्काउट बहुत- देख बहुत लेना अच्छे। प्लीज थोड़ा सा। ऑलराइट लेट्स सी अब यहाँ पर क्या सिचुएशंस बनती है जब थक के ऊपर मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है। जॉनी जॉनी ये इमोट सब कुछ सारा डिफरेंस है, इमोट निकाल कर लेकर आ रहा है मैं बोलूंगा। अभी और एक और चीज कि ओ सोनिक बूम फाइनली एक मारा यहाँ पे थक की तरफ से, जो स्काउट ने डॉज किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बट स्काउट फिर भागने लग गया था वो फनी मूवमेंट के साथ। This is looking amazing. नजर आ रही है। Yes. Oh my god. I mean, एक स्ट्रैटेजी जो स्काउट ने स्टार्टिंग में लगाई थी वो काफी अच्छी थी। अब वापस इमोट नहीं, बट लाइक ऑलराइट लेट्स सी। स्पेस कंट्रोल गाइस, स्पेस कंट्रोल, पीछे रह के खेलिए, इट इज गोइंग टू बी बेटर। I mean, at the end कुछ नहीं होगा। चले गए थे। This is pure. Oh, एयर ग्रैब। oh. This was very good. This was very good the way it happened. लेकिन स्काउट अब एक ही चीज पर आज थक भी। I mean, I would say सबसे ज्यादा फन यहाँ पर फैग ही कर रहा है, कुछ भी बोलो, लेकिन still it just comes out to one thing कि टाइम रन डाउन होने से पहले यहाँ पर सेकंड मैच किस तरीके से थक निकाल पाएंगे। कुछ करके एक्चुअली कुछ करके ही आ रहा है वो पॉइजन टेक डैमेज जो आ रहा था पर्पल हेल्थ जाके। Nash wins. Oh भाई my god. Oh my god. This was a very भाई। different one. भाई मेरा क्या, ये गलत मैंने बंदा क्या था वो, भाई, गलत। मेरा कैरेक्टर परेड कर रहा है भाई। Well, भाई मेरे को लगा वो बंदा हिल रहा है, मैं देख रहा हूँ उसका अटैक है, वो मेरे अरे ये लेकिन कैसा तुमने अटैक वो है? क्यों नहीं किया, वो जो नागिन डांस? वो भाई, वाला भाई, इमोट। स्टार्टिंग में पीछे पीछे हो रहा है, पता है उसका बैक करके ऐसा हाथों पीछे से होकर नाच रहा है भाई बंदा, भाई गलत। अच्छा लेकिन मैं अभी तक अबे जानना यार। चाहूंगा जितने मैचेस हुए हैं आप लोगों के फेवरेट कैरेक्टर कौन से रहे? फैन तो मैं मैं बोलूंगा चुन या ली। फैन फेवरेट हो चुका चुन ली है? भाई, चुन भाई ली। चुन ली। फेवरेट कैरेक्टर आई थिंक कैन जो था ना, कैन हाँ। वो अच्छा था। कैन के मूव्स मुझे काफी पावरफुल लगे। खैर अभी तक तो रहा एक के मूव्स पावरफुल सुन अभी तक जितने भी कैरेक्टर हैं इसके अलावा कुछ खेलेंगे अपने हिसाब से। अरे कुछ अलग ही खेलेंगे, और रात तक तो हम लोग हाँ। अनपैक अनलोड कर लेंगे, कल पूरा का पूरा सेट लेके बैठेंगे, इतना हाँ। कैरेक्टर है वे। मैं यही बोलने वाला था। आज अभी ये शुरुआत है, लेकिन शुरुआत से जब धीरे धीरे आगे जाएंगे ये स्पीड ब्रेकर्स हैं, उसका जो अच्छा एक प्रॉपर स्काउट रोड मिलेगा ना निकाली ले, फिर होगा निकाली शुरू। फटाफट जा, टॉप एक्सट्रीम राइट निकाली ले, मुझे दे फटाफट एक। निकाली के साथ निकाल लिया, ठीक है। निकाली का तूले उसके निकाली का टिप एक लेफ्ट से सेकंड नीचे, बॉटम लेफ्ट से सेकंड, लेफ्ट से सेकंड नीचे, जांगिर। दाढ़ी वाला, उसका दाढ़ी वी वाला। ट्रिगर, उसका वी ट्रिगर लंबा जाता है। हाँ ये स्काउट यू माइट हैव अ फायदा विद वी ट्रिगर, आपको बहुत फायदा होगा वी ट्रिगर यूज करने में निकालेगा, क्योंकि जो थग ने आपको दिया है उसका वी ट्रिगर थोड़ा सा लंबा जाता है, उसका वी ट्रिगर खत्म नहीं होगा।
जल्दी क्या होता है R1 R2 जो R1 R2 से आप दबाते हैं, एक नीचे एक लाल बार होता है ना, वो लाल बार फुल होने के बाद R1 R2 दबाइए, आपके अटैक ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, डैमेज आउटपुट बढ़ जाए, और वो निकाली के पास काफी ज्यादा एक एक्सप्लॉइटेबल उसके किट में रहता है कि खत्म नहीं होता, एक बार ही बहुत आ लंबा गया जाएगा, stays बहुत there. लंबा जाएगा। It stays there, yeah. So मैं यही बोलूंगा, आपने बहुत बड़ी मुश्किल कर दिया था उनको। Oh. All right, when it starts out in the situation, is this blank? What was the name of this character? मैं भूल गया। Zangief character या है वो। ये अंडरटेल वाला टोमस्टोन मारता है कभी-कभी। जी हाँ, पाइल ड्राइवर इनका एक सिग्नेचर Pile ग्रैपल driver। रहता है, और हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया खेलना पसंद करते हैं इसको बहुत ज्यादा। I would The say Dark इनके Lord। अगेंस्ट जब स्टार्टिंग के स्ट्रीट फाइटर्स होती थी, जो अपन लोग 99 in 1 वाले में खेलते होते थे, उसके अंदर इनका और गायल का जो मैच होता, वाज दैट गायल और समथिंग, राइट? उनका और इनका जो मैच होता था, बहुत ट्रेडिशनल मैचेस जाते थे। I mean ट्रेडिशनल मैचेस तो नहीं, बट ये कैरेक्टर सबको इसलिए याद होगा क्योंकि वो हाथ बाहर निकाल के घूमने वाला जो साइकिल लैरिएट उसको बोला जाता है, वो इनका एक काफी आइकॉनिक मूव है। Exactly, वो भी इन्होंने मारा भी था अभी के लिए, बट देखते हैं अब आगे क्या चीज होती है। यहाँ पर अब मुश्किल हो सकती है जब अब आएंगे अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे मूव्स यहाँ पे जो निकालने की बारी आएगी, बट स्काउट की हेल्थ बहुत कम है, उनसे दैट माइट जस्ट चेंज एवरीथिंग। बट यहाँ पर मुश्किल हुई थी, पैरी काफी अच्छे थे, डॉकिया उन्होंने काउंटर अच्छा निकाला, बट एक कोने में ही डाल करके रख दिया है सिचुएशन में। बट इन द सिचुएशन व्हाट्स गोना हैपन, इट्स फेयरली क्लोज, बट ओह माय गॉड, स्काउट विंस दिस वन। काफी ज्यादा इंटेंस मैचेस यहाँ पे चलते हुए दोनों के बीच में, और अब देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पे एक आइडिया तो हो चुका है। ऑलराइट मारने के लिए खिलाया जा रहा है। ऑलराइट, डेम केक एक लो आता हुआ, थग बार ग्रैपल्स के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रेंज एडवांटेज, एक सेकंड, वो जो हिट बॉक्सेस आ रहे हैं काफी ज्यादा बड़े, क्योंकि आपका कैरेक्टर मॉडल बड़ा है, तो यू डेफिनेटली विल हैव अ रेंज एडवांटेज, और उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर रहे हैं थग। It's just changing everything out in this scenario. So आप देखिए यहाँ पर वापस से सेम स्ट्रेटजी पिछले गेम की निकालते हुए स्काउट, और लास्ट गेम यही चीज उनको गेम जिताया था। अच्छा डैमेज स्टार्ट यहाँ पर दे रहे हैं, हम काफी अच्छे सारे शॉट्स यहाँ पर लेकिन आती है बारी की, किस तरीके से पंचेस या फिर किक्स यहाँ पर निकाल पाएंगे, बट थोड़ी सी मुश्किलें अभी भी बन चुकी है। स्काउट उनके पास हेल्थ अच्छा एडवांटेज में था, और थग एक और बार ही जस्ट बाइट्स द डस्ट। ओह ये कैरेक्टर में कुछ है, मतलब अच्छा है जो भी है। हैक से भाई कैरेक्टर। भाई मेरा कैरेक्टर तो वेस्ट था बे। थग ज़ैनगीफ जो आपने कैरेक्टर पिक किया, वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, आई मीन टॉप 2 जो तो है, वो बेस्ट प्लेयर है ना, वो बेसिक आदमी के लिए होना चाहिए ना। नहीं मतलब इट्स लाइक इट्स एक लर्निंग का थोड़ा सा रहता है, बट एक चीज एक इसका कमांड होता है, जैसे हाथ बाहर निकाल के वो घूमना चालू कर देता है, साइकिल। हाँ, वो R1 से होता है, इतना मुझे समझ, L1 से होता है, बट उसके साथ क्या दबाना था वो समझ नहीं आया, तो 2 बार दबाया तो हो गया, बाकी 3 बार यूज किया। थक का एक बार लगा था स्टार्टिंग में, उसके बाद 2 बार वो डॉज हुआ था। हाँ कोई नहीं, आओ अभी देखते हैं वापस। बट स्काउट ने निकल के जो यहाँ पर ऑब्वियसली बी ट्रिगर यूज किया, और उसके बाद फिर मारना शुरू किया 2 राउंड्स बैक पे, और दोनों राउंड्स क्लोज थे, एक्चुअली क्लोज राउंड्स निकाले स्काउट ने, क्लोजेस्ट राउंड्स। जी हाँ, काफी क्लोज तो मैचअप गया ही था हमारा। और अरे मेरा एक्चुअली एक प्रॉब्लम और है, मैं देखा मैं जंप बहुत ज्यादा करता हूँ, तो उसमें एनिमेशन में मैं बहुत बीट खा रहा हूँ। हाँ, वो फ्रेम्स वहाँ पर पीछे रह जाते हैं। हाँ, आप जब लोज के लिए जाते हैं तो वो आपकी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है, बट स्काउट की तरफ से एक चीज बोलना चाहूंगा, वो जो वी ट्रिगर निकाली का था उसको काफी अच्छे से नहीं यूटिलाइज किया। हाँ मतलब जब आती इंस्टेंटली एक्टिवेट एंड परफेक्ट। क्या बचा बताओ। अच्छा कुछ भी लो, कुछ मसल हो यार, कुछ ऐसा लो जो तुम्हें शक्ल से देखने में अच्छा लगे, लेकिन एट द एंड जो हरकतें हो ना वो बहुत अच्छी हो। आर्मी का देखो। Well, okay. Let's see. This is going भाई ये क्या बदमाशी है। स्काउट के ऊपर आए थे, स्काउट क्या खेलेंगे? ओए यार मेरे को आर्मी का दिया है। ओके, थक आप क्या खेलने वाले फिर? भाई मेरे को बर्डी मिल गया। ये खेला है भाई, वो खतरनाक हाथी लिया है भाई। बर्डी वर्सेस चलिए रीमैक पे आखिरी बारी बात करेगा तो मैं। Oh yeah, I actually saw that one. Yes.
और उस टाइम पे Okay. मतलब अयान ही थे जो खेल रहे थे बर्डी, तो अयान हाँ को तो बीट करना बड़ा मुश्किल ही रहता है, बट हाँ ओके वेल एवरीथिंग्स डिफरेंट बट खैर ये चेन की बारी है भाई, क्या यहाँ पर क्या चीज होती है और ये ठीक है जीप निकालेंगे बट क्या Oh my god, बहुत different situation यहाँ पर बन चुकी है. This is going to be a fun one. I'm telling you, this is going to be a very fun one. But the way I would say कि यहाँ पर दिक्कतों में आ रहे हैं, ये chain grapple जो निकालेंगे वो जरूर एक चीज यहाँ पर बदल सकते हैं. But counter अच्छा यहाँ पर निकाला जरूर है स्काउट. जी हाँ, काउंटर काफी अच्छे से निकाला है और एक सिचुएशन रहती है कि अब I mean, अगर आप ऊपर का स्कोर लाइन दे सकते हैं तो 8-2 चल रहा है, स्काउट जीत के बहुत ज्यादा करीब. EX यूज किया यहाँ पे स्काउट ने, बटन स्मैश के साथ चीज फिगर आउट में कर ली, बी ट्रिगर भी ऑलरेडी लगा चुके हैं, तक दिक्कतों में आ चुके हैं थोड़े. ओह नहीं दिक्कत है. Oh my god, oh it's changing everything. एक लड़के पे दो लड़कियां यहाँ पर भारी पड़ते हुए, एक हैंडसम से लड़के पे दो लड़कियां भारी पड़ते हुए यहाँ पर. बड़ी पहले काफी ज्यादा प्रेटी दिखते थे जब इंट्रोड्यूस हुए थे फ्रैंचाइज के अंदर. फिर क्या हुआ? Like did puberty hit him? Did puberty hit him hard or something? That actually Oh yes scout, हम लोग लाइव है, ठीक है? Oh my god, आप दोनों लाइव अब यहाँ पर. विशाल भाई नहीं आया, समझ रहे हैं, हमको पेनल्टी चाहिए लास्ट गेम में जो तुम Johnny, आ गया वो आया इसका. let's just let them speak. I mean, अब बात करनी बंद कर दी तो. हाँ, अब उन्होंने बात करनी बंद कर दी. रुक जाओ. Okay, let them talk. ओ भाई देखा अल्टीमेटली, ये देखो ओए, ये मैं मर गया. भाई भाई को फोन मिला, हम नहीं खेलेगा भाई, ये बदमाशी है भाई, ये क्या हो रहा है, ये दो कैसे ला रहे हैं. पर कैरेक्टर वन साइडेड था यार गाइस. ये क्या है, इसका साइज देखो, मेरा साइज देखो. अच्छा एक चीज मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, थक कह रहे कि स्काउट का कैरेक्टर ब्रोकन था, स्काउट कह रहे कि थक का कैरेक्टर वन साइडेड था. भाई वो स्टील चेयर कहां से है बीच में? WWE वाली स्टील चेयर में कैरेक्टर को मूवमेंट प्ले अगेन दबा दिया भाई. थक उसको क्यों? हेवी ओबेसिटी है, उसको थोड़ा सा भाई वो मेरे को पता है, एक मारता था मेरा हेल्थ गायब. हेलो बड़ी डैमेज आउटपुट बहुत ज्यादा. भाई लिटरली पता है मेरा ऐसा रहा, मैं 3 शॉट मार रहा हूं, उसका 1 शॉट बराबर हो रहा है. मतलब भाई और डिफरेंस कैसे करूं मैं? और प्लस वहां से दो कैरेक्टर्स जब आते हैं, दो कैरेक्टर्स का आना और चीजें बदलता है. पूरा स्काउट राइट लेफ्ट पूरा ओपन कर लेगा आज रात को, कल जब खेलना है तब पूरा वो खेलेगा सारा डिफरेंट. ब्रो गिव मी 5 सेकंड, वॉशरूम जाके आया. अच्छा गेम स्टार्ट होने वाला है, पॉज कर पाओगे? आप डिले कर सकते हैं अपनी साइड से, बस बैक स्टेप करके और हिट ना देके. मतलब अगर मैं ये बोलूंगा अगर चाहे तो थक हल्का सा हिट दे सकते हैं, थक चाहे तो हल्का सा हिट दे सकते हैं स्टार्ट होने के लिए. मारते हैं. एक बार मैं चाहूंगा अगर प्रोडक्शन दिखा सके, एक बार वन साइडेड गेम देखते हैं जिसमें थक पूरा गेम जीत रहा है आराम से, सब कुछ करते हैं. नहीं अरे वन साइड इज मोर डिफिकल्ट. मैं आपको बताऊं क्यों, आप कॉम्बिनेशन बैठाने स्टार्ट कर दोगे, अदरवाइज क्या होता है थोड़ा बटन स्मैश कर लेते हैं तो वो हो जाता है वन साइड में. क्योंकि मैं ट्रेनिंग ग्राउंड देखा अभी जब मेरा अपडेट हो रहा था गेम, तब मैं देखा इट्स डिफिकल्ट, बल्कि इन गेम इट्स बेटर टू एक्सप्लोर. Yeah, that's actually one thing I would say. ये अच्छे तरीके से बताया इन्होंने. But Scout भी जल्दी है. Scout was like मेरे को एक भी सेकंड यहाँ पर मिस नहीं करना. Scout सीधा भागते आए हैं. क्या हुआ? नहीं कुछ. Scout भागते आया सीधा कि मेरे को मिस नहीं करना मैच. अगर मैच शुरू हो गया मेरे को सीधा आना. Scout भागते सीधा. हाँ तो रेडी करो आ जाओ. Okay, मजा आ रहा अब तो. Let's get it started. 8-2 का स्कोर लाइन चल रहा था. बता दूं स्काउट बहुत बड़ी लीड ले चुके हैं अपने लिए. स्काउट तेरा सबसे हेटेड कैरेक्टर खेल, मैं अपना सबसे हेटेड कैरेक्टर खेलता हूं. नहीं अब मेरा चुनली से खेलते आ जाए. इस यार चलो ये वो चुनली से हमको वो हो गया रे. हाँ स्टार्ट. रेडी. ऑप्शन दबा. कुछ ही सेकंड और गेम के अंदर हम जंप इन करेंगे. अब लीड जैसा मैं कह रहा था स्काउट की तरफ बहुत बड़ी है और अब स्काउट ने बता भी दिया है कि ही इज कमिंग बैक विद द चुनली. तो मतलब इसको फिनिश करना हो गया. तो Let's see. अब स्काउट इज लाइक स्काउट पूरा गेम मोड में है कि स्काउट को खत्म करना है. नहीं मेरे को चुनली का खेलना है. वापस ले लीजिए अगर चुनली सामने से आ रही है तो. हाँ चुनली स्कैन करता है. I would say जो पहला विन था थक का वो कैन के थ्रू ही आया था, जब वहां पर ऑब्वियसली बहुत अच्छे फायरबॉल्स का अच्छा यूज यहाँ पर कैन से दिखाया था उन्होंने. प्रेस रेडी. थक रेडी कर. रेडी देखना स्काउट एंड थक स्टार्टेड. नहीं वीरा हाँ एडमिन ही रेडी नहीं थे.
लेट्स गो। I would say ये मे बी फाइनल 2 मैचेस हो सकते हैं जिस तरीके से स्काउट जीत रहे हैं, बिकॉज 8-2 का स्कोर लाइन था, स्काउट ने आराम से बना दिया है। बट लेट्स से थग यहाँ पे कमबैक करते हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में जितने भी मैचेस मैं और जॉनी और कास्ट कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे बहुत कमबैक्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ चुन ले रहा। क्या पेंडिंग है, हम लोग क्या टेस्ट नहीं अरे किया। तू खेल ले ना, तू खेल ले, ये गेम खेल ले, आजा। अरे नहीं, हमको बड़े ट्राई करना है यार। अरे लेना क्या गेम, मैं कुछ ट्राई इसमें, इसलिए खेल ले। तो यहाँ पे कुछ ट्राई करना चाहते हैं। ले लिया। वेगा, ये कौन है? अरे वेगा अच्छा है, वेगा अच्छा है, वेगा इज वेरी बैलेंस्ड। वेगा का रेंज एडवांटेज रहता है उसके नाइफ की वजह से। वेगा का रेंज भाई क्या भाई पागल बना रहे हैं वेगा, ये जो वेगा रेगा क्या है, रेगा बोल रहा हूँ। वेगा हाथ में रेगा चूज चूज करता है, हाँ। बहुत लंबा जाता है। हाँ हाँ मैं उसको देखा हूँ फाइट भाई, वो चाकू को मारता दूर दूर से भाई। गलत है भाई, स्कैमर है। सुन तेरा, तू पाव मत चला, मैं चाकू नहीं चलाऊंगा, ठीक है? वाह लेट्स सी भाई यहाँ मेरे पे स्टार्ट चुका है यहाँ पर सिचुएशन के अंदर, और चुल्ली यूज करने वाले, और अब आती है चाकू की बारी, जिसके लिए ऑब्वियसली डर चुके हैं किसी भी तरीके से कहीं। या क्लॉ विल बी कमिंग आउट देयर, बट लेट्स सी बिकॉज़ चुल्ली के ऊपर उनसे लातों पे भरोसा है या फिर यहाँ पे चाकू पे भरोसा हो। ये हम कुछ नहीं किया ब्रो, इससे मेरा कोई गलती नहीं है। ये क्या कर रहा है? अपने आप हो रहा है। वो ये क्या कर रहा है? हेलो, वेरी गुड, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड स्टार्ट। दैट इज अ गुड स्टार्ट, सीधा ग्रैपल पे जाते हुए यहाँ पे तक। एग्जैक्टली ये आ गया ना इसका बवासीर। एंड चुल्ली गिरे बैठ के लेकिन आवाज की थोड़ी दिक्कत है, और यहाँ पर लातों का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हेल्थ बहुत कम। बैक टू बैक 6 सातवां था जरूर, बट यूज नहीं हुआ। 8 Oh my god, this is actually going bizarre and something, and साथ इन्होंने हेल्थ बहुत कम कर दी है वहां पे, लेकिन अब आती है बारी ग्रैपल्स की, और वापस से ग्रैपल्स के ऊपर आकर, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये लातों के ऊपर चुल्ली जस्ट डूइंग देखा इसका, ये हम बोला ना इसका एक पाव है with one thing, and that's just the moves. Oh चाकू गिर गया, मैं मार खा गया। क्या चाकू गिर गया भाई, गलत है ये देखो। लेट्स सी किस तरह से चाहते हैं ये आगे के मैचेस। आई मीन स्काउट अभी भी चुन्नी वो देखिए, थक की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि आगे स्टेप करने से पहले थोड़ा दोबारी सोचा जाए, क्योंकि फिर स्काउट की तरफ से वो जो किक्स आती है वो बहुत ज्यादा डैमेज, आई मीन मेजर सोर्स ऑफ डैमेज वही है। Yeah, that's totally true. खैर अभी देखते हैं आगे क्या चीज़ यहाँ पर बनती है। जब ये दूसरा राउंड क्या स्काउट निकाल पाएंगे, एक अच्छा ग्रैपल यहाँ पर किया जरूर था, लेकिन लास्ट राउंड में भी इससे शुरुआत करी, लेकिन उसके बाद या लातों के सामने वो नहीं चल पाए थे, और लास्ट राउंड में देखा लाइक 9 बार वो कॉम्बो उन्होंने दिया, लेकिन अब देखते हैं इस बार क्या होता है। और फिर से शुरुआत करनी जरूर है, पीछे आ चुके हैं, दिस कुड हैव बीन अ गुड मोमेंट आउट, लेकिन नहीं निकाल पाए, फिर से थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन फिर से एक अच्छी शुरुआत निकालते हुए, और ये गेम स्काउट लातों के सहारे, सिर्फ लातों के सहारे। भाई वो उसमें फंस जाता है भाई, वो बहुत गलत चीज है। अब आगे क्यों जा रहे थे बार बार? अरे आगे मतलब क्या, एक बार हम भी तो मारने जाएगा, जब मारने आया था उसको, और ये कंस्टेंट टैप होता है यार इसका। वो एक ऐसा हमको भी कॉम्बो वाला कुछ ढूंढना होगा वो एक कैरेक्टर का। अच्छा 9 मैच पॉइंट हो गया, हो चुका है। यस, टूर्नामेंट पॉइंट हो गया, टूर्नामेंट पॉइंट। अब मैं चुनली यूज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अरे चुंगली यूज कर, खत्म कर दो। अरे ये सब क्या हो गया? आई वुड से स्काउट एक राउंड जीतना है फैंग यूज करके। नहीं मैं फैंग नहीं, मैं कुछ नया यूज करूंगा जो यूज ही नहीं किया हूं। ओके फैंग तो मैंने करनी है। अच्छा एक कैरेक्टर मैं स्विच करूं, आप में से एक को अकूमा खेलना चाहिए। कौन सा? अकूमा एक ऐसा कैरेक्टर है जो नोटोरियस है काफी लंबे समय से। इफ दैट इज नॉट ओपन, let's see what else can be played basic characters की लिस्ट में से। okay just checking गुली खेल रहा है, गुली। हाँ गुली अकुमा ओपन नहीं है। I mean गुली is kind of a character। अच्छा अकुमा ओपन नहीं है। yeah that's one thing, but गुली अगर कोई गुली खेलता है तो गुली is a good character। yes वो भाई भी ये क्या काफी लग गया है। गुली के जंप शॉट्स और लाइक उसके गुली के जंपिंग एरियाज में बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। पसंद आया है। तेरा है वो कैरेक्टर, मेरा नहीं है। तू है वो। अरे तू है बेटा। अरे मैं नहीं हूँ, तू है। अरे तू है वो। हेलो मैं ले लिया भाई, मुझे नहीं चाहिए मिका। हेलो भाई तू मिका, भाई तू मिका है मैच पॉइंट। ये तो ब्रोकन कैरेक्टर है, ये ब्रोकन इन रिवर्स है। भाई इसका ऐसे दोस्त आती है, इसकी बहन आती है साथ में। स्टील चेयर यहाँ पे किसको पड़ता है? WWE की स्टील चेयर इस्तेमाल हो सकती है यहाँ पे।
I mean सबने WWE खेला, हम WWE की बात भी कर रहे थे हमारा FT10 स्टार्ट होने से पहले। ओ बाइसन टेलीपोर्ट करता है यहाँ पे। टेलीपोर्ट भी होता है इसमें। Yes, ये बाइसन देखो का डैश, बाइसन का जो डैश है वो थ्रो करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। 2 बार फॉरवर्ड दबाइए और आपको पता चल जाएगा। ओ आरकेओ मारा गया यहाँ पर। खैर अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पर शुरुआत जरूर गई, लेकिन अब पीछे आकर के एक अच्छी शुरुआत निकालने की कोशिश जरूर है। लेकिन बाइसन एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि वही 2 बार डबल फॉरवर्ड करके उनके आगे की एबिलिटीज एंड ऑल सब निकल आएंगी, बट अभी के लिए आउट से थोड़ा सा पीछे रह करके स्काउट खेलने की कोशिश कर रहे, लाइक नॉट गोइंग ओवर एग्रेसिव समथिंग। और एक बहुत बेहतरीन टेलीपोर्टेशन यहाँ पर निकलती है। भाई ये कैरेक्टर में तो कुछ है ही नहीं, इससे मारा भी नहीं जाता, इसका हाथ भी इतना छोटा है। मीका रिवर्सल सिनेरियो ये रहता है कि ये देखो शी इज अ हाई एबिलिटी कैरेक्टर, आपको मूवमेंट्स पे रिलाई करना पड़ेगा। और बाइसन के जो रिवर्सल्स हैं ये देखो वो और टेलीपोर्टेशन वो बहुत गेम थ्रो करते हैं। मतलब आपको समझने नहीं देते कि मतलब हो क्या रहा है, और अगर आप स्पेशली नए हैं गेम के अंदर तो काफी एक अनोइंग चीज रहती है। बट अब स्काउट ऑलमोस्ट मैच पॉइंट की तरफ जाते हैं। आखिरी राउंड हो सकता है ये हमारा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं देख रहा हूँ क्या समझ रहा, टेलीपोर्ट में मजा आता है। स्काउट कोशिश कर रहे हैं हर एक चीज समझने की। स्काउट पूरे उस गेमिंग जोन के अंदर जा चुका है जहां पर उनको जीतना है। मैं देख रहा हूँ टेलीपोर्ट इसमें कैसे करता हूँ, टेलीपोर्ट फिगर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम भाई देखो गाना हो ना गा रहे भाई, मेरा कैरेक्टर इमोट क्यों करता है हर बार? लास्ट टाइम ओ गाना गाने लग चुके वहां पर। एंड आई वुड से बहुत टाइम यहां पर ऑब्वियसली करवा चुका होगा, लेकिन अब आती है बारी स्काउट की। एक फाइनल राउंड स्काउट को निकालना है जीतने के। जी हाँ, फाइनल राउंड यहाँ पे ऑलमोस्ट निकालने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एक हिट तक बचे, वी ट्रिगर लगाया वहाँ पे, एडवांटेज करने की कोशिश के पास आ रहे हैं। वेल प्लेड। अरे दोनों की तरफ से ग्रैपल यहाँ पे भाई आता है सुनो, की तरफ से। अभी तो बहुत कैरेक्टर है ये गेम में, गलत मजा आने वाला है। ओ भाई This was a good one. I would say जिस तरीके से फाइटिंग स्टांसेस हो रहा है, obviously स्काउट यहाँ पर जीते रहे हैं, बट एट द एंड ये जीते भी हैं और साथ के साथ दोनों को एक चीज मिली है, नए कैरेक्टर्स देख करके एक प्रॉपर फन सेगमेंट बना है। लेकिन ये कैरेक्टर बहुत टेक्निकल था, ये जो था ना, इसके मूव्स जानना होगा। हाँ, इसके पास पावर ओवर नहीं है, इसका मूव जानेंगे तभी तो ही। और मेरा जो कैरेक्टर था ये काफी मतलब एडवांस कैरेक्टर था, लाइक लिटरली टेलीपोर्ट लेफ्ट राइट मार के हम टेलीपोर्टेशन से ही मार सकते हैं। जी हाँ, वो डबल फॉरवर्ड जब वो करते हैं, 2 बार फॉरवर्ड या 2 बार बैक करेंगे तो वो टेलीपोर्ट मारता है। उसके साथ बाइसन कॉम्बोज में आई थिंक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, दोनों कैरेक्टर्स जो आपने लिए थे ना वो ऑपोजिट्स की तरह है। बाइसन थोड़ा डिस्टेंस पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि उसका वो फायरवॉल वगैरह आ जाता है। इसके पास तो डिस्टेंस का कुछ है ही नहीं। यस, नहीं, बिल्कुल क्लोज रह के आपको खेलना पड़ता है। राइट, बट 1 to 10 का सीरीज स्काउट आप जीत चुके हैं, आप हमारे चैंपियन बन चुके हैं मैच के। हाँ ये फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगा स्काउट? 2 चुंगली छोड़ के। चुंगली तो भाई उसको छोड़ो, उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इट। स्काउट से फैंग चुंगली इज डेट एक्स, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, समझ रहे हैं? ब्रो मुझे एक बात बताओ, इसमें कैरेक्टर्स अनलॉक कैसे होते हैं? मुझे एक बात वो अभी हम लोग पैक खरीदेगा ना, पैक खरीदने पड़ेंगे खत्म होने के बाद। कल तक 20-20 कैरेक्टर और लेके आएगा। नहीं तो मतलब ऐसा कोई एक है पैक जिसमें सब खुल जाए, ऐसा नहीं कि 5 इधर 5 उधर खोलो, ऐसा नहीं। चैंपियंस एडिशन का लेने से आई थिंक यू गेट एवरीथिंग। ठीक है, तो वो फिगर आउट कर लेंगे। ओके, आप हमें बता देना कौन सा हम। बट आई थिंक ग्रेट फन, मतलब आई थिंक अगर ये इतना फन है तो बाकी की जो 2 हम लोग के गेम्स है KOK 1 इज स्मैश ब्रोस, राइट? यस, सुपर स्मैश ब्रोस। थक बाकी तो चैलेंज आ रहा है, कैप निकालियो। कैप निकालो, चैलेंज आ रहा है तो फिर मैं ब्लैक कर दूंगा। मैं तो बोला था कैप निकाल, मैन ऑफ वर्ड्स ब्रो। देखो मैन ऑफ वर्ड्स का बात ऐसा है, जब पहले बात हुआ था तो ज्यादा एकदम गेम स्टार्ट होने के पहले कमेंटेटर साहब पूछ रहे थे जी, होस्ट साहब, मैंने पूछा था शर्ट कुछ लगी है या नहीं लगी। हाँ, तो इसने मना किया था ना सबसे पहले। मेरा तो नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था, मैं तो रेडी है ऐसा। अरे टोपी तो निकालो, रेडी है। अरे टोपी तो निकालो तुम। चल हट, चलो। एक और ग्रेट भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वापस कम बैक करने की दूसरे गेम के साथ। बट अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस स्काउट विक्ट्री के लिए। बट मजे हम लोगों को भी आए आपके साथ टाइम बिता के। एक बार फिर से मिलेंगे, उम्मीद करेंगे दोबारा से। अभी के लिए हम लोग एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। दर्शकों को बता दो कि ब्रेक की दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा स्ट्रीट फाइटर 5 का टॉप 4 जो फाइनल्स मैच स्टार्ट होने वाले वो। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग, विल बी राइट बैक।
Hello and welcome back once again to KO Fight Night. This is of course season 5 का finale that we're in, and indeed जो आज तक journey अभी तक चल रही थी players की, it has all boiled down to 4 lads now. सिर्फ 4 players, and amongst those of course we are going to find out who the champion is going to be for season 5 of KO Fight Night. And for that of course we do have to thank Nodwin Gaming, powered by of course Airtel India Esports Store. I'm your host. Joining me on the analyst desk, it is the incredible personality that who was just casting the game, the showcase game that we just had where Scout won convincing scoreline. But indeed, let's first introduce the analyst joining me. It is none other than the incredibly talented Ocean Sharma. Thank you very much. And yes, so far जिस तरीके की जर्नीज यहाँ पर प्लेयर्स की भी रही हैं और सब कुछ, that actually puts up a different story. और अभी जो मैच कर गया, that also puts up a different story. I mean the way, because वो एक I would say kind of एक fun showcase match था. बिल्कुल. Obviously they were also trying to go for the new players and all those things. और वो एक बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था. बिल्कुल सही बात है. I mean the way that entire momentum rolled was incredible. To be able to just get behind. जो लोग first time देख रहे हैं game, उनको बिल्कुल idea नहीं है what is expected or to expect. Well, that is exactly what was showcased because वो भी first time खेल रहे थे. Yeah. And it was wonderful to witness, but what? Well, that is not the end because अभी सिर्फ Scout का first game हुआ है वो. There is still one more showcase game that will take place later, right? So you never know. Maybe Thug will be coming back stronger. But with that, let's quickly move on along to the Champions Arena itself, where indeed, like I said, there are 4 players right now. We're gonna get busy with match number 1. But before we get into that, let's have a look at the prize pool and find out what is that 1 lakh rupee being divided amongst the 4 lads. Like it is exactly same like Smash Bros, where indeed first place holder will get 50,000 rupees. Moving on to the second place holder will have 25,000. Third place 15,000. And the fourth place holder will have 10,000. Well, it kind of looks like a good one जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ. लेकिन मैं एक बार obviously before it everything just starts, मैं एक बार brackets पे भी नजर डालना चाहूँगा कि क्या चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं. देखिए BO5 का जो situations और series रही हैं, Ayan, playinGaurav, and it just comes out to those things. I mean, once we're talking about the players, it's just not all about the players, it's all about their dedication. जिस तरीके से वो आगे की तरफ कुछ आते रहेंगे. बिल्कुल सही बात है. And that is going to be the match number 1 that we'll start off with Steamrollin' Street Fighter segment with. But then after that will be second match where indeed we move on to the lower bracket, or as some people call it, loser bracket, where indeed we do have Dark Lord going against Kaminaman. Yeah, I mean, yeah, it's gonna be something out there. लेकिन Ayan और playinGaurav इनको भी जरूर देखना चाहिए कि head to head में भी इनकी क्या सिचुएशन और स्ट्रैटेजीज रहती हैं. खैर आप देख सकते हैं 8 मैचेस खेले थे वहां पर और उसमें से 8 का विन, 9 मैचेस 9 का विन. सो इसलिए वही है कि अपने आप को ऊपर रख रहे हैं. एंड इनसे मैंने बात भी करी थी दोनों से और इनके इंटरव्यूज भी लिए, तभी यही चीज आता है कि they have just been on to one thing, and that's just winning and winning. Wow, and that is of course showcased by those wonderful stats. 8 games, no losses. 9 games, no losses. With that, of course, let's introduce these players. Of course, Ocean was the one taking the interview, so let's segue in with first interview. I believe it is probably going to be Ayan. Let's find out. Ladies and gentlemen, स्वागत आप सबका. मेरा नाम है ओशन शर्मा और अभी तक KO फाइट नाइट के जो इंटरव्यूज का सिलसिला चल रहा है उसमें बहुत बेहतरीन प्लेयर्स से मैं बात करी है. स्ट्रीट फाइटर हो जाए, टेकन हो जाए, किसी भी तरीके से अगर हम बात करें सुपर स्मैश ब्रोस एज वेल, बहुत अच्छे प्लेयर्स से हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली है. एंड उसी के अंदर एक प्लेयर आएंगे जो काफी डोमिनेटिंग अपने गेम प्लेस दिखा रहे हैं. आई मीन गौरव इज हिज नेम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर आउट हियर. थैंक यू. सो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप कहां से हैं एंड बेसिकली आपका प्रोफेशन क्या है, या फिर अगर आपने स्टडीज वगैरह की है वो क्या करी है एंड all those things. Like I've spent 30 years in Delhi itself, but right now I am in Pune. I'm working in IT. So coming to Street Fighter, I started playing Street Fighter 4 in 2010. For Street Fighter 5, this is actually my first tournament that I have ever entered. आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है and like why do you think like it's worth it? In Street Fighter 5, I actually started with Ryu, but then due to the nature of this game, this is not really a defensive game. So starting from 2010, I have only played 2 characters, Ryu in Street Fighter 4 and Guile in Street Fighter 5. क्या आपके साथ पर्सनली खेलते कभी ऐसा कोई सिनेरियो रहा है जहां पर कॉम्बैट बहुत मुश्किल था किसी टूर्नामेंट में, then you just obliterated everything? Daigo versus Justin Wong. I am actually a huge fan of Daigo. I watch all his matches, but when you talk of being in that moment and just pulling it out at the last moment, I am not that guy. Sorry. So I will, if my health bar is below 50% or let's say below 40%, I think you have taken the game away from me. Is there any person जो आपको लगता है आपका strongest rival है इस tournament?
I actually won that tournament according to the rules that were set on their official page. But then the guy who lost, Himmat Brandy, I'm not sure if you know him. He's an excellent Street Fighter player. So that, I think that was a good moment for me when I came in first. I don't really take part in offline tournaments. I think that is the biggest complaint, and they all know me. I'm the lazy guy there. So this was online tournament. So that's why I said this is actually my first Street Fighter 5 tournament. Due to work and all, I don't really get that much time. जैसे एयरटेल इंडिया स्पोर्ट्स टूर का नेशनल लीडर बोर्ड है और वो सब चीजें, तो उनके अंदर आप अपने आप को कहाँ दिखकर कैसे आप सोचोगे कि आप और अच्छा उस एरिया को प्ले कर सकते? I just got lucky in being here, but obviously I know who is my opponent going to be in the upcoming matches. So I'll study the matches. I'll do my homework, and then rest is all luck. So is there any message जो आप अपनी कम्युनिटी को देना चाहोगे, या कुछ अपने फैंस को, अपने फ्रेंड्स को, एंड मे बी फ्रेंडलीज जो यहाँ पर आपके अगेंस्ट में रहेंगे लेकिन आपके दोस्त भी हैं, so is there any message जो आप उनको देना चाहोगे? You guys are already doing very well. I mean, I am non-existent in the community, but still you are Bhagwant, and you have Mayank and Dark Lord Aditya. You guys, I see you guys commentating, and it's so good to see that level of esports league starting in India, and thanks to you guys. So just hats off to you guys, and I hope even if the numbers are low, I guess you know that the numbers are quite a bit low, but I hope you will keep doing it, and it will attract a lot more players. And I really hope to see you guys just rock it and make a mark in the gaming community for India, not just fighting game community, but I think you should do other games also, like PUBG Mobile. Whatever games are popular in India, I think you guys should do it, and I think you will do very well. आपका पूरा एक मैं बोलूंगा संघर्ष यहाँ पर दिखता भी है, अपनी गेम के लिए भी डेडिकेशन पूरी तरीके से दिखती है. So just say thank you for giving out your precious time out there, and maybe next time I'm talking to you, you might be having a trophy. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत है आप सबका. मेरा नाम है ओशन शर्मा और आज हमारे स्ट्रीट फाइटर पे इंटरव्यूज देने के लिए KO फाइट नाइट के लिए. एंड स्ट्रीट फाइट, आई मीन इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग गेम ऑफ प्लेयर्स को एक दूसरे को डोमिनेट करना ही रहता है. सो ऐसे ही प्लेयर्स हम बात करेंगे. अयान, उनसे जानेंगे कि उनका अभी तक का जर्नी कैसा रहा और आगे वो क्या क्या सोचते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अयान, आई वुड से वेलकम टू दिस वन. सो मैं शुरुआत करना चाहूंगा आपसे जानने के बारे में कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या स्टडीज वगैरह में आपका क्या सिचुएशन है. जैसे कि मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ. कोलकाता से 2 घंटे दूर एक मतलब गांव टाउन में जिसका नाम है बीरनगर. तो उसमें मैं अभी कॉलेज में एंटर किया था. तो आपने ये गेम कब से खेलना स्टार्ट किया और यहाँ से आपकी कॉम्पिटिटिव में जर्नी कैसे है? बिकॉज पहले तो जब सब लोग खेलते हैं तो वो नॉर्मली खेलना शुरू करते हैं, तो वहां से कॉम्पिटिटिव में आप कैसे एंटर हुए? जैसे कि 2017 में मैंने स्ट्रीट फाइटर 5 डाउनलोड किया था और मैं बस ऐसे ही खेल रहा था. तो खेलते खेलते मुझे बहुत अच्छा लगा था. मैं सोचा कि इसको मैं प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाऊं. तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में. जैसे फर्स्ट टूर्नामेंट में 2018 में बेंगलोर में प्रूविंग ग्राउंड्स खेला था. उसमें स्ट्रीट फाइटर था, टेकन था. तो उसमें मैंने स्ट्रीट फाइटर में पार्टिसिपेट किया था. एंड स्ट्रीट फाइटर के यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं जो ऑब्वियसली प्लेयर्स यूज करना चाहते हैं अपने हिसाब से. किसी के कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और क्यों आप उसको चूज करते हो? स्ट्रीट फाइटर में जैसे जितने कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे अच्छे कैरेक्टर्स हैं. उससे मैं बर्डी को चूज किया क्योंकि बर्डी के पास बहुत अच्छा मूव्स है. तो अभी जैसे आपने बोला 2017 से खेल रहे हो, फिर 2018 में आपने पहले कॉम्पिटिटिव में पैर रखा और अब 2020 आ चुका है. सो आपकी आगे की जर्नी आप किस तरीके से देखते हो? जैसे अभी तो मैंने इंडिया में कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह खेला है बहुत सारे, और इसके बाद मैं सिंगापुर में एक टूर्नामेंट होता है साउथ ईस्ट एशिया मेजर, उसमें मैं खेलना चाहता हूँ. अगर उसमें मैं जीत गया तो मेरे एक दिमाग में एक इच्छा है कि मैं इवो में जाऊं, इवो में पार्टिसिपेट करूं. वैसी मूवमेंट अगर लाइक आपके आसपास कभी ऐसा कुछ हाई प्रेशर सिचुएशन हुआ है जो आपने अपने हिस्से में बदला है? जैसे इवो मूवमेंट 37 था जो उस टाइम पे तो बहुत बहुत बड़ा मूवमेंट निकल कर आया था. सो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कोई मूवमेंट आपने पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस किया? 2018 में जब ड्यू एरिना हुआ था तो डार्क लॉर्ड ने मुझे 3-0 में उसके पास एडवांटेज था.
तभी मैंने पूरा अपना कमबैक किया था कि उसके बाद मैंने एक भी डार्क लॉर्ड को जीतने नहीं दिया और 5-3 में मैं जीत गया। बस वो कमबैक मुझे बहुत अच्छा लगा था, उस वैसा ही एक्सपीरियंस है मुझे। बट यार मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके इस टूर्नामेंट में KO फाइट नाइट के स्ट्रीट फाइटर के अपने यूनिवर्स में आपके अकॉर्डिंग आपके स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल यहाँ पर कौन से प्लेयर हो सकते हैं? जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है वो है B3, क्योंकि मैंने आज तक उनके साथ कोई टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता। और आगे मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजीज आपकी रहेगी कि आप 4 से ऊपर उठ सके? जैसे कि मैं जो प्रो प्लेयर्स हैं स्ट्रीट फाइटर में, उन लोगों की मैचेस में देखता रहता हूं और मैं उन सब की जो स्ट्रेटजीज वगैरह है वो उन सब की स्ट्रेटजीज में अपने गेम प्लेस में आना चाहता हूं। और अगर कोई मैसेज है जो आप इस कम्युनिटी को या फिर अपने फैंस को देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के द्वारा? तो मैं ये चाहता हूं कि सिंगापुर में हम लोग सभी कम्युनिटी मेंबर्स जाए और उधर एक ही नाम गूंजे कि इंडिया जीते, या मैं जीतूंगा या मेरे कम्युनिटी मेंबर में कोई भी जीते, बस इंडिया को जीतना चाहिए। इस सब के साथ ही मैं ये बोलूंगा थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम आउट है एंड आई होप कि आपके जो फ्यूचर एंडेवर्स है आप उसको पूरा सक्सेसफुल हो, बिकॉज जिस तरीके से आपने बताया जो कॉन्फिडेंस आप लेकर आए हैं ये जरूर आपको स्ट्रीट फाइटर में और आगे लेकर जाएगा प्लस आपका गेम प्ले तो आपके साथ है, सो थैंक्स अ लॉट। All right, well, that of course was the incredible interview that these lads showcased, where Gaurav started off with an interesting point that he would want the entire community to take on that baton for him, so to say, right? On the other side was Ayan talking about how he wants to take the baton forward for India itself. I mean, two completely different personalities. I mean, but still, I kind of loved one thing. जिस तरीके से आन ने बोला कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जीतूं या कोई और जीते, मैं चाहता हूँ इंडिया जीते, और वो it's not just कि इंडियन टूर्नामेंट से कुछ भी, he wants to go international and it's not just going international, he wants to show to the international media Represent that, yeah, India. exactly. That's the biggest thing. I mean, why am I bringing it up in that contrast? Mainly because, again, what is connecting them? Both of those lads are in competition, right? Yet they are so humble and they are so wanting the entire community to stick together and move on forth and, of course, represent India. Now, with that, of course, let's get busy with this match between Gaurav and Ayan. And with that, over to our casters. Well, thank you so much, Blotter and Ocean. हम लोग वापस आ चुके हैं। मेरा नाम है वरुण सुपर जॉन इज ऑन। देवराज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। वेल, इस साइड है आज देवराज, और इस बार हम लोग एक बार फिर से आपके लिए कास्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटेंस स्ट्रीट फाइटर 5 स्टार्टिंग विद द अपर ब्रैकेट्स। तो देवराज, प्लेयर्स की जर्नी आप जरा एक बार हमें फिर से बताइए हमारे व्यूअर्स को कि प्ले इन गौरव वर्सेस अयान। ये जो है मैचअप हमने देखा था कल भी, प्लेन गौरव के मैचेस बहुत ही एक्साइटिंग थे, बहुत ही एक रिफाइंड गायल वो लेके आए थे, जो बोलते थे एकदम बाय द बुक खेलते हैं, काफी मतलब सेफ यूज किया था उन्होंने बूम्स का, काफी अच्छा मतलब ओपोनेंट को कंडीशन भी किया जंप करने के लिए बूम्स के ऊपर, और उस पर कैपिटलाइज किया फ्लैश किक करके। तो हमने जो यहाँ पे देखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओल्ड स्कूल रिफाइंड प्लेइंग स्टाइल विद गौरव, और उनके अगेंस्ट हो जा रहे हैं ऑफ कोर्स हमारे जाने माने काफी पॉपुलर काफी एक्सपीरियंस्ड कंपेटिटिवली प्लेयर है अयान, जबकि वो एक्चुअली एज में काफी यंग है कंपेयर्ड टू हिम, बट उनका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है स्पेशली ऑन द कंपेटिटिव स्टेज इन द कंपेटिटिव सीन बहुत ही ज्यादा है कंपेयर्ड टू गौरव। बट ऑफ कोर्स गौरव के पास एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स है प्लेइंग डिफरेंट आइटरेशंस ऑफ SF4 नाउ SF5, और साथ ही साथ देखिए अभी गेम भी चालू हो गया है। गेम स्टार्ट 2 बूम्स बैक टू बैक जिसमें से एक लैंड हुआ था। काफी अच्छा यहाँ पे चार्जर नया कि जो चार्जर होते हैं जो हेडबट के साथ वो जाते हैं वो काफी डेडली साबित हो जाते हैं कई बार। लास्ट टाइम मैंने देखा था गैप क्लोज करके फिर ग्रैपल के लिए जाते थे, और बहुत ज्यादा आई मीन अपने ओपोनेंट्स को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि लाइक व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट। मजबूर तो करते हैं, मगर अयान ऐसा खिलाड़ी है जो सोच लेता है, काउंटर भी डिवाइस कर लेता है, और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैब भी कर लेता है। और उन्होंने जबकि हमने देखा राउंड चालू हुआ था तो गायल के पास काफी एडवांटेज था, मगर कहीं ना कहीं अयान ने राउंड अपने फेवर में कर लिया। देखते हैं ये राउंड में क्या होता है। अभी इस बार इवन तो प्लेइंग गौरव तैयार थे, उनकी पनिश को अयान ने पनिश कर दिया और गायल को कॉर्नर में पहुंचा दिया है। ये अच्छा जंप है अयान की तरफ से, काफी अभी भी स्ट्रॉन्ग मिक्सअप चल रहा है, मगर प्लेइंग गौरव का जो ये क्राउचिंग हेवी किक का यूज है थोड़ा रिस्की हो रहा है ज्यादा, और उसका फायदा ले पा रहे हैं अयान। अयान जैसे आप जानते हैं काफी एक एक्टिव प्लेयर है, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बूम को वेट किया और अटैक किया, वापस से गायल कॉर्नर में है, और इसी के साथ उन्होंने ये राउंड भी ले लिया।
काफी फास्ट राउंड चल रहा है। जी हाँ, जो काफी जो गायल रहता है, एक कैरेक्टर है जो पेस डिक्टेट करना चाहता है मैच की, मगर यहाँ पे आप देख रहे हो बर्डी ने पूरी टाइम पेस ही डिक्टेट उन्होंने की यहाँ पे। I mean, वही एक चीज है ना, स्ट्रैटेजीज गेम प्लान्स दोनों के अलग है। बर्डी को जितना करीब जाएगा उतना ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा विद डाइव्स के साथ। वो ग्रैपल्स में जब ट्रांजिशन करते हैं उसके चलते, और जैसा आपने कहा गाइल और प्लेन गौरव गेम प्लान है स्टे फार अवे, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके वो सोनिक बूम्स के साथ ही अपने एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं। शुरुआत ही एक ग्रैपल के साथ होती है। तो ये जो ग्रैपल है उनका, ये जो मतलब नॉर्मल जंप इन ग्रैब है, ये उनका रेंज गेम है। जो रेंज पे अभी अयान खड़े हैं, ये पॉइंट पे वो बूम्स को काउंटर करना चाहते हैं जोंग हेडबट के साथ, नहीं तो एक जंप इन ग्रैब। और ऑफ कोर्स उनका EX हेडबट है जो अभी अभी देखा था, जो उनको अपोनेंट को कॉर्नर में पहुंचा देता है। उन्होंने कैन फेंकने की कोशिश की मगर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ बूम्स। इस बार प्लेन गौरव ने कुछ पॉइंट में डिसाइसिव चेंजेस किए हैं, मगर मुझे लगता है अयान ने वापस से कुछ थोड़े काउंटर चेंजेस कर दिए। टिप थ्रो वहाँ पे, और उन्होंने वेट भी किया फ्लैश किक को और पनिश भी किया। काफी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। अगर प्लेन गौरव डिलेड फ्लैश किक करते थे शायद वो अयान को काउंटर कर पाते थे, मगर वो थोड़ी जल्दी में थे। जैसे मैंने पहले भी बोला था, अयान यहाँ पे फेस काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर रहे थे। देखिए वापस से वो गाय को अपनी बूम्स के साथ, अपने नॉर्मल्स के साथ फेस डिक्टेट नहीं करने दे रहा, और साथ ही साथ आप देखते देखते गौरव को उन्होंने स्टन पे लाया और छोड़ा भी नहीं। और मुझे भी काफी मुश्किल हो रही है इनके साथ पेस रखने में। अयान का जो पेस कंट्रोल है, एकदम से वो मतलब साथ साथ रहते हैं, फिर थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, फिर स्लो डाउन करते हैं, और फिर वापस से फुल एक्सेलरेशन के साथ कॉर्नर कर देते हैं अपोनेंट को। आई मीन वही एक चीज रहती है, आपको अपने ओपोनेंट के गेम को ऑफ करना है, उनको किसी तरह थ्रो ऑफ करना है ताकि उनका जो भी गेम प्लान वो बना के ला रहे थे दैट जस्ट गोज आउट द विंडो स्ट्रेट अवे। और अयान, आई मीन आई रिमेंबर वाचिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एट ड्यू अरीना पे मैंने देखा था, और उसके बाद आई वॉच्ड हिम बैक इन ड्रीम हैक, और दोनों टाइम आई मीन ही इज ऑलवेज, हमेशा एक ऐसे प्लेयर है जो कुछ भी खराब सिचुएशन भी होगी, अगर हेल्थ डिसएडवांटेज भी चल रहे होंगे, चाहे सामने वाले प्लेयर का पूरा HP बार हो या आधे पे बैठे हो, ही ऑलवेज मेन्स काम, और अपने गेम प्लान पे काफी बेहतरीन तरीके से स्टिक करना जानते हैं। एक डाइव के साथ काउंटर सोनिक बूम के ऊपर से निकल गए, स्टन यहाँ पे मिल जाएगा, और इसी के साथ राउंड भी अयान के खाते में ही जाता हुआ। और ये पहला अपर ब्रैकेट का फाइनल्स है, इट लुक्स रियली वन साइडेड, वेरी वेरी वन साइडेड। यहाँ पे अयान अभी मैच पॉइंट पे आ गए हैं। उन्हें अगर ये राउंड मिल गया तो ये जो पूरा गेम है 3 राउंड्स का, उनके 3 सेटों का उनके फेवर में चला जाएगा। प्लेन गौरव रोक है, इवन दो उनके पास लोअर ब्रैकेट में चांस है आने का, ये एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। यहाँ पे उन्हें कम से कम 1 या 2 सेट लेना ही चाहिए, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा और जो अपोनेंट है वो भी थोड़ा मतलब डाउट में रहेगा। बट ऑफ कोर्स आप देखते हो अयान पूरी तरीके से तैयार है प्लेन गौरव के ऑप्शंस के लिए। प्लेन गौरव भी अपने आप को शायद थोड़ा सा सेकंड गेस कर रहे हैं, जिसका अयान हमेशा फायदा ले पाते हैं, तो उनकी अयान की खासियत है। अभी मगर इस बार लगता है प्लेन गौरव ने कुछ चालू किया है, मगर बहुत ही कम लाइफ है उनके पास। ऑफकोर्स बीट लेकर पूरा है, तो उन्होंने अभी एक्टिवेट किया है। थोड़ा संभल कर खेलना चाहिए, क्योंकि अभी अयान भी अपने बीट लेकर एक्टिवेट कर चुके हैं, और उसी के साथ वो थोड़े जो हेजिटेशन था, उनको पता था कि गौरव को पंचेस जो है न्यूट्रल में नॉर्मल फेंकने की आदत है, उनके अयान के फॉरवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, और तभी उन्होंने EX डॉल्फिन लाइव करके पूरा राउंड अपने खाते में कर लिया। और उसी के साथ पूरा सेट जो है 3 राउंड्स 3 सेटों का जो मैच है उनके फेवर में चला गया। और अपर ब्रैकेट के जो विनर है हमारे अयान है। काफी और बहुत ही तेजी से इन्होंने निकाला, और जैसा आप ब्रेक डाउन भी कर रहे थे मैच के दौरान, पेस कंट्रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था अयान के लिए। काफी ज्यादा क्लोज टिक कर रहे थे हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट, नॉट गेटिंग टू फार अवे फ्रॉम जो उनके अपोनेंट थे प्लेन गौरव के गाइल। एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, अभी गाइल जाएंगे लोअर ब्रैकेट के फाइनल्स के अंदर, वहां से अगर जीत कर वापस आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक्स थी यहाँ पे प्लेन गौरव की तरफ से, जो अगर वो फिक्स कर ले तो मे बी द नेक्स्ट टाइम ही फेसेस अयान एडवांटेज क्रिएट करके और प्रॉब्ली विक्ट्री भी निकाल सकते हैं अपने लिए? तो एक जो बात है उनको कि जब अयान उनसे अपने आप को डिस्टेंस करता है, उनको लगता है कि वो जब स्टेज की दूसरी तरफ है कि उनका टाइम है बूम थ्रो फेंकने के लिए, मगर वो पॉइंट पे उन्हें बूम नहीं फेंकना चाहिए, उनको इधर सेटअप करना चाहिए जिससे वो फ्लैश किक उनकी तैयार रहे।
नहीं तो उन्हें अप्रोच करना चाहिए या तैयारी में रहना चाहिए, नहीं तो कुछ वेट करना चाहिए जिससे उनका जंप इन हो जाए। दूसरी बात है, उनकी एक खासियत थी अभी तक कि जब वो 20 किल करते थे वो 20 किल फेक करके फ्लैश किक निकालते थे, मगर यहाँ पे ये 20 किल कंप्लीट कर रहे हैं और जब गायल 20 किल कंप्लीट करता है तब वो रिकवरी में रहता है। वो मतलब आप अगर उन पे जंप करोगे तो वो रिएक्ट नहीं कर सकता है। एंड ये थोड़े चेंजेस वो करेंगे तो ऑफ कोर्स शायद विक्ट्री उनके हाथों में आ सकती है, वेरी पॉसिबल, क्वाइट इजीली। जी आप आई मीन लेट्स सी कि आगे की जर्नी कैसी रहती है, क्योंकि अभी अयान जो है वो तो ऑलरेडी हमारे ग्रैंड फाइनल तक पहुंच चुके हैं, और उनके बाद जो हमारे दूसरे कंटेंडर थे प्लेन गौरव, वो अभी जाएंगे लोअर के फाइनल्स के अंदर। उनके ओपोनेंट जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि वो हमारा एक्चुअली अगला मैच डिसाइड करेगा जो होगा। वहां भी दो अमेजिंग कंटेंडर्स हैं, एक रहेंगे हमारे द डार्क लॉर्ड, दूसरे रहेंगे कमीना मैन। लेकिन लेकिन हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी अभी थोड़ी देर में जुड़ने जा रहे हैं। वो भी हमारे एक और आई मीन देवराज आपकी हेल्प करने वाले हैं वो इन द एनालिसिस पार्ट ऑफ द गेम, बिकॉज बहुत टाइम से आप लोग खेल रहे हैं एंड आई थिंक यू माइट हैव गॉन अप अगेंस्ट हिम एज वेल। Definitely looking forward to it. यस वेल कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट जैसे मैं बोल रहा था इज गोना बी देयर, बट तब तक हम लोग आई मीन हम लोग थोड़ा बात करते हैं आपस में ही। अगला हम मैच लोग भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं तब तक के लिए। आई मीन तो इंटेंस तो था ये मैच, और वन साइडेड भी गया। अयान के साथ एक्सपेक्टेड ही रहता है, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर द गेम स्टार्टेड, राइट? डेफिनेटली अयान का जो एक्चुअली जो पेस कंट्रोल है वो उनकी खासियत है। बॉडी आप जो देखोगे एक्चुअली कैरेक्टर अभी मतलब नर्फ भी हो चुका है, ही इज नॉट रेनिंग एट द टॉप ऑफ द टियर लिस्ट एज ही यूज्ड टू वंस अपॉन अ टाइम, मगर उसके पास टूल्स है जो नेसेसरी है, और अगर सही टाइम पे आपने सही रिस्क लिया तो रिवॉर्ड आपका होता है, मैच आपका होता है। और यही SF5 की खासियत है जो अयान बिल्कुल एकदम बोलते हैं ना टू द लेटर खेलते हैं वो गेम। ऑफ कोर्स प्लेन गौरव एक बहुत ट्रेडिशनल स्टाइल खेलते हैं जिसमें ऐसा जो हाई रिस्क टेकिंग इज यूजुअली अवॉइडेड, मगर इस पॉइंट पे उनको भी थोड़ा ऐसा रिस्क थोड़ा बेट करना पड़ेगा जिससे वो फायदा ले सके। एंड ऑफ कोर्स इस जो एस्पेक्ट है गेम का और उसके अदर फैक्टर्स पे अभी डैन जो हमारे एनालिस्ट है बहुत ही जल्द आपको और इसके ऊपर नॉलेज देंगे। एंड हियर ही इज, हाय डैन, व्हाट्स अप? Hi everyone. Thank you for the introduction. देवराज और वरुण, आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों के बाद मिले हैं हम भी, और बात करें एसएफ के मैच की। और ये जो मैच अभी हम लोग देख रहे थे, स्ट्रेट 3-0 अयान ने लिया, और वो फंडामेंटल जो उनके थे बॉडी के साथ, आप जो मेंशन कर रहे थे देवराज भी, बिल्कुल मतलब बहुत सॉलिड प्ले था उनका भी, और एबल थे, वो रीड कर पा रहे थे सारे ऑप्शंस जो आने वाले थे। तो उन्होंने बेट भी किया उनके वेकअप्स और सीधा पनिश किया। जैसे भी वो अपर कट करने के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनके ऊपर से क्रॉस अप करके उन्होंने पनिश किया। सो अयान फंडामेंटली वेरी सॉलिड प्ले दिखा रहे थे थ्रू आउट द सेट, और वो क्लीन ले जा चुके हैं जैसे वो क्वालिफायर में भी दिखा चुके हैं अभी। वेरी वेरी फन गेम्स टू वॉच। वेल फन तो था ही, बट डैन आपके लिए भी मेरा सेम सवाल रहेगा। मिस्टेक्स फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेन गौरव जो फिक्स करनी पड़ेंगी इफ ही वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, और हमारे जो अगले कंटेंडर्स हैं उनमें उन दोनों के बारे में भी हल्की सी बात कर लेते हैं कि अगर उन दोनों में से कोई आगे पहुंचता है प्लेन गौरव को फेस करने के लिए तो वहां पे क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कमीना मैन एंड द डार्क लॉर्ड, क्योंकि अब प्लेन गौरव को उनमें से किसी एक को फेस करना होगा। देखिए, अभी गायल की बात करें तो गायल एक्चुअली मैं कहूंगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आई मीन हम लोग देख ही चुके हैं, अपने टॉप प्लेयर्स है एसएफ के जो, और डाइगो जो गायल का मतलब हाईएस्ट लेवल पे ही कैन शो यू दैट दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर कैन डू रियली वेल अगेंस्ट इवन सम ऑफ हिज वर्स्ट मैचअप्स आल्सो। तो I think कि Guile has a lot of potential, and so does playing Gaurav. And against G or against Karen, I think he just needs to play a little bit more patient and allow his own tempo to be set in the game. तो मतलब अगर वो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा ज्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे तो उनके ऊपर काउंटर बैठ सकते हैं, जैसे ये लास्ट मैच में भी देखने को मिला था। वेल डेफिनेटली आई मीन कोशिश उनकी भी यही रहेगी कि किसी तरह वहां से कम बैक करके निकल पाए। और
अब बस ये देखना होगा कि आगे वाले मैचेस किस तरह से जाने वाले, क्योंकि एक ग्रैंड फाइनलिस्ट हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, और एक लोअर ब्रैकेट फाइनल्स के अंदर भी एक जो शख्स है वो एक नाम हमारे को पता चल चुका है कौन सा है। अब वो दूसरा नाम लोअर ब्रैकेट फाइनल्स में कौन सा होगा और जो दूसरा नाम ग्रैंड फाइनल्स में कौन सा होगा, वो हमें आने वाले मैचेस ही बताने वाले हैं, जो कुछ ही देर में वेल इनफैक्ट स्टार्ट होंगे। हाँ, काफी एक्साइटिंग मैचेस भी रहेंगे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। व्हाट अबाउट यू गाइस? Well, I'm super excited as well, especially considering the fact कि हम लोग सब assume करके चल रहे थे कि चलिए डार्क लॉर्ड और अयान तो सेम ब्रैकेट में थे, तो हमें पता था एक तो लोअर ब्रैकेट में आएगा, बट कमीना मैन के ब्रैकेट से प्लेन गौरव अपर ब्रैकेट से होकर आएंगे और कमीना मैन को पुश डाउन कर दिया जाएगा, वो अनएक्सपेक्टेड था। चलिए डेस्क के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि अभी जो सिनेरियो हमारे आगे डेवलप हुआ है उसके बारे में उनका क्या कहना रहेगा। Thank you so very much, casters, and of course, Dan, what a Hey, can you swift just game see that the was. audio? Quick game. I mean, one thing that I want to point out from that is playing a. I don't know, dude. Gaurav, जिस तरीके का ये game था, it seemed as if he had already kind of lost hope. I mean, it's And a we little were bit- discussing about it as well. Yes. You know, it just comes down जिस तरीके से obviously Dan ने भी वहाँ पर point out किया Right. कि क्या क्या चीजें रही थी, and Joy ने भी बताया इन सब चीजों के बारे में से. It kind of comes up to all those things कि आपकी strategies, आपकी situations कहाँ पर काम आती हैं. लेकिन अब बात ये आती है कि अयान आराम से आगे जाएंगे. He's just sitting out. He's just gonna chill and maybe just will be watching the stream to see who his competitor will be, क्योंकि दूसरी तरफ वहाँ पर और भी players रहेंगे, तैयार रहेंगे. I mean, बात करें लोग कमिनामैन की भी बात करें जो अभी आएंगे खेलने के लिए, तो उनके साथ भी क्या situation रहती है वो रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो जीता आने वाले मैच से भी वो आगे जाएगा, और जो हारा वो लूजर ब्रैकेट्स के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं देखेगा. Absolutely, because of course we're looking at 4 players that are already in front of us. We've seen 2 players amongst those 2 that are the ones that played right now. Ayan going against playinGaurav. Moving on to the next match, which will be of course the Dark Lord and Kaminaman. So इसके अंदर से हमें at least ये पता चल गया है that one person, that is Ayan, is set to play in the grand finals. Now the question is going to be who amongst Dark Lord and Kaminaman moves on forth. Exactly. Now it comes down to this, क्योंकि जो हारा वो लूजर्स के फाइनल के लिए जाएगा और ग्रैंड फाइनल्स के लिए वहां पर इनमें से कोई एक प्लेयर जाएगा, जिनके लिए अयान ऑलरेडी वेट कर रहे हैं. I mean, उनके सामने अगर आप ब्रैकेट देख रहे हैं, एक कदम के आगे ट्रॉफी रहेगी. वो एक कदम जाना उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए भी उनको कोई ना कोई रोकने के लिए आएगा. लेकिन कितनी देर तक रोक पाएंगे वो एक चीज है, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब हम ऑब्वियसली अंदर देख रहे थे एंड हमने ये डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट एक परफेक्ट मैच ही यहां पर देखने को मिल सकता है. लाइक बर्डी नेवर स्टॉप्स. Never ever does. That is so true. Now another thing that does come to my mind with this fact is the casters ne bhi bataya. In fact, when it comes to Dark Lord and Ayan, they have played against each other. In fact, Ayan was the one who sent Dark Lord down there. So basically, coming back from the low, it is maybe Dark Lord that we could expect, or not. We'll find out, of course. But for now, we do have the head-to-head where indeed matches played are 10 in total by Dark Lord, and he's only lost 1. Whereas on the other side for Kaminaman, he's played 14 games and has won 11 of them. I mean, he has lost more number of games. That also comes up कि he has won. I mean, he has played more number of games and obviously he has won. I mean, the numbers advantage जिस तरीके से अगर हम बोले वो आता जरूर है, but जो 90% यहाँ पर win ratio रहेगा, जो वो कहीं ना कहीं डार्क लॉर्ड को फेवर एज सच करेगा, but I would say not that much, क्योंकि it all just comes down to this one final showdown. Not even final showdown. Obviously, यहाँ पर भी और games रहेंगे, but still kind of final showdown जो अब होने वाला है. Absolutely, it is going to be a final showdown, at least for these players, because after all, they are wanting to make a mark, and they have made a mark because they're in the top 4 amongst the entire lot of so many talented players that have participated and have been on this journey for quite some time now, a lot of weeks in fact. But eventually, you move on down to these 4, and amongst those, we're only moving on down to that one final grand finalist, right? That one winner. Who's that going to be? Well, that will be decided later. Right now, it's time for this low bracket match. So let's get started with an interview that, of course, I believe Ocean, you did, right? I'm pretty good at it. Oh yes, of course you are. So of course, let's get busy with both the interviews from these players and get into the match. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to KO Fight Night's interview session. And my name is Ocean Sharma. So we have talked to quite a lot of players. They have shown incredible dominance. They have asserted incredible dominance. We're talking about the numbers, talking about the games, talking about everything. But well, we have one player. I would say I'll have to tell you one thing. I mean, before we just get introduced to this player, whenever I was asking other people questions like who they fear the most, they always said Amanuja. So if we're talking about that, so there it is, Amanuja for you, ladies and gentlemen. And first of all, welcome out here. Hi Ocean, thanks for having me here. It was actually a really fun time. Like I've had a blast in the playoffs, just having a lot of fun playing my game. So it was a lot of fun.
I mean, quite a lot of players actually fear you. If I'm talking about the numbers and all, like they were like, if you have to talk about a competition, yeah, that's going to be a Manuja for sure. So I want to ask you, like, where are you basically from, and like, if you study or do you do a job or something like all those things? So basically, I'm from Delhi. I'm born and brought up in Delhi, and I'm working in my family business right now for like 5 years right now. So I've been pretty stable over here. I was honestly I was worried because of my job. Will I be able to make it or not? But I was able to shuffle a few things around, and I postponed the meeting slightly this month, I guess. So, but I think it's a life the give and take. So you have to like make compromises at times. It's alright, I guess. I mean, But probably, was a very probably. pretty boring meeting. I mean, it is worth it right now. I mean, if you're talking about the gaming scenario, and Street Fighter is what your I would say your genre of game is. So, how long have you been playing this game? And like, when did you start to move from being a casual gamer to a competitive gamer? I've been playing Street Fighter since I guess I was maybe 14, 15 maybe. So it's been like more than a decade and a half, I guess I've been playing. But I've been seriously playing like 2, 3 years back. I met a few people in the community. They taught me a few stuff. Then I really went hardcore on it and like practiced like by myself playing my game, and that's how I would say that I have improved a lot. I wouldn't say I'm a pro player since I think a lot of players I have to reach a certain level till to get there. But hopefully I will get there someday. I mean, well, the numbers actually show that you are a pro player. I mean, that's just you being modest, I would say one thing. But still, go on now with the competition and everything. How do you see this KO Fight Night tournament? It's going to be very interesting. I was expecting Ayan and Dark Lord to get into the top four, and I also thought that I would be coming in. I was confident that I would make it, but I was very surprised that pleasantly surprised that playinGaurav was able to make it. I was very happy for that, and apart from that, it has been pretty like there have been a lot of ups and downs. Like in the qualifiers, especially, a few players I wasn't expecting made into it. A few players lost to the players I was very confident would make it. So it has been very very interesting. I would say like it was very unique experience. Alright, let's talk about the game first, right? Street Fighter, if you're talking about, like, which is your favorite character? Like, why do you choose to have that by your side? At the moment, I'm playing Karen and Rashid. I would say that they are very interesting characters in the sense that they have a very offensive style and it complements my defensive personality. Like when I normally play, I'm very patiently playing. I'm very focused on like what the other person is doing and how I can adapt to that. So they are prematurely very very offensive characters, and glass cannon characters is the common term for them. So these are characters who can like hit very hard, but they cannot take a very brutal punishment. So they just break like glasses when they get hit. So and they're very interesting, and they are very fast characters, I would say. And I'm a very slow player, so it's a very interesting balance, I would say. Yeah, I would say it's kind of a perfect balance situation. Like you get to play with the best of both worlds or something. If I'm talking about it, but well, if I'm talking about Airtel India Esports Tour, right, the national leaderboards, where do you see yourself by the end of the tournament? By the end of the tournament, I would say in Street Fighter, I would qualify in top 5. But above that, there are like 4 players that I think are pretty. Like I have a time beating them. Like I can't say that they will be too easy to beat or like anything like that. Nobody is obviously too easy to beat. But I would say that 4 or 5 players, I would be in a top 5 in the community, I would say. Hopefully, if, as the time goes on, I'll improve my stats and become better than my competitors. Let's just hope it. Yeah, let's hope it. I mean, it's right now. It's your time to shine out there. And just like you said, right, you have been playing this game since a decade and a half, as per se. So, is there any message that you want to give to this community, to the fans, to the family out there that Street Fighter has accumulated? Okay, yeah, I would say that it's very tough game to get into, but if you stick by it, the gameplay, the fun, it's more rewarding than the initial pain. It's worth the pain that you put in, the initial hours that you put in, the
energy, the time that you put in, it will be worth it in the long run. And you just have to stick with it. It's not easy, but it's not that hard. Yeah, let's just hope for there's more all the good things out there for you as well as an individual player. And you know, you are the kind of person who sees a vision for yourself and for the community as well. Like you have been a part of that. So I would just say all the best for all the future endeavors, and maybe just maybe see you on the other side by lifting the trophy. Yeah, thank you so much. See you there as well. Bye bye. Bye bye. Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है ओशन शर्मा और आज हम KO फाइट के इंटरव्यूज को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रीट फाइटर के जॉनरा में एक और बहुत बड़े नाम से बात करने वाले हैं। खैर इनके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। आदित्य इनका नाम रहने वाला है एंड मैं सब कुछ नहीं बोलने वाला यहाँ पर। I would just want him to introduce himself. So come out here and why don't you start with a basic introduction? Hi, my name is Aditya Verma. My gamer tag is the Dark Lord, and I've been playing Street Fighter since 2017. It's a huge compliment out there because जितने लोगों से मैंने बात करी है अभी तक स्ट्रीट फाइटर के यूनिवर्स में, वो लोग एक ही बात बोलते हैं, हम या तो B3 से डरते हैं या डार्क लॉर्ड से डरते हैं। ये जरूर आती है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने 2017 में खेलना शुरू किया, वहां से अभी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में ट्रांजिशन कैसे हुई? Well, to be honest, मैंने सिर्फ गेम स्टार्ट किया था because of the love of fighting games that I had. I had no information about this competitive scene until I got to know one of your tournaments that was KO Fightness, but unfortunately I missed it in the year of 2017. तब मुझे पता चला था that there are tournaments that I can compete in. So I straight away went to the training lab. I tried to raise my bar, and ever since then I haven't been stopped, and I have been playing your tournaments and you know all the competitive tournament ever since. आपका पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहता है एंड व्हाई डू यू फील लाइक इट्स वर्थ यूजिंग इट? गेम में बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, but one play style that really suits me is a command grab character. So has there been ever any instance जब आपके साथ ऐसा कुछ मोमेंट हुआ जब आपने बहुत बेहतरीन कमबैक किया किसी टूर्नामेंट में? Well, definitely. I mean, if you will talk about that Arena 2018 when I had an opening of 3-0 against Ayan. So that was one time when I definitely thought that, you know, this is something going in my favor. Then all the tournaments that I have played ever since, like every tournament had a clutch win here and there. आपकी आगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी इस बार के KO Fightness? Definitely my first priority is to seal the victory in this whole very tournament. I mean, coming down to the losers, it's a bit heartbreaking. Is there any strong rival जो आपके माइंड में लग रहा है कि हाँ ये कांटे की टक्कर देगा? Well, in this present scenario, I think Ayan and Aman Ahuja are the ones to look out to most certainly. And let's talk about one thing that's in the Airtel India Esports Tour. So उसका एक leaderboard बनता है national leaderboard. So उसके अंदर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे आप सोच रहे हैं कि आप टिके रहेंगे एक proper position? Definitely, I mean the opportunity that we have this year is bigger than ever, and you know thanks to them. But when you talk about the leaderboard, it's all about consistency. It's all about playing that mental fortitude. Ki you are not going down. I'm not looking as such. When I'm playing the tournament, I'm just going for the win, and I'm hoping that even that works out in the Airtel India Esports Tours. Let's see. Is there any message जो आपकी community को, जो आपके fans को, and maybe अपने rivals को अगर आप कुछ देना चाहें about this competition, maybe for your future endeavors? Well, to all the people who are watching and supporting, first of all, thank you so much for all the love and support, and I'll definitely try my best to win it this time. And to all the players who have been competing, I'm not down, I'm not out yet. There's a lot that I can offer in this tournament as well. So hopefully you all will see great matches in front of you. That will be tomorrow, and hope I can do much better than and take it all. I would just wish you all the best for all the future endeavors and for the KO Fighters, and maybe just maybe next time I'll be taking in your interview. It's going to be once you have the trophy or something. All the best. All right, well, Ocean, I gotta hand it to you, mate. काफी अच्छे इंटरव्यू लेते हैं आप. I'm best at my job, I have to say. But well, talking about the interviews and all those things जो कि यहाँ players ने बोले like Dark Lord अभी जो last line पे अगर हम emphasis करें, I'm not out, I'm not down yet. Yes. But well, when we were talking about the final showdown, they might or might not. It's kind of a Schrodinger's cat equation. They might be out, they might not be out. Dude, I mean, again, Dark Lord को बहुत time से देखते आ रहे हैं, and yes, he has that competitive spirit, and he is really, really good as well. But on the other side, of course, Kaminaman is not going to be backing down. So let's quickly get busy with this game and throw it to our casters.
Well, thank you so much, Lakshay and Ocean. Once again, we are back, ladies and gentlemen. That's Dave Raj, right? Well, this side, and on top of us is Dan sitting with us, joining us. Yes. So let's talk about this. Let's talk about the next two contenders. What do you guys have to say about them? Let's start with you, Dan. I think these two are some exceptional players. They have shown such great skill to reach this point, and बहुत मतलब शानदार प्ले दिखाया था इन्होंने क्वालिफायर्स में भी और यहाँ तक आने के लिए भी. So I'm really looking forward to seeing this matchup. But I want to know also, Devraj, let me know how do you think this is going to play out first of all? Where do you think they're going to go in terms of character actions? That's actually the first mix-up we are facing here because both of them have like a history. मतलब दोनों ने अलग-अलग characters में specialize किया है, ना कि बस इस्तेमाल किया है. तो जो कमीना मैन है, उनके पास है कारिन और रशीद. दोनों को हम देख चुके हैं इस बार टूर्नामेंट में. More कारिन of course, less रशीद. और जो जी है, G has sorry, Dark Lord and G has become almost synonymous now, as you can tell. But earlier he was synonymous with Zangief. You know, he was the Indian Zangief. Although I don't expect the Zangief to come out, his G is extremely strong, extremely capable. So on Dark Cloud side, I'm going down with G locked in. और कमीना मैन इज लाइक आई मीन एवरीथिंग अबाउट हिम इज एन एक्स फैक्टर. हम बोल नहीं सकते क्या होगा, उनका अप्रोच कैसा होगा. आज डिफेंसिव खेलेंगे, अग्रेसिव खेलेंगे, बीच में अपोनेंट को शिमी मिक्सअप करेंगे या हाइलो मिक्सअप करेंगे. हम भी मिक्सअप है, सो लेट्स सी क्या होता है. Well, exactly. हमें देखना होगा और हमें को देखने मिल ही जाएगा. ऑलरेडी मैचअप स्टार्ट होता हुआ है यहाँ पे. And already हम जैसे देख सकते हैं, the unexpected has happened. Zangief has come out from retirement after a full, I think, 1 or 2 years, as we can see, and he's going quite strong, surprisingly, against Rashid, who should have a very easy queue, easy time in this game, but seems that Rashid has found his footing and he's pushing Dark Lord Zangief into the corner. But अभी corner में भी कुछ मुश्किल नहीं है. Zangief के पास काफी हेल्थ है और उनका एंटी एयर आप देख रहे हो, 1 बटन वेरी स्ट्रॉन्ग. उनके पास 2 स्ट्रॉन्ग एंटी एयर और उनका बी ट्रिगर पे मिक्सअप चालू हो गया है एंड उन्होंने ये राउंड ले लिया. एक मतलब पिक्सल था जिधर कमीना मैन ने सब कुछ बेट कर दिया अपने वेकअप डीपी पर, मगर जो डार्क लॉर्ड का रीड था इट वाज कंप्लीटली ऑन पॉइंट. देखते हैं अभी ये राउंड में क्या. वेरी गुड यूज ऑफ आर्मर बाय Zangief and into rush counter with the CA. Advantage to Dark Lord, but Kamina Man ने वो पढ़ लिया और बैकडैश करके उन्होंने उसको पनिश भी किया. काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है और उन्होंने यहाँ पे उनके स्टैंडिंग लैरिएट को पनिश भी कर दिया. इससे शायद डार्क लॉर्ड अपना एंटी एयर बदल सकते हैं, तो वो शायद अप्रोच थोड़ा बदल सकते हैं. और वो जो फॉरवर्ड हेडबट कर रहे हैं वो Zangief का, वो कर रहे हैं ताकि उनका फॉरवर्ड मूवमेंट चेक करें. मगर रशीद के पास जमीन का भी एक्सेस काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है और बहुत अच्छे से उन्होंने बी ट्रिगर इनिशिएट करके रशीद के फायर बॉल को पनिश करके एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही प्ले में ये सेट ले लिया. वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले फ्रॉम G's, I mean G I'm saying Zangief, Dark Lord Zangief doing very very strong play. मैंने भी सोचा नहीं था, मुझे लगा शायद वो थोड़े रफ रहेंगे, मगर मुझे लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल फुल्ली प्रैक्टिस किया है Zangief के साथ. आप बोलिए वरुण, आपकी क्या राय है इस पर? I mean, लास्ट टाइम मैंने इनका Zangief देखा था, दैट वाज ड्रीम हैक, जहाँ पे डार्क लॉर्ड ने वहाँ पे भी काफी स्ट्रॉन्ग फिनिश निकाला था अपने लिए. और अगर बात कर रहे हैं तो आई मीन मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग वही था कि दोनों के दोनों प्लेयर्स जो है अपने सेकंड कैरेक्टर्स पे आ रखे. जैसा आपने बताया था, रशीद कमीमान ने यूज तो किया था प्लेऑफ्स पे, बट जब प्लेऑफ्स नहीं, क्वालिफायर्स में, बट जब प्लेऑफ्स पे आए थे तो वहाँ पे कारिन की तरफ से हमको देखने को मिला था. और डार्क लॉर्ड भी, आई मीन Zangief काफी टाइम बाद हमें इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे. बट जैसा आपने कहा, अभी भी कंफर्टेबल है. मेन कैरेक्टर होता था एक बार इनका और अभी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हुए. ओ एयर ग्रैब वहां पे निकालते हुए और बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज. बट अब इसी के साथ कमीना मैन के पास वेल स्टन हो चुके हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो नहीं रहने वाली. एक चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कमीना मैन जो है काफ़ी अग्रेसिव खेलना पसंद करते हैं और एक यूनिक प्ले स्टाइल लेकर आते हैं. डार्क लॉर्ड यहाँ पे कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, देखिए. डार्क लॉर्ड ने अभी जो उनको रीड्स करनी थी वो कर ली है इस मैचअप में. अभी इट इज कमीना मैन की टर्न कि वो थोड़ा अपना जो है स्टाइल चेंज करे, थोड़ा अडेप्ट करे. मगर ये देखिए, वो जो एयर मिक्सअप के लिए भी उनका Zangief तैयार था, पकड़ के ग्रैब कर लिया.
डैमेज की लीड फिलहाल तो डार्क लॉर्ड के पास है, हेल्थ लीड भी है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जितना हेल्थ पूल है जानिए का वो भी ज़्यादा है। ये जो मैचअप है एक्चुअली कमीनामैन के फेवर में होना चाहिए, मगर डार्क लॉर्ड का जो अप्रोच है ऑन अ प्लेयर लेवल इज वेरी स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छे से वो डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए उन्होंने प्रोजेक्टाइल का भी जो पनिश टाइमिंग है बराबर से किया, मगर ये जो ग्रैब की उनकी टेंडेंसी है थोड़ा उन्हें शायद कंट्रोल करना चाहिए। मुझे लग रहा है कमीनामैन का उधर एडेप्टेशन चालू हो गया है और उन्होंने खुद अपना रिवर्स टॉर्नेडो मिक्सअप किया और साथ ही साथ डार्क लॉर्ड ने बी ट्रिगर पॉप करके, पता नहीं मुझे क्यों उन्होंने ऐसे ही वेस्ट किया इनिशियल स्टार्टअप, मगर शायद उनका कुछ प्लान हो मिक्सअप का या आउटराइट डैमेज का। साथ ही साथ ये लास्ट मिक्सअप काफी इम्पोर्टेंट है जो लकीली कमीनामैन बच गए वहां पे। अभी भी दोनों एक मिक्सअप से दूर है, एक हिट हो जाए, अच्छा एक और हिट तो शायद कोई, और ये तो ऑफकोर्स लास्ट पोजीशन में वेरी स्ट्रॉन्ग कॉल आउट बाय डार्क लॉर्ड। ही पनिश्ड कमीनामैन्स ओवरहेड अटेम्प्ट, क्योंकि ओवरहेड में फ्रेम्स 20-30 लगते हैं और जैब के फ्रेम्स मुश्किल से 4 हैं। उन्होंने फटाफट रिएक्ट किया और वो लीड छीन ली। वो एक्चुअली राउंड ऑलमोस्ट कमीनामैन था, मगर unfortunately and for Kaminaman, unfortunately for Dark Lord, he took that set very convincingly. जी, और जैसा आप बात करते हैं कि कमीनामैन की तरफ से इस राउंड के अंदर स्पेसिफिकली हमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। काफी क्लोज लेकर आ गए थे वो, बट इट वाज दैट वन बेट मूव कॉर्नर में जाके जो डार्क लॉर्ड की तरफ से जो हमें देखने को मिला, जिसके चलते अभी 2-0 के साथ वो लीड कर रहे हैं। दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, लोअर ब्रैकेट का ये मैच है, लोअर ब्रैकेट सेमीफाइनल्स का मैच है। whoever loses is eliminated, तो प्रेशर बहुत ज्यादा यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के ऊपर है। एकदम ही ज्यादा है प्रेशर, मगर ये दोनों खिलाड़ी इस प्रेशर से यूज्ड टू है। ऑफ कोर्स जैसे हम जानते हैं कमीनामैन की आदत है कि वो 2 बार हारते हैं सेट और फिर उनका कमबैक चालू होता है। देखते हैं अगर ये जो है सेट में वो जो टर्न अराउंड उनसे हो पाता है कि नहीं, क्योंकि पिछले जो सेट था उसमें वैसा थोड़ा मुझे साइंस दिखते थे कि टर्न अराउंड होने लग गया, जैसे आपने आप क्वाइट लिटरल टर्न अराउंड देखा, मगर उसके लिए भी उन्होंने ग्रैब को बैकडैश किया और खुद काउंटर किया अपने ग्रैब के साथ, मगर अभी भी लीड जो है कमीनामैन छीनने को तैयार है बिल्कुल। वो थोड़ा अभी ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, मगर शायद थोड़ा उन्हें पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि डार्क लॉर्ड उसको एक्सप्लॉइट कर पाएगा। और वैसे ही बोलते हुए वो पेशेंट भी हो गए। हम देख सकते हैं यहाँ पे किसी का भी मैच है, किसी का भी राउंड है वैसे बोला जाए तो, देखते हैं कौन लेता है। ये जो उनका मूव था उनने क्रश काउंटर हो गया और उसके साथ वेरी बिग कॉल आउट बाय कमीनामैन, मगर आई थिंक इट इन हिज फेवर। और साथ ही साथ हाँ उनका मीटर वेस्ट हो गया पूरा, मगर ये राउंड उन्हें मिल गया जो काफी जरूरी था। और उसी के साथ ये अभी सेट पॉइंट पे आ गए हैं कमीनामैन, मगर डार्क लॉर्ड इज एज इट स्टैंड्स ओनली 1 सेट अवे फ्रॉम टेकिंग द होल लोअर ब्रैकेट का जो ये है सेगमेंट यहाँ पे जिसको खेल रहे हैं। दोनों की बहुत क्लोज जीतने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों का आप देख सकते हैं पेस स्लो डाउन हो गया, मगर एकदम से आप देखें कि बर्स्ट हो गए, जैसे वहाँ पे डार्क लॉर्ड ने डैशिंग किया था। दोनों वो ओपनिंग के लिए देखे जिसको वो कन्वर्ट कर पाए, दोनों ने ट्रेड किया, बट एडवांटेज अभी भी जो है डार्क लॉर्ड के फेवर में था। और ये जो है उनको अवॉइड करना था, वो टॉर्नेडो जो पीछे से आ रहा था, उनके जो इनविंसिबल फ्रेम्स थे वो चले गए थे। और इनविंसिबल की बात करेंगे तो वही इनविंसिबल डीपी निकली कमीनामैन की। इवन तो डार्क लॉर्ड कॉर्नर में है, कमीनामैन उनको कॉर्नर में नहीं रखना चाहते, और उसी के साथ ये राउंड गया डार्क लॉर्ड के फेवर में एक स्ट्रॉन्ग बी ट्रिगर यूटिलाइजेशन के लिए। ये अभी दोनों आ गए हैं सेट पॉइंट पे, बट ऑफ कोर्स जो है डार्क लॉर्ड मैच पॉइंट पे है फिलहाल। ये राउंड बहुत ही क्रूशियल है कमीनामैन के लिए, बिकॉज वो उनका जो टूर्नामेंट लाइफ की है, मतलब यही फाइनल लाइफ लाइन है उनके पास। अगर ये सेट ले लेंगे तो सब उनके फेवर में आ जाएगा। थोड़ा दोनों ही प्लेयर कंट्रोल खेलते हैं इंस्पाइट ऑफ इट बीइंग अ वेरी टेंस सिचुएशन। अच्छा मिक्सअप किया और अपने आप को अच्छा सेव भी किया, वेट कर पनिश किया लैरिएट को। दोनों काफी मेजर्ड पेस से खेल रहे, किसी कुछ हरी नहीं है, किसी एक दूसरे को कॉर्नर में या सेंटर में पुश करने की। दोनों एक काफी मीडियम रेंज में एक दूसरे को नॉर्मल्स के साथ अटैक कर रहे हैं, और वो एक अच्छा जंपिंग था, मगर उनका जो है बॉडी स्लैम, बॉडी स्प्लैश बिफ हो गया जंपिंग का उधर। साथ ही साथ कमीनामैन ने को बस एस्केप करना था कॉर्नर के लिए, और उन्होंने एस्केप कर लिया है, और अभी डार्क लॉर्ड कॉर्नर में है, मगर फिर भी लीड जो है मैं बोलूँगा डार्क लॉर्ड के साथ थी, और वो लीड और भी वाइड हो गई है। वो बेयर ग्रैब
रीसेट के साथ जो उन्होंने किया, यहाँ पे निकल रहा है एक टॉर्नेडो मिक्सअप। देखते हैं कमीनामैन कैसे कन्वर्ट करते हैं इस टॉर्नेडो के साथ। काफी क्लोज आ गए थे, अगर वो ग्रैब कनेक्ट होता था, मगर ये ग्रैब कनेक्ट हो गया है और ये जो है पूरा और ब्रैकेट का फाइनल डार्क लॉर्ड ने वेरी वेरी कन्विंसिंगली लिया है। जी हाँ, काफी काफी ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस और आई थिंक एक आइकॉनिक फिनिश भी हमको देखने को मिला। आई मीन एक पाइल ड्राइवर के साथ जो वहां पे किया उन्होंने। बट अगर बात करें, चलिए हमारे एनालिस्ट जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डैन, आपका क्या कहना रहेगा इस मैचअप के बारे में? बहुत अमेजिंग मैचअप हुआ, एक तरफा था काफी टाइम के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि कमीना मैन का जैसे देवराज मेंशन कर रहे थे बहुत एग्रेसिव प्ले स्टाइल था रशीद के साथ। एंड जैंगीव जैसे ग्रैपलर अप्रिशिएट करते हैं आप जब पूरे फोर्स के साथ अंदर आना चाहे और एकदम क्लोज आकर के खेलना चाहे हमारे साथ। तो और उन्होंने दिखाया कि उनके पास बहुत पेशेंस है और उनके पास एबिलिटी है कि काउंटर करके आर्मर का सही यूज करके वो पावर थ्रू करे कि मूव्स बने। और आप देख भी रहे थे कि वो प्रोजेक्टाइल्स के भी पेशेंटली वेट कर करके और राइट अपॉर्चुनिटी पे जंप इन करके उन्होंने पनिश किया उनको। तो बहुत बहुत सॉलिड प्ले दिखाया डार्क लॉर्ड ने जैंगीफ के साथ। और मैं मैच के पहले बोलने वाला था जी और कैरन के मैचअप के बारे में, बट थैंक यू देवराज, आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया उनके प्रीवियस कैरेक्टर्स का भी। मैंने बोला था वो सबसे स्ट्रॉन्ग मिक्सअप वही था, हम सब पे वो मिक्सअप था कि कौन आएगा खेलने। क्योंकि कोई अज्यूम नहीं कर रहा था कि ये लोग स्विच करेंगे। एवरीवन अज्यूम्ड कि कैरन चल रहा था वहां पे कमीना मैन की तरफ से, वो कैरन को ही यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे एंड मे बी फाइनल के अंदर जो है राशिद शायद देखने को मिल जाए। और डार्क लॉर्ड की तरफ से भी जैनगेफ यहाँ पे पिकअप करना है। आई मीन दोनों ने कोशिश करी गेम थ्रो ऑफ करने की एंड वेल आई गेस कमीना मैन का गेम थोड़ा ज्यादा ऑफ था। एक्चुअली मैं बोलूंगा कमीना मैन का गेम ऑफ नहीं था, जो हमारे डार्क लॉर्ड की रीड्स थी स्टार्टिंग फ्रॉम कैरेक्टर पिक लेवल वाज टू फार अहेड। मतलब भाई गेम चालू होने के पहले भी उनकी गेम की तैयारी थी। बहुत ही अच्छा काउंटर पिक यूटिलाइजेशन किया जैंगिफ का अगेंस्ट रशीद इन दिस मैचअप। और जो ओपनिंग्स नहीं देनी थी वो कमीना मैन के रशीद ने जैंगिफ को दी, या जैंगिफ ने बैठ के उसको बोला कि भाई तुम करते रहो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट बराबर से कैपिटलाइज किया। और जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली ओकी की, जैसे हमने देखा एक राउंड में 5 टाइम्स बैक टू बैक उसको पंच करके गिराते रहे भाई, दैट इज क्वाइट अ गैम्बल, बट दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ जैंगिफ। ऑफ कोर्स ही इज द वॉकिंग कैसीनो। वॉकिंग रूलेट टेबल। और वो स्पिन्स जो थे, वो जो साइक्लोन्स है, उनका एडवांटेज ने देखा था काफी ज्यादा मिल रहा था लास्ट में भी। इनफैक्ट लास्ट फ्यू मोमेंट्स वही थे जब कमीना मैन ने जंप करके दूसरी साइड जाने की कोशिश की थी, साइड स्विच करने की, ताकि वो जैनगिफ को कॉर्नर में धकेल दे, बट सक्सेसफुल नहीं रहे। वहां पे कॉर्ड ऑफ गार्ड हुए और फिर उसके बाद हमें पाइल ड्राइवर आता हुआ नजर आया। लेकिन चलिए अब इसी के साथ देखते हैं कि हमारी टेस्ट पे जो हमारे मित्र हमारे साथ मौजूद है, प्लॉटर और ओशन, उनका क्या कहना रहेगा इस जो मैच हुआ है उसके बारे में। Thank you so very much, casters, and of course, thank you, Dan, as well, for the analysis. But indeed, dude, what a game! I mean, Lord, this is just too good. Dark Lord is just on fire. Just the way he said in that interview segment, "Ki I'm not over yet, I'm not done yet," and he just showed it that he is not done. He's in here. Like, imagine a situation: आप losers area से उठकर जा रहे हो, and आप at the end obviously अपने आप को जितवाने के लिए पहुंच गए. So you're pretty close to all those things. Exactly, and with that, of course, he takes the game very convincingly against Kaminaman. Kaminaman had a lot of interesting opportunities, and he did have the flair where it seemed like 1 or 2 games where he could have been able to clutch, he should have been able to clutch, but did not end up going in his favor. Nevertheless, now we know who is going to be moving along into the grand final itself. It is Dark Lord, who will be going against, of course, Ayan, and that... Not Ayan, my apologies. It is playinGaurav, because we still are in the lower bracket. Exactly. He still has to go for it. And when we talk about it, see, this is one thing. Imagine one thing, going on to the losers bracket, and then he has to win for it. And so that's going to be something. But Ayan, he's ready for everything. He's like, whatever comes to me, whoever comes to me, I'm just ready for anything. We beat any character, beat any person. Exactly. I mean, all he needs is those 70 seconds, rather, not minutes, what am I saying? 70 seconds, and he will be done and dusted, is probably his mindset. But then again, for that, we are going to have to wait till tomorrow. But today, what a spectacular ride this has been since the past 7-6 hours, where indeed we started off with Super Smash Bros. Ultimate, and we found our ultimate champion. It was none other than Lionheart, with a very convincing scorecard that he showcased. In the first game, he went against SG,
very competitive player, SG, but Lionheart was just too good. A 3-0 convincing victory for him. This guy never loses. It's been a while since I've seen him losing or anything. Like right. Lionheart, it comes to his name or something. Like he's a Braveheart person who just knows what winning is. Absolutely does. And with that, of course, we do have the brackets for the same, that is Super Smash Bros. Ultimate, where, like I said, it was initially Lionheart going against SG. And in the lower half, we saw Quaylectra go against Botman. Now, that is something that even the community, I believe, was wanting. Rather, I know for a fact that the champion was looking forward to play against Botman. Sadly, though, SG did not provide that. Well, SG was thinking of his own favors, Of and course. that's where Of he course. just shined out. But well, Lionheart, being Lionheart, just like we said, he just won everything that was just thrown to him. So yeah, he's just won that one. But well, about this game, if you're talking about it, we'll have to see tomorrow. What just happens to something. Exactly, because it's not done yet. The deal is not done. There are still matches left. There are still games remaining. And with that, of course, there's not only just that. There's, of course, Tekken remaining as well. We cannot just dust away Tekken 7. That is also going to take place tomorrow, where indeed, so that means we are going to be looking forward to, of course, Street Fighter, where we'll find our grand champion. And there are Tekken 7 matches that shall take place tomorrow as well. Along with that, like I said, though, we do reach the end for today. Now, another thing to talk about for tomorrow is probably going to be the fact that those showcase matches are coming back, of course. We do have Ocean going against I Super Johnny, and I believe once again it will be Thug. And I believe we have a little bit of surprise as well. Please do not forget to tune in tomorrow. For now, though, it is time to say sayonara. I'm your host, Blotto. Until tomorrow, take care.